कामी प्रो मैन लिटिल चिक्स Skyward Atlas भी एनीवेज anyway अब भैया स्टैंडर्ड बैनर पे एक पिटी रीच करनी है। लेट्स होप एक वेपन आ जाए तो मेरे पास 4 5 स्टार जेड आ जाए। क्या मेरा चौथा भी एक वेपन आएगा उससे हम सी अगर जेड आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जेड वाला जोंगली मैं चला सकता हूँ। नियन को तो भाई एक्विला मिलेगी। मैं जेड वाली होता चला सकता हूँ। नहीं अगर एक्विला आई तो एक्विला या तो बेनेट पे जाएगी या तो जीन पे जाएगी। यार यू विल गेट एक्विला ब्रो, आई एम फकिंग कर्सिंग यू, तेरे को एक्विला मिलेगी। कुछ भी मिल जाए एक्विला ना मिले। कामी ब्रो कर्स नहीं ब्रो, मेरे को ऐसा आयाका का वेपन मिल जाए। अरे सर ये क्या जोश चढ़ा है। अरे द थिंग इज जेंको भाई अगर मैंने नहीं खेला ना तो यहाँ सब लोग स्पीड रन करके मेरे से आगे पहुंच जाएंगे और फिर कामी धीरे धीरे स्पॉइलर मारता रहता है बिन बात कर करके। अभी एक दे चुका है। Listen here. That was a genuine mistake. Yeah. I know right? That was a genuine mistake. I didn't mean it. मैं बीसी ज्वाइन कर रहा हूँ ना, कामी थर्ड और लैंसर को भाई म्यूट रखा था तब से। हाँ। I don't know what you're talking about, honestly. भाई मैं इतना खुश हो गया था, मेरे को लगा अटैक का सब। अरे हमें भी लो बीसी। देखो थर्ड भाई स्टोरी हमने करी नहीं है। देखो थर्ड से बोल रहा हूँ, देखो थर्ड भाई स्टोरी हमने करी नहीं है तो स्टोरी के बारे में कोई बात नहीं, ठीक? भाई इतनी रात में किससे, क्योंकि मुझे स्टोरी निपटानी है। राइट सर करो वैसे ऐसे क्या था? नमस्ते। इस तरह वाली सोने चले गए क्या? नहीं, स्ट्रीम प्लेइंग गेंशिन इंपैक्ट आ रहा है। सोने चले गए ब्रो। लेकिन ऐसा काम भी सो जाता ब्रो अभी तक। आई मीन ऐसा 8 बजे बट आर्टी बॉट वो जो अयाका का जो फ्लावर है ना वो बहुत ही खतरनाक है, पता है? वो एक मिलता है सिर्फ उस एक को मारने से। ओ हाँ वो भी कब से वही कर रहा था मैं। वो बहुत ही गंदी चीज है वो। तो पहले मारो तब ड्रॉप होता है। They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. I mean, were you online? They're the ones responsible for maintaining law and Genshin? order in Inazuma. नहीं मैंने कामी ने भी तो Ayaka निकाली थी। कामी Ayaka निकाली थी ना? नहीं, कामी के बाद में जाके लूट ले। नहीं मेरा हो गया वो क्रोम लेके गया। ओह अरे हम लोग साथ में करेंगे तो हम लोग को दोनों को मिलेगा ना? नहीं वो जैसा वो है ना कोरला पे से जैसा वैसा है। ओ भाई वो तो बहुत टॉक्सिक है भाई। टॉक्सिक है। The entire clan is counting on that तो food. बैठ के We काम demand an करते हैं। पहले अपने explanation. वर्ड के सारे करूँगा फिर How कामी many का वन times ज्वाइन do I करूँगा। have to say it? फोन I से don't लॉगिन know करके। anything about emergency provisions. मुझे तो एशिया 2 पे जाना पड़ेगा Dare करने के deceive us? लिए। Those provisions are essential. Do you क्या understand? bro? Not some goods to be pocketed कामी by greedy अब बोल samurai. भाई तू मेरा लक You अच्छा है। samurai think you can just do whatever you please? क्या The Tenryou नियन Commission will नहीं hear of देखना। this. अरे तू हंसेगा और कुछ नहीं। नियन बहुत गलती हो गई। नहीं नियन And who are you? प्लीज। क्या हो गया? लक्स होने वाला है। Gang, no doubt. I'm फ्लेक्स sorry. तो है नहीं। अरे फ्लेक्स नहीं है। फ्लेक्स नहीं है तो ऐसा वो प्लेइंग विद फायर है। I see. You seem to have come just at अब the मैं right क्या time. बताऊँ ब्रो, I'm Perhaps you can help us इतना settle कुछ this मिल चुका है, matter. तेरे को और चाहिए? This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. कामी मैं तेरे को बताया था He's ना। keeping the तू provisions करने for कामी नहीं है, himself. कामी I इधर just नहीं know है it. पहली We'll पहली starve बात। without them. अच्छा कामी डर गया और भाग लिया। मैं कल कामी कामी बोल रहा था जितना भी कंटेंट सेव अप कर लो, जिस बंदे को अच्छा आर्टिफैक्ट चाहिए ना उसको 20 रेजिन में भी मिलेगा और 100 रेजिन में भी कुछ नहीं मिलेगा। ट्रू दैट। तभी पहले कैरेक्टर, उसके टैलेंट्स और उसका वेपन। यस भाई मुझे आज अटैक का सेंस मिला था। अरे थर्ड भाई आप लकी हो। कैसे? क्योंकि आपको मिला है। क्या मिला? अटैक का साइंस। बट यार सीडी था उसमें उसे। ठीक है देखा। बट उस पे 4 रोल फ्लैट डिफेंस पे चले गए, वो बात अलग है। इसे कहते हैं जब वो पास आए फिर भी दूर चली जाए।
मोना का पीस था वो, बट बिगड़ गया। भाई मोना का स्प्रिंट ठीक हो गया भाई, इतना प्यारा लग रहा है ना, दिल से खुशी हुई। वो क्या फिक्स हो गया क्या वो? हाँ मोना का स्प्रिंट फिक्स हो गया। मैंने चेक ही नहीं किया उस चीज को। करेगा, जो मोना से खेलता है वो फील कर लेगा। लाइक जिन्होंने मोना यूज नहीं किया उनको फील नहीं आएगा, हूँ। जिन्होंने मोना से खेला उनको फील आ जाएगा कि चेंज हो गया। तो मोना यूज फिर तो मैं डीपीएस मोना बनाता हूँ। हम लोग मोना यूज करते थे ना, तब बहुत स्मूथ हो गया। मोना भी तो 4 पीस वंडर चला सकते हैं ना, अगर वो हाइड्रो वाला नहीं है तो। एचओडी चलाना और वंडर्स को चलाना। 4 पीस वंडर्स तब जब वो डीपीएस मोना बन रही है। हाँ वो डीपीएस मोना बनाना में। हाँ डीपीएस मोना के वैसे लिए बुशित भाई, हाँ? अब तो इस पे अपन ये नया वाला थ्रेड भी चला सकते हैं ना, जावा वाला डीपीएस मोना के लिए। हाँ तो ईमार फिर वो कर सकता है, बट मोना की अल्ट भी बहुत मोना उसके ई से पार्टिकल जनरेट करती है। हाँ वो इतना तो कर करती है, लेगी। बट मोना की अल्ट भी अपने में खतरा ही है ना। हाँ वो तो है, बट कॉज मैं जिंचो यूज करूंगा तो मेरे को इतना वो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए particle जो बनाने उसका 4 पीस है वो बहुत ही नीश यूनिट, तो लाइक नीश है, बहुत ही वैसा है, यू नो। आपको देखना पड़ेगा कि कौन-कौन कैरेक्टर अपनी अल्ट पे रिलाई करते हैं और कौन-कौन नहीं करते You हैं। were helping enforce the vision, जो नहीं करते हैं उनके जैसे योहिमिया के लिए नहीं, आराम से हो जाएगा। योहिमिया अपनी अल्ट पे रिलाई नहीं करती ना। रिलाई का सीन नहीं है। मेरा कहना तो ये है कि जैसे डीपीएस मोना यूज करूंगा ना मैं, तो उसका जिंचो यूज करूंगा मैं, तो पार्टिकल काफी बन जाएंगे मेरे, तो अल्ट लाने में तो दिक्कत नहीं आएगी मेरे को ऐसा लगता है। नहीं वो सही है, बट स्टिल आपके 15 एनर्जी तो जाएगी ना, क्योंकि वो सेट लेगा ही लेगा, आप कुछ भी कर लो, जब कितने पार्टिकल Does it have to जनरेट do कर। with the missing emergency provisions? तो ऐसा है। I didn't take any. Like I said, वही है, if I देखना was पड़ेगा। taking them for myself, I और wouldn't हाँ be बुशित भाई, going आपने through such इलेक्ट्रम hard सी देखा? times right now. हाँ देखा, To top it all off, my कैसा लगा? house was just raided by treasure मुझे ठीक hoarders, लगा, क्योंकि मैं तो which आयाका is और why उसके I वेपन came के here मजे in ले the रहा हूँ। first place. हाँ I was ऐसा chasing after them when I got held up by these two. If ऐसे you खेल don't रहा था। believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had, they would have found them. Huh. He seems to be telling the truth. तो वही है। But we better confirm. Let's go round up those treasure hoarders and see what they have to say. We should be able to follow their tracks. They couldn't have gone too far. और वो मैं क्या बोल रहा था, अरे हाँ किसी ने वो अनलॉक कर लिया क्या, ये कमीशन एंड रिक्वेस्ट? नहीं। ओके बुशित भाई, ये तो सेम आई थिंक आयाका के जैसा स्प्रिंट है मोना का, तो आई थिंक हाँ काफी स्मूथ हुआ है, काफी स्मूथ। बहुत सेम है। आई थिंक एनिमेशन इन्होंने सेम आयाका जैसा डाल दिया था। मोस्ट हाँ मतलब जो एनिमेशन के जो फ्रेम्स है वो कम हुए, तो वो तेजी से ऊपर आती है। पहले बहुत ज्यादा थे जब बाहर आती थी, और बहुत स्लो था। स्पीड है ना वैसे? क्या दोनों का स्पीड सेम है ना, एक और मोना? अब करंटली हो गया, तो मान के चल इन फ्यूचर जितने भी ऐसे कैलेड यूनिट्स आएंगे जो अंडर वाटर ड्राइव करते हैं, वो अब फिक्स हो गया, वो इस टाइम ही उन्होंने फिक्स कर दिया। आई थिंक बुशित भाई, इसका एक्टिवेशन स्टेमिना कंजम्पशन भी कम हुआ है। आई थिंक पहले 20 था मे बी, अभी 10 हुआ है। नहीं एक्टिवेशन का तो 10 ही था, एक्टिवेशन का 10 ही होता है, एक्टिवेशन का 10 होता है। और होल्ड करोगे तो 15 पर सेकंड ऐसी कुछ कटता है, ऐसी कुछ है उसका। वो तो सेम आयाका का भी है ना। हाँ बट आयाका का क्या है ना, आयाका अगर टैप करके बाहर निकलेगी और हिट कर देगी तो वो बुशित रिफंड मार भाई देगा ना। नहीं हाँ। वो 20 था आई थिंक, बिकॉज मैं अभी फील कर रहा हूँ, मैंने पहले इस चीज को जानता था कि मैं 3 से 4 स्प्रिंट करता था ना, तो मेरा आधा स्टेमिना चला जाता था, इन और आउट करता था, और अभी मेरा नहीं जा रहा है मोना यूज करता टाइम। आई थिंक वो 20 था मेरे हिसाब से। मे बी, मुझे तो लाइक मैं हनी इंटर पे चेक करके आता हूँ, एक सेकंड में हनी इंटर पे चेक करके आता हूँ, बिकॉज मेरे को फील नहीं हो रहा कि मोना का स्टेमिना जा रहा है। ओके बिकॉज मोना के स्टेमिना का भी तो बड़ा इशू हुआ करता था ना स्प्रिंट के टाइम, अगर आपको याद हो। हाँ वो इसलिए क्योंकि एक तो वो स्टैमिना तक खाती थी, और दूसरा कि वो इतनी स्लो थी लाइक इन एंड आउट में। लेकिन अब वो भाई वो जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ रही जा रही है, बहुत ही प्यारा है। इन्होंने ऐसा कहीं पैच नोट्स में तो मेंशन नहीं किया था, बट
नहीं मैंने मेंशन किया है मोना का ना, मेंशन किया है मेंशन किया है मेंशन किया है। ऐसा। फिक्स हुआ है, स्प्रिंट एनिमेशन फिक्स हुआ था। मैं मोना का स्प्रिंट एनिमेशन फिक्स किया है, और मोना का जो ई का जो इफेक्ट था उससे जो पार्टिकल्स इफेक्ट जनरेट होते थे वो उन पे इम्प्रूवमेंट लिया उन्होंने। तो ऐसा We really outdid ourselves this time. आपने किया नया वाला डोमेन या फिर लाइक किसी कैरेक्टर के लिए फार्म कर रहे थे? नहीं किया मैंने, तभी तो कहा मैंने आपसे कि मेरे को अटैक सेंस मिला था यार वाले कप में। तो अभी आप फिर किसके लिए अभी आप किसके लिए जा रहे हो यूला के बाद? वो सीधा रेडन जा रहा हूँ बिकॉज वेपन भी कंफर्म है और वो कैरेक्टर भी कंफर्म है। You demand, boss. These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. गानियों पे 40 क्रिट रेट अच्छा होगा ना? कितना? 40? हाँ 40 से गुड। और सीडी कितना अच्छा होता है लगभग? सीडी लाइक ट्राई किया जाता है 200 से ऊपर रहा है हमेशा। मतलब वंडर के साथ भी ना? किसी के साथ भी हाँ 200 तक तो ट्राई करना ही होता है, लाइक सीडी वाले कैरेक्टर्स पे 200 तक तो ट्राई किया जाता है। तो याओ के साथ अगर सोच तू 200 से ऊपर ले जाने का खींच रहा है जबकि जाओ सीआर वाला है। हाँ वो भी है। तो वही तो गानों में तो ट्राई करेगा ही ना। गानी में बहुत ज्यादा अटैक है बट कैसा लगा नया इनुजुमा का अपडेट सभी लोगों को? सुंदर और अति सुंदर है तो काफी अच्छा। ऐसा है क्या? बट हमने एक ही दिन में लगभग आधा कंटेंट फिनिश कर दिया लगभग। ठीक है थर्ड वन। तो अब क्या ही करें, गेम वालों की दिक्कत नहीं है, हमारी दिक्कत है, हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं। दिक्कत एग्जैक्टली। कंटेंट तो उन्होंने अच्छा दिया है। भाई ये हर जगह फॉक्स दिखते हैं, मजा आता है भाई। हर जगह है ये। This is order. आज तो नाइट आउट है। ऐसा है क्या? We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosawa. Oh, I remember. So he's the one who sent you after us, huh? और आप लोगों की कितनी नियॉन तेरी और तेरी कितनी पिटी चल रही है अभी कैरेक्टर बैनर पे? मेरा कैरेक्टर बैनर पे मेरा 65, मेरा वेपन बैनर में 20 और मेरा परमानेंट बैनर नहीं होता उसमें मेरा उसमें 48 या 45। कैरेक्टर पे तो बहुत क्लोज है, तो 10 फुल और हो गया। वही मन तो कर रहा फुल करने का बट वही द कैरेक्टर बैनर। इतनी रात को क्यों? क्योंकि क्या हुआ मैं पार्ट 2 स्ट्रीम करने के बाद सो गया था, फिर मैं अभी रात में 12 बजे उठा, फिर खाना वाना खाया तो मैं आई भी लाइक अब नींद तो आएगी नहीं, सो मैंने लगा एक और स्ट्रीम। There's nothing in here but IOUs. Yeah, a lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We're talking tons of Mora here. We better Hi and good night. ऐसा क्या ब्रेक्स? Good morning. ऐसा क्या नंबर? As for you guys, you're free to चल मैं जाता हूँ later. Bye विजन बाय। Don't थैंक यू जाने के। cross again. Yes, of course. So we redeemed ourselves for some IOUs. मेरा हो गया आज का कोटा Does that पूरा। mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. मेरा भी नहीं हुआ है, मैं तो भी एंजॉय कर रहा। I don't know, मजा आ रहा है कर रहे हैं। सब सो गए, ओनली 7 वॉचिंग। कोई ना, वैसे भी रात को बहुत कम स्ट्रीम करता हूँ ना।
That was expected. कुछ देखने गया था, नहीं हुआ सर। अरे ऐसा है क्या? Only तुम भी मैं क्या देखने गए थे आप? quest इडिबॉट जब भी तू याव से 3 नहीं करता है पता है, दिल से बुरा लगता है, पता है, दिल से बुरा लगता है। दिल से बुरा लगता है ना? Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Or perhaps Good night and bye. there's something you want to inquire about? Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts. Whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he वैसे कामी तू कितना खुश होगा ना, फाइनली इलेक्ट्रो एमसी अब यूज हो पाएगा और तूने उसे 80 कर रखा है। 88, not 80. It what? 88? Payment on his own account. बहुत सही है। अरे 88. मैं सोच रहा था The price of कि provisions इलेक्ट्रॉनिक्स began को to एक डेढ़ skyrocket बनाओगे, recently, मैं कर and his सकता हूँ। salary was भाई no बहुत longer अच्छी है enough इसकी to एबिलिटीज cover तो the फुल cost. ईयर वाला बेस। मैं भूषित भाई थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ क्या इसका? स्पॉयलर्स दो भाई, वाह। मतलब कौन है? ठीक है भाई, ठीक है भाई, चैट में आएगी दिक्कत आपको। ठीक है भाई, मतलब कुछ भी। purchase a usual amount? If the price is increased, couldn't he just buy हाँ, less? मैं इलेक्ट्रॉनिक एमसी को एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। हाँ, करिए। उसका है ऐसा कि वो ई जब यूज करता है ना अपना ई स्किल, हाँ। तो वो सामने की साइड 3 स्लाइस फेंकता है, ठीक। और वो स्लाइस जब एनिमी को हिट करती है, हाँ। तीनों स्लाइस में से कोई सी भी स्लाइस, तो एक पार्टिकल ड्रॉप करती है वो ग्राउंड पे, और उस पार्टिकल को कोई भी आपका जो कैरेक्टर उठाता है, मतलब उसका आपको ऊपर चढ़ना है उसके ऊपर, ठीक है। तो आप पार्टिकल गेन कर लोगे। ठीक। तो आपको 6 सेकंड के लिए कुछ बफ्स मिलेंगे। ठीक। आपको 6 सेकंड के लिए आप करंट कैरेक्टर का 20% ईआर हो जाएगा, बढ़ जाएगा 20% ईआर मिलेगा। हाँ, बढ़ जाएगा। एंड एडिशनल अपने इलेक्ट्रो एमसी को एक पैसे होता है कि 10% ईआर ऑफ द इलेक्ट्रो एमसी, वो 20% प्लस 20% में प्लस हो जाएगा वो, ओह, विच मींस 20% तो मिलेगा ही, उसके अलावा इलेक्ट्रो एमसी का 10% तो मिलेगा। तो समझे, अगर आपके इलेक्ट्रो एमसी का 300 ईआर है तो 30% तो वो और 20% वो 50% आपको मिलेगा। लुल। मेरे जाओ का बुशिर भाई 160 चला गया था। मैंने क्या किया, मैंने डिलुक को 100% ईआर था मेरे डिलुक का, मैंने इलेक्ट्रो एमसी को 323 समथिंग ईआर दे दिया, ओ भाई, और मैंने इलेक्ट्रो एमसी का ई किया, और डिलुक को मैंने पार्टिकल दिया, और मैंने पूरा ई किया डिलुक का, इतने में मेरा अल्ट आ गया। ओ भाई साहब, डिलुक पे बिल्कुल ईआर नहीं था, बस मैंने इलेक्ट्रो एमसी का ई किया, बस इतने में आ गया। ओ भाई, फुल बैटरी और व्हाट, बहुत तगड़ी बैटरी है चलिए इसको मैं यूला के कॉम में चला सकता हूँ। और उसका पता है क्यूबी उसका जो क्यूबी काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखा, अब उसका देखा तो ये तो वो नया सेट के लिए बहुत हेल्प करेगा। हाँ, और क्यू उसका सेन क्यू का क्या सीन है, क्यू का ऐसा है कि क्यू का कॉस्ट थोड़ा हाई है, 80 कॉस्ट है उसका। अरे उसको फॉरवर्ड तो सब क्यों आएगा? नहीं, हाँ वो नहीं अच्छा है, बट क्या है, इलेक्ट्रो एमसी खुद से पार्टिकल नहीं बनाता है, बहुत कम पार्टिकल बनाता है, एक ही पे वो एक पार्टिकल बनाता है बस। ओ भाई साहब, नहीं तो फिर कम तो यूज कर सकते हैं, फेशियल के साथ तो चला ही सकते हैं। इलेक्ट्रो एमसी से आप डैमेज तो बिल्कुल नहीं निकालोगे, बट वो काफी ज्यादा फायदा देगा। मैं ऐसा इलेक्ट्रो एमसी के लिए बैटरी यूज करते हैं ना फेशियल, और इलेक्ट्रो एमसी का क्यों क्या करता है, एक टाइप का वो फेशियल फिजिक्स है, बैटरी के लिए बैटरी भाई मेरी इससे अच्छा मैं फेशियल का फाउंडियस ना दे दूं भाई। मैंने जाओ को इलेक्ट्रो एमसी का बफ दिया तो मेरे जाओ का 170 ईआर पहुंच गया था।
हैं? Information मेरा तो is एशिया also 2 पे 170. मेरा तो एशिया पे ऐसे ही है। Wouldn't you agree? I mean, Don't worry. you have that Charge 5-star much weapon, for right? information They're भाई- doing this about without a Kurosawa. 5-star weapon, है? Nothing we ever discussed यार was सब भाई explicitly हर जगह confidential जाके मेरे पे ही आ anyway. जाते हैं चीज में ठीक है Let me think. नहीं भाई नहीं, उस वाली वो आईडी नहीं पे है। उस वाली आईडी पे लिटरली मेरा जॉब को बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती भाई, खुद ही पार्टिकल्स खुद ही सब। बुशी वो वाले जाओ के साथ अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करेगा एक की में अल्टीमेट आ लुल जाए भाई भाई मैं तो आया का नहीं निकाल रहा, मैं मोना से पूरे दिन काम चलाऊंगा स्पेंड करते हुए। इतना खूबसूरत लग रहा है ना स्ट्रीम ये, आया का फेलिस के आगे। सॉरी टू से मेरे को मोना का स्पेंड ज्यादा बेटर लग रहा है। मुझे कभी दिक्कत ही नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं जिसको जो पसंद है उससे खेलो इजी। अब मैं फाइनली मोना को ट्रिपल क्राउन कर दूंगा। हैं? अरे निखिल ने कर रखा है। हाँ, हाँ कर रखा है उसने। इस देयर अरे सॉरी यार मुझे गिव वाला टाइटल हटाना है। What? इट्स अ पार्ट 3 मैन, गिव अवे पार्ट 1 में हो गया है। सॉरी आई फॉरगॉट टू एडिट इट। मोना का स्प्रिंट फिक्स हो गया। हाँ ये देख, मुझे नहीं पता मोना का स्प्रिंट फिक्स हो गया, मतलब लाइक आप तो मेरे को आया का निकालेंगे। आई डोंट नो तू ऐसे देख के फील कर पाएगा कि नहीं, बट लाइक अगर तू खेलता है मोना से तो देख कितना तेज आ रही है मोना। आई थिंक तू कर पाएगा थोड़ा सा, लाइक बहुत दिखता है फास्ट हो गई मोना। शी इज सो फास्ट। इन्होंने क्या है फ्रेम्स थोड़े ड्रॉप कर कम कर दिए इसके फ्रेम्स। इसी कितनी फास्ट हो गई मोना। बट एक चीज है जो अभी भी है कि लाइक आप रोटेट लाइक जैसे नॉर्मल बंदे में डायरेक्ट बैक हो सकते हो, अभी भी इन वाले स्प्रिंट में डायरेक्ट बैक नहीं कर सकते। आपको आगे से पीछे जाना पड़ता है, डायरेक्ट पीछे नहीं हो पाओगे। ऐसे आगे अगर आगे जाते थे पीछे आना है ऐसे होगा, देख रहे हो? ये इन्होंने ये भी इन्होंने एक चीज करी है। जैसे अब बंदा हमला कर आपको पीछे जाना है और आप आगे हो, आप पीछे कर दोगे हो जाएगा। देखो पहले करने में वो घूम के जाते थे, अब डायरेक्ट जाते हैं। लेकिन आगे अगर आप इनके अंदर हो तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इनके अंदर हो तो ऐसे घूमते हैं वो अभी भी। ऐसे उन्होंने फिक्स कर दिया था। हाँ आई थिंक वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती ना मोना। अब वो थोड़ा तेज हो गया तो अब होने लग गया। तो फिर बुशित भाई मोना डीपीएस के लिए कोई अच्छा सा टीम को बताइए ना। बेड ऑफिशियल वही इलेक्ट्रो कॉम पे बैठेगा। इसके अलावा सिंचो चल जाएगा क्या? क्या शिंचो हाँ शिंचो उसके लिए बैठ जाएगा अगर आपको मोना की अल्ट स्पैम करवानी है तो। हाँ बट फिर हिलर नहीं रहेगा ना टीम में। हाँ तो वो उसका भी कैवियाट है ना, फिर आपको डॉजेस करने हैं। कभी कभार नॉन हीलर टीम भी ले जाई जाती है। मैं क्या You want me on your... मेरे को तो इस चीज के बारे में पता नहीं, क्योंकि मैंने कहीं मोना डीपीएस के तौर पे यूज करी नहीं है ना, हमारी तो हमेशा वही रही है। मैं फिर डिलुक बिल्ड नहीं करता, मेरे को ये पता था पहले। सपोर्ट यार एक्चुअली सही है। अब दोनों ही द थिंग इज मोना के कॉन्स्टलेशन दोनों साइड जाते हैं, उसको डीपीएस भी बनाते हैं और उसको सपोर्ट भी, वो दोनों तरफ बैठे हुए हैं। व्हाई आर यू डूइंग? अरे मैं बोल रहा हूं एचपी डिफेंस सही में अब दोनों बुशित भाई हाँ मैं ये जो डोमेन फार्म कर रहा हूं इससे तो मैं मोना को डीपीएस और वो सपोर्ट दोनों बना सकता हूं एक तरह से। नहीं वो ऊपर एनर्जी रिचार्ज वाला तो लाइक अल्ट पे बनता है ना। Perhaps I should start using it more often. हां अल्ट पे थोड़ी। Did you manage to track down the treasure वो hoarders? डीपीएस नहीं, वो तो सपोर्ट है ना। वो Everything तो I said was true, right? देखिए नीचे वाला आर्टिफैक्ट का मैं भी बोल नहीं रहा, वो वाला आर्टिफैक्ट अभी थोड़ा सा ट्रिकी आर्टिफैक्ट है। नहीं अभी जैसे कि है ना कामी के साथ हमने ट्राई किया था उसको चलाने का, ऐसा ही नॉर्मल 4 पीस, तो आई थिंक इतना एनर्जी नहीं जा रहा। जाओ का फर्स्ट ई एनर्जी लेता है बट उसका सेकंड ई एनर्जी नहीं लेता है। हाँ क्योंकि वो एक्टिवेट द थिंग इज मैंने वही बोला ना, जो कैरेक्टर्स अपनी अल्ट पे रिलाई करते हैं डैमेज के लिए उनके लिए थोड़ा जीजी है वो पीस। अब जाओ अल्ट पे रिलाई करता है ना, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसकी 15 एनर्जी कॉस्ट चली जाए, क्योंकि जाओ की अल्ट कितनी है 70 की है। अब मान लो 15 एनर्जी में ई पे खो रहा हो तो लाइक दैट मींस जाओ की अल्ट कॉस्ट 95 की नहीं 85 की हो गई। सॉरी यार 95 बोल दिया, सॉरी यार गलती हो जाती है।
हाँ लेकिन अगर आपके पास वो मेरे जैसा याओ है उस वाली आईडी में 170 एनर्जी रिचार्ज वाला, हाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर। उस आईडी में तो मैं चला सकता हूँ, वो इतना एनर्जी रिचार्ज वाला जाओ है वो। मैं स्कैमर स्पेन निकालना है, स्पॉन्सर करना था। ऐसा है क्या? पहले आप मुझे स्पॉन्सर करो। हाँ क्या सीवन चलेगा? Even after all you've told me, I still don't remember anything. अब तक तो एक बार स्पॉन्सर हो जाना चाहिए काम में। And why would I put myself in such a difficult situation? कोई ना रेडन के टाइम कर देना काम में, ऐसा कोई मना नहीं कर रहा है। टाइम में खुद का वेपन स्पॉन्सर करूंगा भाई। कामी जो भी ले रहे हो दो एक के साथ एक फ्री अकाउंट चला लियो भाई तू। इस लाइक की बड़े भैया के लिए कुछ लेके आया तो हां भाई बड़े भैया का न्यू आईडी में से जाओ के लिए बेस्ट भाई होने वाला 123 ER है बट C2 है मेरे पे बस जीपीएस अगर बना वो देखेंगे ना वाला आर्टिफैक्ट यूज करके ही पता चलेगा कितना वाइबल बैठ रहा है यहाँ पे। अभी टेस्टिंग आ जाएगी। कुछ फार्म किया क्या मुर्शिद भाई उसका? मैं बोलता हूँ पहले भी आयाका बिल्ड होगी मेरी, क्योंकि मैं अपना रेजिन फिक्स चीजों पे यूज करना पसंद करता हूँ ना कि वेरिएबल। तो आयाका 90 उसका वेपन 90 उसके टैलेंट्स 8 करीब मुझे पता तो है ये हो जाएंगे। मैं अगर अपना रेजिन यूज करूं कंडेंस यूज करूं नहीं फ्रेजाइल जो भी है व्हाटएवर यूज करूंगा होंगे। आर्टिफैक्ट्स में क्या है सर्कस है भाई, सर्कस है आर्टिफैक्ट एक सर्कस है। तो ये आर्टिफैक्ट्स नहीं ना आपको, तो फ्यूचर में वाले आर्टिफैक्ट्स चाहिए वो आया क्या लाने वाला। मैं वो वाला डोमेन फार्म करूंगा कि मुझे याओ के लिए 2 पीस वो निकालना है। 2 पीस कौन सा? वो ग्लैड। हाँ वो ग्लैड V2 तो ये एनिमो से बेटर है क्या ये 2 पीस एमपीवी से? द थिंग इज याओ अटैक पे स्केल बहुत हाई कर जाता है ना, दैट द ओनली थिंग। अगर आप याओ को विदाउट एनिमो भी दो डबल लाइक 2 ग्लैड का अटैक 2 इसका अटैक तो 36% अपना अटैक देता है, जाओ स्केल बहुत हाई कर जाता है अटैक के साथ। सेम चीज आयाका के लिए भी है। आयाका विद आयाका वेपन अटैक के साथ इजी स्केल मारने लगेगी वो। भाई मैंने याओ के लिए फील कर रखा है। याओ ब्लैकक्लिफ अगर याओ मैंने ब्लैकक्लिफ वाला याओ था उस पे 220 क्रिट डैमेज था बट बेस अटैक कम था, और स्काईवर्ड स्पाइन वाला 160 है सिर्फ क्रिट डैमेज बट वो बेस अटैक इतना हाई हो गया उसका कि वो सेम डैमेज देने लग रहा है। भाई आशिक को ट्रैक कर लो वो इसी में पर। आशिक को आशिर के साथ बहुत कुछ गलत हो गया। आशिर मैंने भी स्टोरी नहीं करी है तो ठीक। आपको पता है खुशीद भाई आशिर के साथ बहुत गलत हो गया। आशिर ने सुबह बताया था बट मुझे तो मैंने तो बोला आशिर तूने सही किया था प्रिपेयर करके। बेचारे को लाइक लिटरली 80 पे जाके बट मैंने उससे बोला तेरे पास डिलूक विद वुल ग्रेस्टोन है क्ली बेंच टाइम और व्हाट? उसके पास उसके क्ली का लॉस प्रेयर है भाई, क्या बोल रहे हैं? हाँ तो डिलूक पे वुल ग्रेस्टोन है, क्या बोल रहा है भाई? वुल ग्रेस्टोन ब्रोकन वेपन बड़ी। तो वो डिलुक नहीं है ना, ब्रोकन वुल ग्रेस्टोन ब्रोकन है। डिलुक वुल ग्रेस्टोन के साथ ब्रोकन है। नहीं डिलुक को भाई फोनियस कोडेक्स देके 90 क्रिट रेट 90 सीडी भाई बोले डिलुक और पे यूज होता है भाई। वो बोले आप तो 20 निकाल रहे थे ना। क्या हम भी बोलेगा कहाँ से कहाँ बात मोड़ते हैं ये। 24 आवर स्ट्रीम ना शॉर्ट स्ट्रीम ऑफ 5 to 6 hours। हेलो रियुजाकी, हाउ आर यू? शॉर्ट स्ट्रीम ऑफ 5 to 6 hours। जैसे कि ये अपना एक एचओडी है जो 4 पीस उसका जो 4 पीस है कि नॉर्मल एंड चार्ज को 35% बढ़ाता है वो, ठीक। अपना वंडर्स है जो चार्ज को 35% बढ़ाता है। हाँ। एचओडी 30% बढ़ाता है सॉरी। हाँ। एंड अपना ग्लेड है जो नॉर्मल एंड चार्ज नॉर्मल को 35 बढ़ाता है, और जो ये करंट सेट आया ये 50% बढ़ाता है। तो इन सब में सुपीरियर तो ये होगा ना अभी जो नया आया। एक मिनट दीजिएगा। सॉरी अरे नहीं थर्ड बार कुछ चैट में बोल रहा था ना। अरे जाकी द थिंग इज लाइक जब मैं नॉर्मल गेम खेलता हूँ मैं जापानीज में खेलता हूँ बट ड्यूरिंग स्टोरी टाइम मैं इंग्लिश में खेलता हूँ। इट्स इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, सबटाइटल्स नहीं पढ़ने पड़ते, ऐसे समझ में आ जाता है। दैट्स इट। द थिंग इज ना अगर आप गौर से देखोगे हर जो सेट आपको ज्यादा बड़ा बोनस दे रहा है वो आपके लिए कंडीशन रख रहा है।
वॉन्डर्स की कंडीशन क्या है कि आपको कैटलिस्ट और बो यूजर होना है, ठीक। और क्या बोल रहे हैं, ये जो नया वाला सेट है इसकी कंडीशन क्या है कि आपको एनर्जी लूज करनी है। सो देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन ऑल दीज आर्टिफैक्ट्स। और वो वाला आर्टिफैक्ट कौन सा है, जियो डोमेन वाला, वो 40% देता है, बट उसके कंडीशन क्या है, आपको शील्ड होनी चाहिए। सो इट्स लाइक जो जितना कॉम्प्लिकेटेड सेट है वो उतना बड़ा बूस्ट दे रहा है, बट उसके साथ आपको एक गिव एंड टेक रिलेशन चल रहा है, जैसे मेरा और उसका था। Maybe, but I'm still worried about him. बट वैसे अपन 50% अरे मैं उसका होमवर्क करता था, वो मेरी बायो की ड्राइंग बनाती थी। व्हाट डू यू मीन? क्या है कामी? It's just because he's been possessed. That's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain in no time. ये चल रहा एक्चुअली, मैं बचा रहा हूँ। जिनो है ऊपर, जिनो है ऊपर। No, not ऐसा है क्या? जीनो नो स्टोरी स्पॉयलर्स प्लीज। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा। नहीं मैं सबको पहले ही बोल दे रहा हूँ। नहीं मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। ये कामी बोल चुका है ना एक बार। नहीं आज मैंने बहुत गेंशिन खेल लिया, बहुत इसका आशिक का लेवल 90 भी हो गया भाई। What's your AR? My main ID is 56. My second ID is 55. My third ID is also 55. My fourth ID is 50. So I play on 4 ID. Bedu event दिखाओ। बेडू इवेंट अभी ये खत्म होने दो फिर दिखाता। एनर्जी लॉस कितने लोगों के वर्ल्ड्स में गए ये? एनर्जी लॉस करके समझ नहीं आया है, इसमें करना है जाओ बैक में। भाई आयका के लिए बहुत वो ऐसा है कि जब भी तू ई मारेगा अगर तेरे पास 15 एनर्जी हो, 15 एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, और कंज्यूम होने के बाद तुझे 10 सेकंड के लिए तेरे नॉर्मल चार्ज और प्लंज पे 50% का डैमेज बोनस मिलता है। और 10 सेकंड खत्म जैसे हुआ तूने फिर ई किया, तेरा 10 खा जाएगा। मैं यूला मैन की जगह मोना मैन होने वाला हूँ। ऐसा है क्या? Who are you? Because मेरी फर्स्ट चॉइस तो मोना है। वो अब तो यूला तो आएगा नहीं बाद में आएगी। ये लॉल मैं यहाँ पे भी स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं YouTube ठीक है भाई। मल्टी मेरा पीसी थोड़ी देर में बोलेगा नहीं हो रहा मेरे से। अरे जेनो आज मॉड करने गया था तो मेरे को एक वो हिट ब्रिंगर मिली, फ्रेंजी था, और दूसरा क्या था मैं भूल गया। थोड़ा संभल के खेलिए। रिवाइंड राउंड्स क्या? थोड़ा संभल के खेलिएगा, एक बार डेस्टिनी उड़ा चुका है पीसी। डेस्टिनी नहीं उड़ाया था, पीसी चालू की चालू ही नहीं हुआ उसके बाद। डेस्टिनी के लिए नहीं हुआ था भाई। आज नया वाला डोमेन फार्म करने गया। अरे भाई साहब बताया मैंने आके। तो ये वही तो केस है उस नए वाले सेट का जॉब पे। क्या लगता है मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए। And people wonder why I don't play that game. भाई Disciples. भाई जीनो का भाई अलग थोड़ा ज्यादा ही abnormally bad है। नहीं ऐसा कभी होता है कि अपने साथ सिर्फ गैंशिन में सिर्फ नहीं भाई तो रिमोट को पता है कितना घसा हुआ है लॉस सेक्टर 4 घंटे एक एग्जॉटिक के लिए। इधर भी थोड़ा सा इधर कभी कभार अच्छा लग होता है, कभी कभार मैं पे टू विन कर देता हूँ थोड़ा सा घस के। आयाका मिली यस तो लिमिट हो जाता है। कौन से मैं From the way you're dressed, मैं किसी it डेस्टिनी में doesn't look ज्यादा like you're अच्छा from लग around here. आउट से डेस्टिनी में वे बेटर लग है। और डेस्टिनी में फार्मिंग अनलिमिटेड है। We've had so many people डेस्टिनी में trying to cause us अनलिमिटेड trouble ग्राइंड कर recently. सकते हैं ना, They तो were on high alert. लक नहीं बोलते स्टैटिस्टिकली वो कितना भी घस लो स्टैटिस्टिकली कभी तो एक पॉइंट आएगा कि ढंग की चीज मिलेगी ना। वही You उसको लक haven't नहीं arrived बोलते। at the best of times, I'm afraid. मैं वो नहीं कह रहा था, बट ठीक है काम। And he's still recovering. वैसे ये आयाका He's not able to take on any new इतना जल्दी disciples अपना for the क्रैब time अप्लाई being. करती है, मान लो चलो फ्यूचर में कोई सिंचू जैसा पायरो एप्लीकेशन आ भी जाता है तो ये क्या कंसिस्टेंट मेल्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? अभी अल्ट में आई थिंक सो मैंने शायद देखा था लाइक आयाका नहीं कर रही है 20 में से 7 बार मेल्ट हो रहा है अल्ट में उसके, तो 1:3 का रेशियो चल रहा है काइंड ऑफ, मान लो लाइक। और नॉर्मल्स में नॉर्मल से नहीं देखा मैंने, अल्ट देखा, क्योंकि अल्ट मेन उसका डैमेज डीलर है ना, लाइक उसका अल्ट की स्केलिंग बहुत हाई है, तो वो देख रहे थे कितनी बार अल्ट पे मेल्ट, क्योंकि वही डिबेट वही चल रहा है ना, आयाका को मेल्ट बनाए या फिर फ्रीज बनाए, वही डिबेट चल रहा है किस साइड जाए, तो वही लोग देख रहे थे। क्या हुआ? क्या विजडम है भाई? गेंशिन चालू करो, ऑल्ट F4 कोई और गेम खेलो भाई। Okay,
How about this? तूने जिन्हों वर्ड एक्सप्लोर किया क्या? सीधे आर्टिफैक्ट चला गया। भाई मैंने सारे मेरे पहले वे पॉइंट खोले, सारे स्टैचू ऑफ द 7 खोले, जितने डोमेन खोल सकता था खोले, जितने पजल्स हम जस्ट किए, स्टोरी क्वेस्ट निपटाया। स्टोरी क्वेस्ट में ज्यादा स्पॉइलर नहीं, तो बस मजे आएंगे बहुत। बहुत मजा आएंगे स्टोरी क्वेस्ट में। अभी तक का बेस्ट आर्कॉन क्वेस्ट है, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ। नो स्पॉइलर, इट्स जस्ट द बेस्ट आर्कॉन क्वेस्ट दे एवर मेड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और फिर मैं देखा ऐसा मेरे पे फार्म करने के लिए कुछ और नहीं था, मैं सोचा भाई नया वाला सेट अच्छा है, नोब्लेस भी कवर हो रहा है और ग्लैड में ऑलरेडी मरी पड़ी है, तो थोड़ा सा ट्रोफीज ग्लैड का भी रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या हो सकता है भाई, ज्यादा ज्यादा गंदा क्या हो सकता है? क्या गंदा हो सकता है ये देखो इतना भाई कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई। तो मैं लैंसर को बोला, लैंसर भाई आ, कामी को बुलाया, कामी आ भाई। लैंसर को भाई लाइन में एकदम 3 गॉड पीस मिले, मैं लिटरली पता नहीं मैं कितने में 7 कंडेंस, मैं 7 या 8 कंडेंस निकाला, सॉरी 7 या 8 कंडेंस रन्स किया मैं, और उसके बाद 3 और फ्रैजाइल रेजिन उड़ाया मैं। लिटरल बस डिफेंस है, बस डिफेंस। कामी को पूछो, ऐसे जाके खोल रहा हूँ मैं और डिफेंस परसेंट है बस। हैट में डिफेंस, गॉबलेट में डिफेंस, हैंड्स में डिफेंस, फ्लावर फेदर में डिफेंस परसेंट, फ्लैट डिफेंस। भाई क्या हो रहा है? उसके बाद एक ग्लैड का सैंड्स मिला, सीआर सीडी दोनों सेकंड 7% सीडी, सेकंड और 3.5% क्रिट रेट, रोल किया प्लस 16 पे, अराउंड 60 कुछ फ्लैट अटैक है उसपे। वो हाँ सारा फिर मैं बंद करके बोला ना भाई जी मैं जा रहा हूं। बहुत दिनों बाद आया, गलती की है मैंने, मैं वापस जा रहा हूं। So now I'm back in back to Destiny or what? Back to Destiny भाई। भूषित भाई आपको कोई अभी तक मेजर स्पॉइलर तो नहीं मिला ना? नहीं, बस कामी ने एक दिया है मुझे अभी तक। कामी है ना? मेजर तो नहीं था ना गलती से? मेजर क्या था भाई? मेजर तो था भी नहीं। मुझे क्या पता, बट उसने बोल दिया था ये कांड होने वाला है गेम में। अरे नहीं, वो नहीं बोलना था कामी यार। कामी बोला ही नहीं कुछ, ब्रो गंदी बोला ही बात। नहीं कुछ। अरे गंदी बात कामी लिटरली फोटो डाली मैंने, बोला अरे वो फोटो मैंने इसलिए डाली क्योंकि वो स्पीयर था ना, तुम जला तुमने स्पीयर देखा नहीं है, मुझे क्या पता तू उसके आगे फिर अपना मुंह खोलेगा। अच्छा भूषित भाई आपका हो जाए ना, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। वो स्पीयर नहीं था प्रोबब्ली। भाई बोली भी आवरी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तुम्हें क्यों लग रहा है मैं इतनी रात में बैठ के क्यों खेल रहा हूँ? इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मेरा सुबह का टाइम 10 अकाउंट पे पुश करने में बीता। तो उस उतने में सब लोग बहुत आगे पहुंच गए। ऐसा क्या डिवॉट? अच्छा डिवॉट तेरे पुल्स कैसे गए? नहीं मैं तो एकदम स्किप करूंगा। 50-50 मिसप्लेटर के लिए नहीं किया मैं ऐसा। बोल तो रहा हूँ ज़ेनो, आज 8 लोगों को 50-50 जिताई है। ऐसा मेरी भाई आयाका और मिसप्लेटर रिपोर्ट तो भाई ऐसा पता नहीं, मतलब फुल हॉटकिक्स की तरफ बिक रहा है। बहुत लोगों ने फुल किया है भाई आयाका प्लस बेस्ट इन स्लॉट, बहुत लोगों ने फुल किया लिटरली। इजीली काफी मिल गया। और ऊपर से वैसे प्रकाश भाई को मिला क्या? भूषित भाई नहीं, प्रकाश भाई ने मोना निकाली, ऑफ पीटी आयाका निकाली और याओ के लिए स्पाइन निकाली, तो उनकी मोना C1 हो गई है, तो बहुत अच्छी है। C1 मोना 15% एक्स्ट्रा फ्रीज ड्यूरेशन, इजी। तो वो है उनको याओ के लिए चाहिए थी ना स्पाइन, तब उनका याओ अब मारेगा अच्छा खासा। पहले डेथ मैच था ना उनका। आई वुड से लिथिक ज्यादा बेटर नहीं है स्पाइन से। तो लिथिक नहीं, लिथिक का वही फेस है ना, लिथिक कंडीशन रखता है ना आपके लिए। आपका आपके बिल्ड फ्लेक्सिबल नहीं रह जाते फिर लिथिक के साथ। और स्पाइन के साथ शाओ फुल सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, 150 160 ईयर हो जाता है तो कमेंट की बहुत अच्छा। व्हाट अबाउट जी? ठीक है भाई, ठीक है। फिर थोड़ी देर बोलेगा व्हाट अबाउट C1 ना। मैं बोलने वाला था लेकिन फिर नहीं बोला। नियॉन प्लीज आई वांट यू टू फिक्स। आई रियली वांट यू टू राइट। नहीं ब्रो प्लीज फिक्स प्लीज। भाई नियॉन फ्लेक्स करेगा, मैं इतनी गाली दूंगा ना थेरम भाई मेरे को बैन कर बोलो ना, बहुत लोग सुना चुके हैं, मैं तो फ्लेक्स ही नहीं करूंगा। इसको ये आज फ्लेक्स करा तो इसको प्रो ने भी सुना दिया। मैं फ्लेक्स किया ही नहीं भाई, मैं कामी को सोना नहीं है क्या मैं सो के उठाऊं? कामी को टैग करके फ्लेक्स करो मैं डालता हूं, ये लोग देखते हैं मेरे पे गुस्सा हो जाता है। मैं क्या बताऊं?
The shit you post is like kind योइमिया of ओपी है भाई, ट्राई करा। कामी OP तू ऐसा है क्या? flex कर मैंने रहा है भी नहीं इसलिए किया कहा यार, था। मुझे भी तो भी अनलॉक करनी है आयाका की। स्पॉइल बताओ ये मैं क्वेश्चन अभी आई वो थिंक वो स्पॉइल जेड वाले अरे योइमिया भी तो 21 दिन बाद आने वाली है। नहीं आपको इसमें दिख जाएगी, वो गेम प्ले आ जाएगा उसका। हाँ वो स्पॉइलर तो नहीं है, कोई लेकिन नहीं। गेम प्ले दिया है इसमें योइमा का। नाइस। तो 20 दिन पहले ही दे दिया उन्होंने, बोले ये है भाई यूनिट। अभी तो 3-4 दिन बाद मेजर चीजें पता चलने वाली हैं। कुछ बंदे तो ट्विटर पे इसकी यूएमए की टेस्टिंग, हां यूएमए की टेस्टिंग की वजह से क्वेस्ट से बाहर नहीं निकलेंगे पूरे दिन। Excuse me. तो भाई डिजाइन वाइज तो यूएमए बेटर लग गया है खासा पर्सनल के लिए। ये साग ये आई क्या इसमें? You seem नहीं like आया अभी तक वो। आई डोंट नो ये। अरे सर अगर आपको अभी तक कंफर्मेशन नहीं है तो वेपन ब्लूप्रिंट्स वर्ड क्वेस्ट लॉक्ड है। वो तो उतना तो आइडिया है ही रे, वो लॉक करते ही हैं। सर्टेन चीजें तो आइडिया है कि कुछ चीजें लाइक वो वर्ड क्वेस्ट करके ही खुलती हैं। नो आइडिया। इनाजुमा में ऐसा मेरे को लगा तो ह्यूमन ज्यादा है और उनकी फिजिकल रेजिस्टेंस। ओ फक मिरर मिडन। अब मिरर मिडन तो मैं पहली बार मिली थी, मैं योंगली की शील्ड लगा के बस खड़ा था। सब लोगों ने ये क्यों किया भाई? मैंने भी यही किया भाई, मैंने जोंगली की शील्ड लगा उसके बाजू में जाके खड़ा हूं मैं बस। सब लोगों ने यही किया है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं। मैंने देखी, मैं बोला ओ मिरर मिडन शील्ड लगा के जाओ। मेरा शील्ड तो नहीं गया बस। प्रोसियस सेवडर पर नो टाइम टू भाई वो मारेगी ना भाई, तू शील्ड लेके ऐसे थोड़ा घूरने के लिए आराम से देना चाहिए। वो उसमें लिख उसका अगर स्किल सेट पढ़ोगे तो लिख रखा है, अगर एक बार उसने रिफ्रैक्शन लगा दिया तो फिर वो लपक के मारेगी, फेल देगी वो भाई। तो लिख रखा है। मैं उसको घूरा, मैं उसको 15 सेकंड अच्छे से घूरा, फिर बोला अच्छा ठीक है भाई मेरा हो गया, फिर उसको मार दिया मैं। टाइम फॉर यू टू डाई, टाइम फॉर यू टू डाई। don't wish to see Duel or anyone else associated with him ever again. When we were young, we trained under the same sword master, studying Make Yoshi Sui art together. I had begun trading 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. नहीं होनी चाहिए क्या? Practitioners of भाई इनाजुमा की वजह से ही, इनाजुमा की वजह से रेडन गारंटीड बन पाएगी भाई। वेरी कुछ करने का काम ही बोलेगा। So the majority of disciples are indifferent to स्ट्रिंगलेस rank चाहिए थी and मेरे को, reward. अभी फोनिस कोडेक्स मिल गई वेपन। नहीं वो वाले काम मैं नहीं करता। ये एक स्ट्रिंगलेस मिल गई थी इस बार वेपन में, ऐसे तो R3 हो गई मेरी। अब मैं नहीं कर रहा पोल, मेरा 45 पीटी होगा वेपन पे। फिशल ने ऐसे ही लाइक आई थिंक तो कितना मैंने देखा 10,000 का ऐसे ही मार दिया था। अभी उसको बिल्ड करना है। Beaming smile on his face. मैं पोल नहीं कर रहा भाई, Best in the world. अब संन्यास ले रहा हूँ मैं इससे पोलिंग से 1-2 महीने के लिए। Sensei scolded him. मेरा तो ऑलरेडी 2 महीने होने को आ रहा है। अभी और है, और अभी तो और वेट कर रहा है। इसके पास भी बहुत, इसके पास भी उसकी तरह रिशलॉक की तरह वो लाइक विशेस होंगी जब रेडन आएगी। रिशलॉक जब भी देता है अकाउंट 200 विशेस दी थी भाई आज उसने मुझे करने को। सर जी मेरे पे ऑलरेडी 130 विश है। सबसे खतरनाक तो आज लग था स्काई भाई का। ओ भाई तूने कामी स्काई भाई का लग देखा था? स्काई भाई ने आई थिंक उनके पास 40,000 जेनेसिस क्रिस्टल थे और उन्होंने 40,000 जेनेसिस क्रिस्टल थे, उन्होंने एक अयाका निकाली, फिर वेपन मैनर पे हिट किया, मिस स्प्लिटर निकली पिटी पे, फिर ऑफ पिटी फिर से मिस स्प्लिटर, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, पहले उनकी स्काईवर्ड निकली, फिर ऑफ पिटी मिस स्प्लिटर निकली, फिर ऑफ पिटी एक और मिस स्प्लिटर निकली, और उसके बाद उन्होंने फिर इधर कैरेक्टर बैनर पे डिलुक निकाला 40,000 जेनेसिस में। और ग्रेवस्टोन भी, और हाँ ग्रेवस्टोन भी, ऑफ पिटी ग्रेवस्टोन भी। प्रकाश भाई क्या सीन है आपके साथ? 40,000 जेनेसिस क्रिस्टल में। अब जीना जाके किसी को मर्डर वर्डर कर देगा। नहीं भाई गेंशिन खेलता कौन है? स्टोरी खेलता कौन है? नहीं कर ही रहा हूँ। हाँ मैंने कर दिया। ये बोलते रहे जीनो के एक वही वो होता है ना, मीम होता है ना, ऐसा मास्क पहना होता है, who plays Genshin नीचे रो रहा होता है। नहीं भाई मैं गेंशिन खेल, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कौन Then did I realize that it was Domon who had long since मैं तो read his आया था, mind मैं for मेरा all स्टोरी क्वेस्ट किया, agitation. मुझे तो देखना था, मैंने देखा, मैं निकल लिया।
नहीं उसके बाद वो उसके डिफेंस बाद वाली भी आई बात थिंक मैंने कुछ किया था ज़ैनो भाई उसके बाद एक्टो कुछ नहीं नहीं किया हुआ क्या? desire to become ज़ैनो the भाई best एक्टो in the नहीं किया world. क्या? मैं इस साथ ही बार था नहीं Nothing बताया less than क्या हुआ था? बहुत डरावना था perfection बट in the art of एक्टो बहुत design. डरावना करो सर जी भाई, And आप nothing असली could मजे तो deter him एक्टो में from है this सर। goal. साथ में ही था मैं No ब्रो matter what stood कुछ in तो his बताया way. जैसे एक्टो इज लाइक द थिंग है ना प्रकाश भाई, मैं सोचा मैं क्वेस्ट करूं या ये ओपन वर्ल्ड को ताड़ू। नहीं क्वेस्ट करो, अभी क्वेस्ट पहले करो। पेस्ट कर लो, अरे क्वेस्ट अच्छी अरे रहेगी। कर लो। द थिंग अरे इज आप ना, क्वेस्ट करो, क्वेस्ट में ताड़ने के लिए बहुत चीज है, बोल रहा हूँ। द थिंग इज जब आप एक्ट 2 करोगे ना तो एक्ट 2 बुशीत इज भाई लाइक मैं कह रहा हूँ चेरी ना ऑन द आपसे, आपको टॉप थोड़े है। थोड़े स्पॉइलर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। Because until तभी मैं now, फटाफट निपटा रहा हूँ भाई। I was थोड़े convinced थोड़े that क्या मैं I भी would पूरा succeed our स्किप ऐसा है क्या sensei कामी? as master of make ओ your नहीं note. ये थेरम भाई लेफ्ट क्लिकिंग ऑन द बैन बटन भी लगा ऐसा क्या? मैं अभी हैकर से बात करता हूँ, कामी को हार्डवेयर बैन देंगे। भाई मैं तो ऐसे वेट करो भाई, आगे के एक्ट्स कब आएंगे Of भाई, all the स्टोरी disciples, देखनी है I भाई। was मैं the तो most मैं तो gifted. थेरम भाई का पूरा I had एक्ट 2 का trained the रिएक्शन देख के longest. जाऊंगा तो। Everyone had high अरे अभी आप छोड़ दो, मैं लोग भाई करो भाई। एक्ट 2 में बहुत टाइम है इनको। Dolmans यार, are मैं right सुबह what मैं you प्रकाश do. भाई मैं भी 12 बजे सो के उठा When हूँ। we sparred, नहीं I lost आप not just जानते the हो match, आपको क्या करना but पड़ेगा, my एक्ट 1 pride करना and है, my फिर उसके बाद status एक्ट too. तो करोगे, ठीक I है। fled the dojo that day and फिर never आपको looked योगिया back. को भी करना है। अरे फिर कोई उसके ना, बाद वही एक्ट 2 इन लोगों ने अनलॉक होगा। एक्ट 2 को गेट कर दिया है कि आपको हाँ। पहले दोनों कैरेक्टर के स्टोरी क्वेस्ट निपटाने स्टोरी पड़ेंगे, क्वेस्ट फिर आपको करने हैं। अगला एक्ट करने देगा ये आर्क हाँ। कॉन नहीं क्वेस्ट इतना बट कुछ भाई खास नहीं I है, heard that बट he's आप कर एक्ट सकते 2 हो। भाई, sensei एक्ट 2 too. क्या वर्थ है भाई। Sensei was हाँ, advanced in मजा आया। years by then, and unfortunately that Reputation भी match करनी पड़ेगी used यार। up every last ounce मैं of फटाफट every रेपुटेशन time. खोलना चाह रहा हूँ ना इस वीक की, जैसे वो 3 हो जाए मेरी, वो करना मुझे। After that, I बच्ची wanted के लिए वैसे nothing रेपुटेशन further खोलने to के लिए do क्या with करना it. पड़ेगा अपने को? वो नहीं पता Deep मुझे। down, though, I still respected his क्या वो mastery of the इनाजुमा के blade and कमीशन his वो तो खुल commitment to गए the ना। art तो of मेरे नहीं खुले design. ना। रेपुटेशन भाई कमीशंस तो खुल गए, हाँ, यहाँ आप लोग रेपुटेशन की बात हो रही। हाँ। तो क्या कमीशन रेपुटेशन से लिंक नहीं है इस बार? अरे कमीशंस दूसरे होते हैं जो commissions अरे daily वो नहीं, मैं वाले rep- मैं सिटी रेपुटेशन वाले कमीशंस की बात कर रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट एंड बाउंटी वो नहीं खुली ना अभी। नहीं वो तो खुल जाएंगी, वो तुम वो बात तो करोगे खुल जाके जाएंगी। लाइक वो दैट तो गर्ल गिव यू इसी समथिंग में- टू डू। वो कामिसातो के आयाका की स्टेट में है ना वो कामिसातो चीज जो है। हाँ, हाँ, इसी वहीं में पे है, है, वहीं पे इसी है। आइलैंड पे है। My first reaction was to dismiss them as हो false. गई, मेरी खुल गई। How could he, वो करना। of all people, सब have lost अरे his बाउंटीज और mind? रिक्वेस्ट तुम्हारी तब His खुलेंगी जब mind तुम was the रेपुटेशन लेवल sharpest 2 of पे them all. पहुंचोगे। He had So you'll have to- practiced make Yoshi sui art क्वेस्ट to करने होंगे ना perfection. तुमको, quest वर्ल्ड हाँ, करने quest करके ही वो वर्ल्ड खुलेगा, quest हाँ। करने होंगे पता। Yep. पर मैं I आराम से decided to करूँ भाई, quietly आर्ट come में and see स्टोरी if देख it के were मजा true. आ गया। मैं तो Sorry, guys, Then, लिया to प्रकाश my भाई। complete सारा हो astonishment, गया। इधर I से heard करने him का। call my name. आज तो बेडू का वो स्टार्ट हो गया होगा I thought इवेंट। mine was a ये 7:30 name पर है। I've long since वो forgotten. 7:30 बजे सुबह। 7:30 चलो यार, गुड नाइट छोरम, गुड गुड नाइट नियॉन। भाई ऐसे रेडन को देख के भाई मजे आ So गए। you बाय see, बाय नियॉन, nobody likes I you. came here not to cause him any harm. नियॉन क्या गिव मी बताओ? योर होमा to see प्लीज। for और myself. उसका पोलाम कंफर्म हो गया सर, जेड है, होना चाहिए, शर्म नहीं आती। रेडन का। हाँ जंगली को अरे दूंगा। प्रकाश भाई शांत हो जाए। Okay, रेडन और नहीं फिर my मतलब story. हाँ प्रकाश भाई दे दो, प्रकाश भाई दे दो और दे दो। The exorcism is सर probably जी स्पॉयलर्स क्यों दे रहे हैं आप? Spoilers। अरे वो तो वैसे ही कंफर्म था ना कि वो हो क्या वो कंफर्म था, पता कुछ चल नहीं जाएगा पता तो मुझे तो खुद गए स्पॉइलर दे रहे हो कि शर्म Seems नहीं like we got it wrong this अब time. इसमें क्या स्पॉइलर है, He wasn't पहले here to पता mess था up the पोलाम exorcism होने at वाला। all. आती। नहीं कोलम नहीं है वो। ओह फक। Paimon's not sure we should bring him back with सही है us. काम केक। बेचारा लाइक मतलब प्रकाश भाई और कामी ठीक है भाई। ओह फक। ओह शिट। डीवॉट की उंगलियों में खुजली हो रही है, डीवॉट में किस पे दबाओ पहले मैं। कुछ नहीं, पहले किसको डीसी करूं? डीवॉट फुल भाई, डीवॉट फुल जीजी मैं मूवी ऐसे करेगा। मैं स्टोरी स्पॉइलर थोड़ी ना दूं, मैं तो बस ये बता रहा हूं वेपन टाइप क्या है उसका। नहीं, वो तो छोड़ी होगी। पड़ेगा। ब्रो आयाका बैनर पे 70 50 50 50 नेक्स्ट बैनर पर है। Why? But how is that possible? हाँ ये लेकिन No, ये अच्छा no, I refuse to कोकोमी को believe काफी it. अच्छा दिखाया है Something's अभी। ओ clearly बे wrong. भाई। ये वाला पार्ट मैंने सुना नहीं, मैं स्टोरी सुना था, अच्छा मैं बच गया। I'm sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Gammax. नहीं वाला पार्ट तो सुन लिया, मैं स्टोरी सुन रहा था और 2-3 आवाजें मिक्स हो गई तो नहीं सुन पाया क्या बोला उन्होंने। Many of which I cannot claim to have witnessed myself. अच्छा Thus, सबसे बड़ा I स्पॉइलर dare rule out दे दूं क्या? possession with रुको मैं प्रकाश भाई को मैं म्यूट कर रहा हूँ। certainly
certainly not lost, for I received word not हाँ long प्रकाश भाई ago बोलो that जितना Lady बोल रहा है, Ai मुझे कुछ सुझाव नहीं showed दे रहा है। interest in your sensei's case. Lady Ai? को भी बस Is that the same Lady Ai that I think you mean? The head सो जाओ, मैं shrine 12 lady बजे of सो the के Grand उठाऊं। Narukami Shrine? That's wonderful news. Then Sensei will be sure to recover. Correct.
Lady Yai is most knowledgeable indeed and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. I am unable to say for certain whether an evil spirit has possessed your sensei. तभी तो आज स्पीड रन हो रहा है स्टोरी का. Conclusive verdict. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift? अरे सर जी आप तो फिर भी अच्छे से कर रहे हो. मैं देख रहा था उस सर्वर पे लोग लेफ्ट क्लिक किए जा रहे हैं स्टोरी पे. नाम लाइक भाई महीनों बाद स्टोरी आई है, पहले तुम लोग रोके की स्टोरी नहीं है. भाई मैं तो लिटरली ना जेनो ऑटो प्ले पे भी नहीं रख रखा, जैसे पूरा स्टैंडर्ड्स पढ़ूं ऐसे करके. अगर बड़े लिख देते तो पढ़ने नहीं बैठता हूं. लोग तो लिटरली लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं एकदम स्टोरी पे और मैं बोल रहा हूं भैया आराम से करो ना. जीनो वो तरीका टॉकिंग का बता दो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उस लॉन्डे के बारे में जिसका मैं डीसी करने वाला हूं. वो ओके वो लौंडा जो सिर्फ अब आर्टिफैक्ट का राम जपता है. और रेडन के वेपन का. हाँ. और डीएम्स पे लोगों से पूछता है हुटाओ चार्ज अटैक हाउ. काफी शांत हो गया भाई, काफी शांत हो गया. No, that's not what I meant at all. You misunderstand वो me. देखने में बहुत अच्छा है. True. थोड़ा से G-Force के फिल्टर लगा लो मस्त तो देख के. तो G-Force का फिल्टर लगा रखा है मैंने, मैं देखता हूँ लेकिन ऑन स्ट्रीम वो दिखता नहीं है आई थिंक सो. शायद वही अगर आप स्क्रीन शेयर मतलब डायरेक्टली गेम का करेंगे तो नहीं दिखता है. अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो दिखेगा, गेम शेयर करेंगे तो नहीं दिखेगा. लाइक अगर आप OBS से सीधा उठा के दिखाएंगे तो दिख जाएगा क्योंकि OBS आपका स्क्रीन उठाएगा ना. हाँ. Anyway, you should join us too. हेलो राजवीर भाई. Given that you've traveled इलेक्ट्रो ट्रैवलर भी मैंने सुना बहुत पाओगे. हाँ मतलब बहुत गॉडली बैटरी है वो और यूनिट्स के लिए. We'll do our best to ऐसे help चल रहा है उसका कुछ केस. एनर्जी रिचार्ज दे रहा है वो औरों को. Sure. After all, everyone seems pretty excited about Lady Yai. We're curious to meet her too. सर जी आप समझ रहे हैं ना लेडी है. Yes. Who knows? Maybe we'll be able to find नहीं भाई out a thing लीक्स or two देखी about the किसने थी, right हमको तो पता ही नहीं है लेडी है कौन है. लीक्स वो क्या होता है? अरे लीक्स क्या होता है भाई? मैं तो गांधी जी के बुरा मत सुनो बुरा मत देखो वाले सिद्धांत पे चलता हूँ. ऐसी चीजें नहीं देखता मैं. सही बोला ना डिवॉट? आप भी नहीं देखते ना? बिल्कुल मैं भी नहीं, कभी नहीं. लाइक लोगों को देखो आजकल दो ही कैरेक्टर होते हैं उनके हाथ में. या तो लोग ऐसा शाओ लेके सब चलते रहेंगे या तो फिर आयाका लेके चलते रहेंगे. मैं तो वही करता, मैं भी शाओ आयाका लेके ही चलता. प्रकाश भाई आपको अनम्यूट कर दिया. ठीक है प्रकाश भाई. प्लीज प्रकाश भाई कुछ मत बोलना. मैं स्टोरी स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ मैं, बट इतना कह रहा हूँ आप एक्ट 2 कंप्लीट कर लो तो अच्छा है आपके लिए. देखो एक चीज है आयाका होने से अब एक चीज बहुत अच्छी हो रखी है. A pleasure to be working with you. I wonder what अरे क्रोम ने एक चीज बताई थी वो. नहीं कामी नहीं. मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ. मतलब जैसे म्यूट किया एक चीज बता देता हूँ. ठीक है भाई. प्रकाश भाई कुछ नहीं बताना है प्रकाश भाई. लेट मी फिगर इट आउट. जानना ही नहीं है शांत. जानना ही नहीं है. स्टोरी स्पॉइलर थोड़े दे रहा हूँ. नहीं मुझे जानना ही नहीं है. आप स्टोरी स्पॉइलर नहीं करें फिर मुझे जानना ही नहीं है. अरे स्टोरी स्पॉइलर में वो यही में आती है क्या? अरे वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ आपको अयाका का स्टोरी क्वेस्ट अच्छा लगेगा. अच्छा है क्या? अगर मुझे अयाका अच्छी लगी है तो वो तो नहीं स्टोरी में योही में को इंक्लूड करना है नहीं करना. अरे भाई ये मिसप्लेटर कहां से आया? ये डिवॉट ने निकलवाया. फुल कर लिया डिवॉट ने. ओ भाई डिवॉट डोंट नो डिवॉट. मतलब ऐसे मैंने डिवॉट को बोला डिवॉट निकलवा दे. डिवॉट ने बोला मिसप्लेटर टू यू 10 पुल मारे आगे. मेरे को फ्रेजाइल चाहिए. मैं बीपी लेके ले लेता हूं. डिवॉट मेरे लिए भी थोड़ा सा अलग समेट के रख जब ये आए वगैरह आए. मैं बता रहा हूं जरा जब तुझे पुल करना हो ठीक है. मैंने देखा है कामी ने जब यूला आई कामी पहला बंदा था जिसने डिवॉट का पावर यूज करके पाई निकलवाई. उसके बाद जितने लोगों ने भी डिवॉट की पावर यूज करी नहीं मिला. तो यू हैव टू बी दैट फर्स्ट पर्सन टू गेट दैट स्फीयर. नहीं तो नहीं निकलेगी.
यानी अगर मैं सबसे पहले मैं पुल करूं सबसे पहले मुझे मिलेगा। क्या कह रहे हो? I've had dips on मैं मतलब कि डिवोट को बोला हुआ है मैंने राइडन का वेपन वो मेरा निकाल के देगा। डिवोट अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत कर, हमको दे। ब्रो मैंने उसको पहले बोला हुआ है राइडन का वेपन निकाल के देगा वो मेरे को। भाई राइडन का वेपन का मेरे को तेरा क्या ऑब्सेशन है समझ में नहीं आ रहा। पहले तेरा C2 जोंगली के साथ ऑब्सेशन था, तेरा राइडन का वेपन पे ऑब्सेशन आ रहा है क्यों भाई? सॉन्ग अरे हाँ इसको फॉलो करो, ये कुछ माल देगा। प्यारा है ब्रो भाई पड़ेगा भाई नाश्ता वो बंद, ये क्या रकून है क्या नाश्ता? हाँ रकून। कामी मैं डीएम में लिख के रिप्लाई करने से बोल रहा हूँ कहाँ का स्पाइरल दे दोगे वरना। मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है जाओ का ये थोड़ा नर्व अच्छा वो नहीं खुलेगा बस ठीक है बस इतना बोल दिया ना बस ओके। इतनी देर से मैं अनम्यूट था भाई, इतनी देर से अनम्यूट था मैं क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग थी। अनम्यूट था मैं, हाँ मतलब म्यूट था वो। आज स्ट्रीम चल रही है। हाँ मैंने बहुत आज मतलब आज जल्दी कर। केरम भाई बड़ा दर्द दे रहे हैं मुझे, जाओ अच्छा आयाका विद स्प्लिटर दर्द हो रहा है मुझे। ऐसा क्या? हाँ मेरे को काफी अरे आप भी निकालोगे ना रेडन विद वेपन। रेडन वो तो भाई सब लक की बात है। हम तो तीन पीटी लेके जा रहे हैं। तीन तो नूब लेके जाते हैं भाई, मेरे पे 3 तो अभी है। कैसे कर रहा है यूहिमिया टू द मून ऐसा क्या इतनी अच्छी लगी क्या? रेडन का कंफर्म पीटी है क्या भाई? मेरे 20,000 प्रीमो है, क्या फर्क है? रेडन का कंफर्म पीटी है क्या, ये पूछ रहा हूं। अरे बना लेंगे लाइक मेरे पे 60 की पीटी और मेरे पे 20,000 प्रीमो है। इसमें ये देखो कंफर्म ही है तो देखना पड़ेगा, तो लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई कितना क्यूट बनाया भाई इन्होंने। जीनो स्ट्रीम पे। हां जल्दी आ, इससे पहले इट इज डिस्ट्रॉय नेवर माइंड बताएगा। अच्छा हाँ मैं कह रहा था बहुत लेट है तो हो गया कि अगर अपन भाई मुझे हेल्प चाहिए प्लीज हेल्प कर दो। अभी तो नहीं कर पाऊंगा ये यूनिवर्स, रात के 2 बजे तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अपन ने मोना को कहीं से भी याद नहीं दिया, समझ रहे हो? नहीं दिया कहीं से भी याद। तो अपन इलेक्ट्रो एमसी के ई के थ्रू अपन मोना को याद देंगे और अपन मैक्स टू मैक्स 55-60 याद दे सकते हैं। तो उसके थ्रू अपन मोना के अल्ट के टाइम पे मोना को डैमेज बोनस दिला सकते हैं 4 पीस का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझे मुशीद भाई? अब मैं म्यूट तो नहीं हूं ना? हाँ समझ गया। आप ईएम ट्रांसफर कर रहे हो? हाँ ईआर नॉट ईआर। अरे हाँ ईआर ट्रांसफर कर रहा मैं मोना को। तो उसका 4 पीस होगा ना ईआर का, मोना का 4 पीस होगा। उसके लिए मेरे को मोना को टाइम पीस पे भी याद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। चलो मैं चला सोने डिस्कशन में चल कर। शुभ रात्रि। मैंने इलेक्ट्रो एमसी की कॉन्स्टलेशन कुछ नहीं पढ़ा भाई अभी। मैंने सब कुछ इलेक्ट्रो एमसी बहुत होती है। मैं तो बस आयाका पुल की तब से बस हो गया मेरा। भाई मेरा भी हो गया भाई, मैं तो स्टोरी क्वेस्ट किया हूं। आप सब लोग आयाका पुल कर रहे हो, कोई ना कुछ पुल कर रहा है, हम भी तो कुछ मजे लेना। तो इलेक्ट्रो एमसी से काम चला रहे हैं। ऐसा है क्या? इलेक्ट्रो एमसी से काम चला रहे हैं भाई। साउंड आउट राइट। भाई यार कहां गायब हो गए? वो बात अलग है मेरे पास। वो बात अलग है मेरे पास 70 लोग हैं। सेम मेरे पास भी। वो बात अलग है मेरे पास 7 मोड। वो बात अलग है मेरा मोना ब्रो मेरे पास मोना आती है। वो बात अलग है मैं गेंशिन खेलता नहीं हूं। Says Zeno was rolling defense for like the last 30 minutes. Yes. Easy. कल तो आर्टिफैक्ट डोमेन यार कीबोर्ड वो तो अनइरोनिकली किया था, नॉर्मी है क्या? नहीं ये अनइरोनिकली किया था ब्रो। अबे दिखता छोटा है लेकिन आइलैंड बहुत बड़े-बड़े हैं भाई। ये वैसे है ना उन्होंने सीख लिया ना कि उसकी तरह क्या नाम है वो ड्रैगन स्पाइन की तरह वो दे दो, हाइट दे दो हर चीज को तो वो फील हो जाता है वैसा। तो वही किया उन्होंने वर्टिकलिटी दे दी हर चीज को तो वो फील होगा तुम्हें। नहीं वैसे देखा जाए तो एक्चुअली बड़ा है मैप, देखा जाए तो। हाँ मैप बड़ा भी और मैप पे वो वर्टिकलिटी भी है तो आपको वो भी लगेगा ऊपर की तरफ भी जाने का वो सीन पूरा। अरे हाँ कोई आया का वाला है क्या? मैंने ऐसे ओपन वर्ल्ड में चला लिया बट लेट मी आस्क समवन। अरे मोना चला ले कामी। आपको सर इलेक्ट्रो रखना पड़ेगा साकुरा ब्लॉसम से। हाँ वो है वही डाल रहा था मैं तो कसम से मोना डीपीएस बना रहा हूँ क्योंकि बहस किया कि उन्होंने इतनी कंजूसी किया है ना साकुरा ब्लॉसम देने में। एक देता है भाई वो एक भाई वो भी देता कैसे है?
मैं हाँ लीसा इजी रहेगी। हमको लीसा देखने को भी मिल जाएगी ना। आ रहा I'll keep an eye on you. लीसा को देखनी है, अभी मिरर मेडन देखना। आई थिंक इलेक्ट्रो गाना से भी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी लगता है। वो तो इलेक्ट्रो गाना तो भी लेवल अप होने में तो नहीं क्या क्या मॉन्स्टर बन रहा है भाई वो। वो देखा मैंने। वाला इलेक्ट्रो गाना तो मैं देख रहा था वो भाई, उसको लेवल अप करोगे तो वो कुछ भी बन रहा है गेम में। लेकिन उसके लिए सारे आइलैंड्स आने तो चाहिए पहले, अभी आइलैंड्स ही नहीं दिए। हाँ ये लोग आके मेरे को हैरास कर रहे थे कि भाई तूने वे पॉइंट नहीं खोले, हम तेरे वर्ल्ड से साकुरा ब्लॉसम कैसे चुराए हम लोग। तो मैंने सबसे पहले जाके सारे आइलैंड के टीपी खोल दिया। फिर जब गेम ने बोला नारुकामी श्राइन, मैं बोला हाँ टीपी टीपी। भाई बहुत हैरास कर रहा था मेरे को क्रोम और ये सब लोग आके कि भाई तूने टीपी क्यों नहीं खोला, तूने टीपी क्यों नहीं खोला। भाई आधा घंटा हुआ है गेम खोल के, छोड़ दो भाई मुझे। आज तो भाई साकुरा ब्लॉसम के लिए क्या मोनोपोली हो रही थी। लोग लिटरली मतलब ऐसे स्पेनिश इन्वेड नहीं किए थे पूरी दुनिया को, वैसे इन्वेड कर रहे हैं भाई हर जगह। फुल ब्रिटिश मूवमेंट हो रहा है। आशित ने 80 कर ली भाई। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मैंने वही बोला, मैं भी स्पीड रश कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई स्पीड रश करने के बाद 4 दिन बाद होगा भाई कुछ है नहीं गेम में करने को, आराम से खेलो। आशीष मेरे अकाउंट पे 12:30 बजे आया, वो उसको मारने थे समुराई। हम लोग 10-15 मिनट मारे, मैंने कहा भाई स्टोरी का। द थिंग इज मेरे पास आयाका के लिए इतनी चीजें हो गई ना, तो मुझे रश करना नहीं। आयाका है, उसका वेपन है मेरे पास, तो मैं आराम से करूंगा। तो ओ भाई आप ये कर लो, डिफेंड कर लो, आई गेस मजे ले लो। Junior was so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? Oh my. It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. वो बात अलग है कि मेरी C4 जीजी इलेक्ट्रो MC7 हो गया, बट अब मैं सब इलेक्ट्रो का ढूंढने जाऊंगा। ऐसा क्यों? यही ओ भाई क्या खतरनाक आवाज है इसकी। It must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. Oh bhai. But then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I like the camera angle. I like I appreciate the camera angle. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? I like the camera angles. Even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady, I'm not sure I understand. The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now.
much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Ansai. That's enough. Huh? Isn't that Ansai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Ansai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. Okay. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes इतना in you any excited कि longer. रात को stream अरे मुझे the thing is ना विवेक भाई the thing is दोपहर में like दूसरी stream करने के बाद मैं सो गया था तो मैं like सो के 12 बजे उठा हूँ मैं like I be like अब मैं था कि अब मैं उठ तो गया हूँ अब मैं करूँ क्या तो मैंने सोचा तीसरी stream I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? तो अभी सो के ही उठा हूँ थोड़ी देर If पहले there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. Well, You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. Damn. You are not in the same position that Hello, I was. Moksha. Once again. When I left, I had nothing to my name. But you have a great number of worthy disciples. I understand. Damn. I'm sorry to have made you worry for me and for the state of Meikyo Shisui. These quests of Ayaka are very I no sage. longer have the resolve to become the best in the world. As The I get emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. I like that. I like humbly that. ask I like Ansai, the sage thing. my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Ooh. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. Okay. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh? Yes, it seems as good of a resolution as we can hope for. Traveler, a moment, please. Lady Yai Oh, has some bhai. words for you. Okay. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature.
Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. Damn. Huh? I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Oh bhai. What? I have high hopes for Wave 3 audio test. सुबह क्या था 4C पहली स्ट्रीम पर पार्ट 1 देख तुझे वेव 3 का ऑडियो टेस्ट मिल जाएगा वेव 3 का ऑडियो टेस्ट तुझे पहली स्ट्रीम मिल जाएगा स्टार्टिंग में She seems super mysterious. Paimon's so curious what बच्चा she बोल really दिया meant by all that. तो ठीक है We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato. पूरी स्ट्रीम नहीं पार्ट 1 पहली स्ट्रीम 4C ये पार्ट 3 है पार्ट 1 व्हाट दिस लाइटनिंग स्ट्राइक कैसी लगी भूषित भाई से ऐसा बस पूरा भाई उसने तो मुझे बच्चा बोल दिया किड बोला किड भाई उसकी आवाज कितनी खतरनाक है भाई ऐसा लग रहा है क्या ही लाइक कोल्ड हार्टेड है वो पूरी की पूरी अरे जापानीज में तो और भी ये लगता है ऐसा I was like यार कुछ तो रहम कर नो जापानीज में तो और डेंजरस लगती है वो हमको चाइल्ड बोलते हैं हम उसको वाइफ बोलते हैं एक ही बात है याओ की एक अच्छी चीज है डिवॉट कूदो और कहीं भी प्लंज मार दो यस फॉल डैमेज वो क्या होता है Okay, let's see. सोकर ही उठाऊं शुभांकर भाई Oh, Ayaka! Guess who fulfilled all your wishes? Huh? Ayaka! Huh? अय्या You mean Ayaya? Kamisato Ayaka Ayaya. ओ भाई 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 Ayaya. easy Traveler, Paimon, it is a pleasure to finally meet you both face to face. I have heard all about how you helped our 3 friends. My sincerest thanks to you. the damage done by losing a vision can't be completely undone true Yeah. Short of getting them their visions back, it seems like there's no way to really help them. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. friend zone कर दिया इसने तो Okay then. सैड जो भाई You seem pretty different out in the open तो बुलाओ भाई compared to तो how you मको are सारा behind के the साथ में बैठ के screen. बात करेंगे अपने दुख दर्द बांटेगा और फिर हम भाई उसको सेक्स करेंगे You have now witnessed ऐसा है the क्या pain of those deprived of their फ्रेंड visions. जोन क्या होता है भाई What are your feelings of what you इंस्टाग्राम have डीएम seen? दिखा ऐसा लड़कियां बैठी हुई है ओ भाई Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. Thunders roar,
Lightning's flash, the wind's assault, and the rain's descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? I will help you, ठीक है भाई. You will? Really? Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See? I told you he wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori tea house? अच्छा थियरम भाई यहाँ पर एक We टेस्ट ought not होती है to जो आपको involve other 200 के मोरा members of the देगी. Yashiro आपको Commission. मैं दिखा दूंगा कहाँ पर. तारोमारो के पास. अब वो मैंने देख रखी है मैंने छोड़ रखी है वहाँ पे. कहाँ पे है वो तारोमारो के पास? उसके जस्ट पीछे, उसके जस्ट पीछे. उसके पीछे कम रहा है, उसमें बड़ी सी चेस्ट है. Please continue without me. I'll keep watch. मैंने ऑन स्ट्रीम ही देखा था, फिर मैंने छोड़ दिया था. मैं बाद में लूंगा जब मोरा की जरूरत पड़ेगी. अगर मैं गैम्बलिंग ना भी कर रहा हूँ तो This is a land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. अगर पुलेबल होता ना मैं Such डबल पीटी लगा privileges देता. exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial भाई उससे सवाल पूछो ना, वो उससे सवाल पूछो ना, वो अलग-अलग तरीके से वो बोलता है, पता है? to discuss details in front of bystanders. उससे कभी सवाल करना. मारो मारो डबल पिटी भाई. Gotta keep a bit of mystery, right? Once the number of ठीक है फोर्सी, ठीक ceremonial है. affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house ऐसा है क्या here. शिवांकर भाई? Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Perfect place for a secret base. In any case, Me we can asking talk Zeno who's freely a chunky here. boy. I presume you have a few Definitely questions not that you me. wish to ask me? Like I am like chonky but not super chonky. Like I am chonky enough to the point where I Of could probably course. crush you between We my have hands. tried but on that's numerous about it. occasions. वो Unfortunately, कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, कौन सा मूव होता है? बियर हग. repeal the decree arrives at Tenchukaku. मैं Ease. भाई Promptly मैं actual vetoed by भालू हूँ, both मैं the living Tenryo भालू हूँ. Commission and the Konjo Commission, and subsequently Living Balu, scrapped. yeah, nice. They invariably adopt a That's stance the- of unconditional support for That's the the Shogun's closest way I can decisions. explain. कामी का तो मुझे फील आता है कि Discussing anything. ये तो भाई full सूखा पतला सा होगा, इसकी होगा, हड्डी मुझे तो भाई फील हड्डी आता हो है. गई भाई इसके शरीर में Decision पूरी. to issue listener है, Vision मत Hunt सोचो वो. decree. ये स्काई क्यों आ रहा है? मैं स्काई कौन सा स्काई है? हाँ? मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में The issue is this. For the vast majority of people, ये कौन सा the हाँ, ये Vision तो भाई Hunt full हड्डी decree वाली is आवाज something है. that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Nevertheless, in addition to Nobody cares, us, Simon. there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island due to their different belief systems. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt decree. The almighty Shogun. I have seen her on but only a few occasions, most of them formal ceremonies. She inspires awe, commands respect, and exudes a sense of absolute authority. भाई इस बार का But बीपी as लेने का I कोई नीड recall, नहीं है मेरे को लिटरली. there was something क्या करूं else मैं? about her that struck me even more deeply. मैं It तो was कुछ her pull नहीं almost कर रहा Inazuma में तो complete मुझे भी lack नहीं of है, but any I'll probably emotion. end up buying it. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more Like of, you paying for well, resources. an Nothing else. वो executive भी वही official, हमेशा I वही रहा है. suppose, नहीं चाहिए ना focused रिसोर्सेज लाइक तुम्हें. exclusively on her single goal You of think that, implementing but you know. eternity, acting नहीं लाइक accordingly मैं तो कुछ भी without पुल नहीं कर feeling. रहा हूँ मेरा तो बस. नहीं भाई कामी डे 1 कुजो 90 कैसे करेंगे?
Oh, wait. Ooh, Paimon has a question though. Oh? What would you like to know, Paimon? Have you got a plan yet to fight division? Obviously talent books मिलेंगी ना भाई. To be honest, we do not. ये वाले बीपी तू कभी वो देखना कि बीपी में जितना सामान मिलता है वो कितने रेजिन वर्थ है, तो जाके आइडिया लग जाएगा. Coming to terms with that is already a difficult हाँ तो वही step हुआ to ना. take. अब वो तुझे देखना है. So what are we gonna do? वो मैं तेरे कैलकुलेट थोड़े करूँगा. For the moment, all we can do is try and reduce the harm that is क्योंकि being वो BP is caused by kind of this that decree. thing, like it's For a bundle of resin. By providing vision bearers Resin with safe bomb refuge, yes. or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling साथ में वो जो Paimon that एक्स्ट्रा there are 5 people फ्रेजल out आते there हैं, who those are can helpful. make fake visions? Don't underestimate the talents of the craftspeople in In artifact Hanamizaka. domains, in gambling. To the naked eye, Anyways. their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who was providing us with counterfeit visions, has recently been arrested by the Tenryou Commission. Darn! So they found out about it? Ugh. Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. But we cannot simply abandon Master Masakatsu. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan. पता है इसमें सबसे मजेदार पॉइंट कौन था पता है? जब वो लड़की बोलती है ये लेटर ले जा दो और MC बोलता है I am leaving. That was so funny. Straight, I am leaving. By no means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Nagonohara family. There, you will find someone. नहीं मतलब सीधे उन्होंने सीधे स्टेटमेंट ही दे दिया I am leaving. डॉगो का डॉगो. ये रहा काम ही है. जो चेस्ट देखना है ना ये है वो चेस्ट. हाँ मैंने उठा लिया वो. उठा लिया ना. और ये रहा डॉगो. मारो. उससे जाके कहीं बात करना. उसके अलग अलग सवाल है ना. हर सवाल में वो वुफ के पहले एक चीज बोलता है. गामी तेरे को एक सैड वर्ड बताओ. The Shogun probably likes Taru Maru more than you. Bro, वो मेरे को बताने वाली बात नहीं थी. I know. Even I like Taru Maru more than me, bro. What? Okay. Full self-depreciation. नहीं, the only time Yao does not say worthless is when he sees Tarumar. Just hand it over. You don't want any trouble with me. If you Or think your when the snow is elemental sticking out. powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your Shall be kind like we've when the snow is encountered, thick and we've enough we seen the can eat same it. Meal unpleasant looking at you will things be like time yes. after time. अरे अब जहाँ से You प्लान कर रहा था best पहली save बार yourself से the you wanna trouble. die ऐसा वॉइस लाइन दी Can't you make an exception? हाँ तो उसकी सारी वॉइस लाइन पढ़ सकता है ना फाइट वाली. आ गई है. नहीं आज फाइट में दी अभी आज पहली बार. उन्होंने वो वाली भी वॉइस लाइन ऐड कर दी. जब भी असेंड होगी वो अपनी स्टोरी बोलेंगे. असेंशन वाली. मैं सरप्राइज मैं बोला यूजलेस वर्थलेस नहीं बोला यू वांना डाई. अब देखे क्या फायदा भाई. अब तो हो गया था. अब तो सब 90 हो गए. अब क्या सेंड करेंगे. ओ भाई ओए मिया. छी बे एचपी का सेटलेट कौन देता है. ओ वेट जीनो. Quiet. क्या भाई. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean Okay, you Lagan. sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait. You do have a vision. Shh. If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. All right. Here, take it. Wise choice. All right, let's go. कैसा लो एचपी 2 वाली वॉइस लाइन दी थी जॉन उस टाइम ना मैं. He's already given up his vision. Prepare to die fool. Nice one. This is your fault. You're the one who stopped us from interfering.
Many thanks, Miss Yoimiya. If you Zhao hadn't Singh swapped prepare me to a die bait while just he's now, I'm sure I while would he's have on 2 lost it. HP. No worries. या You put on quite the खुद को बोल convincing रहा है। performance. ब्रो आप जानते हो ना स्केच पे कम कब होती है? Oh, so that's I what's mean, going on here. सॉरी वो जब वो मरने वाला होता है। कामी जब जाओ वॉल्ट पे होता है। जब वो मरने वाला होता है। कामी जाओ यूज भी करता है? ब्रो क्यों नहीं तभी करता है? तभी कामी 35 के का फर्स्ट प्लंज Tell मारता from है your मेरे reaction, we were on the same side. कामी बाय द वे Didn't मेरा know it, 42 का फर्स्ट प्लंज मारा देख फोर्सिया का तेरा एक्सलार का मन नहीं है तो तू एक वो भी देख सकता है। क्या नाम है उसका? I don't remember asking. Much, but it's honest work. तो आपको किसने बोला था 32 35 के जो भी बोला था आपने? क्या नाम है उसका? वो जो उसका गलती हो गई भाई, है माफ कर दे। क्या नाम है? HyperX का देख सकता है कि तुझे वाला लुक चाहिए तो थोड़ा RGB मिला। मुझे मैंने ये वाला माइक इसलिए दिया क्योंकि इसमें वो एक पूरा वाला फीचर आता है ना उसकी तरह। क्या नाम है वो एक ऑडियो वर्चुअल ऑडियो डेक का फीचर देता है ना पूरा का पूरा। तो हमने सारे अलग अलग चैनल लाइक डिस्कॉर्ड, गेम, म्यूजिक सब अलग अलग सेट कर सकता हूँ। दैट्स मुझे बहुत पसंद था। और इसका इंटीग्रेशन एल्गाटो के बाकी प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा है। लाइक लेट्स का भी वो लिया मैंने, क्या नाम है उसका, जो एल्गाटो का जो की वो जो बटन वाला होता है स्ट्रीम डेक, उससे पूरा कनेक्ट कर सकते हो इस वाले पूरे माइक को पूरा। पड़ा है मेरे क्लोजेट में, बहुत टाइम से नहीं खोला हूं मैं उसको। ओ भाई ये सब ऑडियो की चीजें मैं इसी में पैसे खर्च करता हूँ, बस और कुछ नहीं करता मैं। काम ही है ना ऑडियो वाला। ऐसे कोई भी ऑडियो की नई चीज आए मैं इंटरेस्टेड हूँ, ले लिया भाई, बाद में देखेंगे। तो भाई और गेम पे नहीं स्पेंड करूंगा, कहीं नहीं स्पेंड करूंगा, बस ये भाई। ये एल्गाटो अपने जितने भी प्रोडक्ट बनाती है वो लाइक बाकी सारे प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेशन करती रहती है, उसका वही है। एल्गाटो का इंटीग्रेशन अच्छा रहता है, उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। लाइक क्वेश्चनेबल इन द सेंस अच्छा होता है सॉफ्टवेयर, लेकिन यूज करना मुश्किल होता है, सीखना पड़ता है बहुत। स्ट्रीम डेक का मैंने जब किया था उसका सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लाइक मैंने सोचा था उसको ये करूंगा, मैक्रो करूंगा प्रीमियर प्रो में, वरना डाविंची में कुछ एडिटिंग के लिए वो मैक्रोस भी लेता है ना। तो मैं मैक्रो लगाने को गया तो वो इतना कॉम्प्लेक्स था, बहस किया मैं बोला नहीं भाई, इससे अच्छा मैं नॉर्मल मेरा कीबोर्ड का कर लूं। वो देखा मैंने, लाइक वो एक ही बटन से 2-3 चीज पूरा कॉम्बो असाइन करके क्लिक किया वो सब होता है, कॉम्बो कर सकते हो, वो पावर टूल बना सकते हो आप उसको। लेकिन मैं क्या कुछ उसका जो सॉफ्टवेयर आता है पावर टूल बनाने का वो बहुत कैंसर है। वो कुछ समझ में ही नहीं आया था मुझे, तो मैं ऐसे 2-3 घंटे बैठा था, तब मेरा 2 घंटे में लिटरली 2 चीजें मैं मैप कर पाया 2 कीज पे। मैं बोला नहीं भाई ये है काम की चीज, लेकिन इसकी मेरे से नहीं होगी। She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. उसकी आवाज भी अच्छी लगी, लाइक इंग्लिश में जापानीज में तो और भी बढ़िया है इसकी आवाज। इसका वो एक्सेंट आता है पूरा, वो जो ऐसा टाउन साइड जापानीज का जो नहीं होता, जो विलेजर्स टाइप का होता है जापानीज में, वो वाला है इसका एक्सेंट। Master Masakatsu, he's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. I can't even imagine trying to run the business without it. Yes. अभी भी वॉइस मीटर यूज करता था, मैं भी वॉइस मीटर यूज करता था, फिर वो लाइक विंडोज अपडेट के बाद वो बार-बार रीसेट होने लग गया था मेरा, फिर मैंने यूज करना बंद कर दिया। लेकिन हाँ बहुत फायदा होता है। Do you guys know him too? मेरी जिंदगी का आज तक सबसे बड़ा स्कैम था एसईओ फॉर ऑल। मेरे को लगा भाई फाइनली कुछ आ रहा है कि सब चीजों को एक ही सॉफ्टवेयर में प्लग इन करके रखो, सब साथ में चलेगा। नहीं भाई, विंडोज ने वो भी स्क्रॉप कर दिया। एसईओ फॉर ऑल भी जीजी हो गया। हेलो यूडीएम भाई। So, what about if I join you instead? Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. She must have meant you. Seems like I finally got ये इनाजुमा में फोर्जेबल वेपन है क्या? आई थिंक तो वो किसी वर्ड क्वेस्ट से लिंक्ड है प्रद्युमन भाई, मैंने अभी करी नहीं है। So, Master उसका ब्लूप्रिंट जैसे खुलना होगा वो कोई वर्ड क्वेस्ट से लिंक्ड है। I've already surveyed the area and जैसे ड्रैगन स्पाइन का था ना, हर वेपन का ब्लूप्रिंट लिंक था एक वर्ड क्वेस्ट से, वैसे कुछ है। Why Yoimiya is equal to Amber, Toma is equal to Chai. No you. Don't worry, Mr. Masakatsu. No you, Time to freak him out. I mean, he's not wrong. But still, no you. Kami, nobody likes you. I know, bro. Even I don't like myself, but he's not wrong.
थेरम भाई को बस जेट स्पीयर निकालना है भाई बाहर। इन्होंने देखा जानबूझ के लेफ्ट क्लिक करके जेट स्पीयर बाहर निकाला इन्होंने। अब दर्द हो रहा है मुझे। अब देखना ये टीम में आयाका डालेंगे और उससे भी लेफ्ट क्लिक करेंगे। नहीं भूषित भाई सब देख रहा हूँ मैं। सब देख रहे हम, सब लिख के रख रहे हैं हम। ऐसा है क्या? अरे वर्ड क्वेस्ट पहले कर लो वरना स्टोरी क्वेस्ट बीच बीच में पॉज होता रहेगा वर्ड क्वेस्ट की वजह से। नहीं वो तो वो दो क्वेस्ट वो लिंक्ड है ना वाली। वर्ड क्वेस्ट नहीं। I'll keep an eye on you. ये वर्ल्ड क्वेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको बस आयाका और यूएमी का क्वेस्ट करना है। बस वर्ड क्वेस्ट नहीं। पहले आयाका का होगा फिर यूएमी का होगा फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्ल्ड क्वेस्ट कोई करने की जरूरत नहीं है। गो टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है भाई। भाई पुलिस स्टेशन देखो एक बार। क्या ये पुलिस स्टेशन? चल डीबॉट बस अब तुझे आना है 13:35। मैं 13:30 हो गया। नाइस 35 आ जा फिर अपन जीजी। ऐसा जीजी ग्रैंड मास्टर चलेंगे। ओ ये ठीक है प्रद्युमन भाई ठीक है मुझे स्पॉइलर दे दो तो। ओह रिकमेंडेड पार्टी लेवल 90। ठीक है। The threads of your fate lie in my hands. वेव 360 का क्यों है? वेव 3 एक साइट है उसका नाम है कॉम्पीफाई डॉट कुछ ऐसा सोचा है। वहाँ तुझे 13 तक का पड़ेगा वो 13 तक। Come on, this way. As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. We should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. I'll be right back. You sure? All right then. Just be careful not to get caught. Yes, you too. ट्रस्टेड मैंने वहीं से मंगाया फोर्सी। यस ट्रस्टेड मैंने वहीं से मंगाया। वो लड़ना भी है। Solidify. My royal You mustn't withdraw. Talk about a big door. ओ भाई वो क्या मस्त लग रहा है। Something shaped like Magatama in order to open it. As you wish. मैं तो आया कल ही गया। Useless. Lament. Worthless. I need to train harder. आपने डीबफ नहीं हटाया था क्या? ओ बफ मतलब जो स्टैचू है ना सामने भाई जो मेन जो हाँ इधर। नहीं मैंने बिना डीबफ के मार दिया था क्योंकि मैंने भी वही किया था। इधर नहीं है ना मैं क्या बोलते हो भूपित भाई यूएमआई पुलिंग और स्किप। भाई मेरे पास 4 अकाउंट है मोक्ष। आई काइंड ऑफ पुल एवरीथिंग। ये डिफॉल्ट वो नहीं लग रही ओरेकल। वो जो ओरेकल नहीं वो कौन सी होती है जो 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 जो, जो, जो वो तुम्हारा क्या यार वो हरकुलिस की माइथोलॉजी में होती है। वो जो 3 बहनें होती हैं एक आंख वाली जो थ्रेड वीव करती है तुम्हारे फ्रेड का वैसी लग रही है तीनों। ब्रो स्लीप हुआ है क्या अभी आपको? नहीं नानवेन मैं दूसरी स्ट्रीम करने के बाद सो गया था 12 बजे उठा हूँ तो जी हो रखा है अभी मेरा तो नींद नहीं आएगी। इम्स यस यूएमआई की गारंटीड पीटी है आ जाएगी उन्होंने। Battle formation. Rise. हैं? I won't forget this. This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it.
या नाइस ट्रिक। हाँ हाँ डोर वाली ना ये। ओ ये ओ लॉल। उसको बस उसको पास जाके टर्न ऑफ का ऑप्शन आ ये भी सही है। आज मन था थोड़ा आयाका पुल करने का, फिर ट्रायल में यूज करने के बाद स्किप का माइंड सेट हो गया। हाँ वो मैंने बोला ना आयाका प्ले स्टाइल, वही मैंने बोला कुछ लोगों को आयाका का प्ले स्टाइल पसंद नहीं आता क्योंकि वो ऑटो अटैकर प्ले स्टाइल है ना। मुझे ऑटो अटैकर प्ले स्टाइल बहुत पसंद है। तू बचा है क्या? अरे ये गेम सुन के वॉरियर गेम की याद आ रही है, तो याला म्यूजिक सुन के मुझे सकीरो की याद आ रही है। शैडो डाई ट्वाइस। ओह ये चेस्ट मिला है, याला तो लेना पड़ेगा, याला मिस नहीं कर सकता। फ्री मोस सर रेडन के लिए डबल पिटी जानी है। मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है वेंटी की तरफ मुझे जीवेट करेगी। डिबॉट जो जितने 50-50 जीत रहा हूँ ना, ये मेरे कलेक्टिव थे मेरे लिए। मैं अभी तक हर एक जीता है भाई। सो टॉक्सिक टीम। व्हाट ओनली 3 व्हाट अच्छा चलिए सर जी मैं सोने निकला। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। रेडी बट गुड नाइट। आप जब उठोगे तब भी मैं स्ट्रीम ही कर रहा हूँगा। बाय बाय। जाता है 6-7 बजे। मैं भी जाता है कल क्लास है। ओके चलो भाई बाय बाय। ऐसा है क्या? मैं तो ये करके ऊपर से जाऊंगा। पजल कौन सॉल्व करे? अब जाके सर को सिजल दिख रहा। पहला चेस्ट एसएस मैं गेटिंग यूआई में वैसे भी गाने विदाउट एमोस आ देती है सबको। एमोस यूआई में यूज करके ईद। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या वो? वैसे जंकू भाई करना क्या? जैसे जंकू भाई ये तो मैंने चीज कर दिया, एक्चुअल में कर रहा। तो मैंने फुल चीज कर दिया। ओह R3 प्रोटो फॉर गानी इजी है। ऐसा है क्या? वो फुल चीज किया भाई मैंने। ठीक बात है। ऐसा क्या 4C? वेट अ मिनट 4C। मैं भी ज्वाइन की इवेंट ले Brace yourselves. Show me what you've got. Gallop! I will have order. By royal decree. Show me what you've got. Go as one. Quake! Watch out what you've got. I need you. Train harder. Wings of dark. This is order. Show me what you've been bested. टीम के बाद सेंड कर देना। कर दे 4C में। अभी सेंड कर दिया। हेलो ब्रो आई यू आर स्टिल अवेक? मैंने गन पाउडर में दोपहर में सो गया था। I took a nap and eat some food and then back. Wave 1 10 के? हाँ Wave 1 में कुछ फीचर्स नहीं है ना 4C, तो चेक कर लेना। There are few features that are not in Wave 1.
ब्रो मैंने जो कहा था उसके बारे में सोचा क्या? मैं स्ट्रीम करने के बाद सो गया था गन पाउडर। मैं स्ट्रीम करने के बाद सो गया था, सोचने का टाइम नहीं मिला मुझे। ऐसे स्ट्रीम करी, थक गया था क्योंकि मैं सुबह कितना 7 बजे जगह हुआ था तो फिर मैं सो गया था। बस थक गया था तो मैं सो गया था। सुन ले। Solidify. I must withdraw. ओहो तो मुझे सुबह 6:30 उठना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। Sixty years में I got Ayaka and signature वाले congratulations यार, congratulations। बिजली कौन मारता है मुझे? बस चेक करता मैंने कुछ मिस ना किया उसमें। I don't think you are a night. No, I am not a night owl. इतना सस्ता कैसे? वो अमेजन पे तो महंगा ही होता है ना। अमेजन पे तो मैंने लाइक मी। तो आज मेरे पास स्लीप शेड्यूल थोड़ा बिगड़ गया था। अमेजन पे तो तू जानता है ना 4C प्राइसेस कितने अच्छे होते हैं। बूमर्स कैन बी नाइट ऑल। कितना टॉक्सिक है भाई तो 4C, कितना टॉक्सिक है तो। यहाँ मैं तेरी मदद कर रहा हूँ और यहाँ आप टॉक्सिसिटी दिखा रहे हैं। यहाँ मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और उधर आप टॉक्सिसिटी दिखाओ। टॉक्सिक बनो मेरे से। अरे आपसे तो सीखा है। ठीक है भाई। Ooh. Damn. Easy. So boomers are dawn wakers, ठीक है भाई। कितने कमरे हैं जगह में? बहुत सारे। मुझे कहते कुछ चेस्ट तो नहीं छुपा हुआ। ये सब चेस्ट भी थे। इसी को फोर्सफुली एक्सप्लोर करना बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एक्सप्लोरिंग द गेम फोर्सफुली। Quick, hide! Look over there. That must be Master Masakatsu. Did
Did you really think that little trick of yours could fool us? Locking you up was just the beginning. No! Oh no! Those Tenryou Commission brutes are torturing him! If we don't come up with a way to break him out fast, then... Yoimiya, when did you get back here? I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ma'am. Oh we bhai. were teaching him a little lesson, that's all. Gojo Sara. That's Gojo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryou Commission. She's also a general in the Shogun's army. What's she doing here? Make way, let me have a look at him. Oh bhai. I'm sure you're well aware that torture is strictly against I military say regulations. you will regret that you discontinued Naruto. Yes, It's getting more crazy. You I do not mind gunpowder. Disgraceful action. Then you are also unworthy of the Tenryou Commission itself. मैं binge watch कर Do I दूंगा make कभी myself करना होगा. clear? Yes, ma'am. It won't happen again. Paimon sure wouldn't want to get on her bad side. Hey, this is our chance. Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Oof. Quick, go and investigate. Yes, ma'am. Oh bhai. They're coming! Quick, hide! Sorry. I didn't mean to. Yeah, you sounded so easy. It is easy. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Oh bhai. Boom. Fireworks! दूसरी आम बाटी क्या Is है? that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry. The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. Fireworks aren't just for festivals, you know. I was particularly proud of this batch. I decided to. What? Yoimiya, this is turning into a bit of a fireworks display. Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Look, the coast is clear. Now's our chance. ओवरबोर्ड चली गई हो मियां. She went overboard. Yoimiya, is that you? Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, those awful guards. Come on! We've got no time to lose! They could be back any minute! Oh, आ गई. Oh, okay. Yes, leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. What? But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Oh, bhai. Well, you can bet we'll do all we can to keep that from happening. What? Leave this place. Oh, bhai. Bro, it's Chinese or Japanese? I'm confused. It's English. What? What? It's भोजपुरी. ठीक है फोर्सी. नशे कर लो आप. कर लो. The game Chinese. The devs are Chinese if you are asking. If you are asking the devs, they are Chinese. ठीक है फोर्सफुली आप अलग वाले नशे कर लो. आपके नशे आपके हैं. I can't do anything. We're finally out of that creepy place. Yes. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on?
Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. कोई ना ब्रो, नींद के नशे हो रहे हो। Just take care of Master Masakatsu. मैं जरा सोने, बाय बाय फोर्स से। Good thing we were able to rescue him. Right, Kujusara. Do you think she was making up for how the guards were treating him? It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryou Commission. Though Paimon would never agree with their actions in the Vision Hunt Decree, of course. Okay, Paimon, okay. How about we go tell Too many streams a day, yeah. Like the new patch dropped in, I was very excited. So yeah. That's why. Is anyone there in chat? ठीक है. I think the most of the people went to sleep. Gunpowder. It's 3 a.m. in the morning, man. So, or those who are watching are like silently watching. So yeah, if they're even watching, they're watching. भूषित भाई, हाँ हेलो, बोल श्योर। आपकी डिस्कॉर्ड में भी स्ट्रीम चल रही है। ओह कोई ना, वो थोड़ी देर पहले चल रही थी, कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखा रहा था ना मैं, तो वो मैं भूल गया कि वो बंद करनी है, तो मैं चलने दी। आप अभी तक जगे हुए हो? हाँ? ओह ये भी जगे हुए हैं। मैं वही देखूं भाई, मैंने कहा पूछो किसके लिए स्ट्रीम करते हैं। नहीं बताना तो नहीं था। ओ भाई 2:50 AM बूमर को टाइम देखना नहीं आता। ठीक है फोर्सी, ठीक है भाई, मैंने 3 बोल दिया तो गलत हो गया, पाप हो गया। ओ भाई चलो भाई, इतनी जल्दी? कल पेपर नहीं है? नहीं, रोज होना। नहीं मुझे लगा। I see. So Kujusara stayed her hand. It would appear she still has some honor to her. और हो गया तेरा शौहर सकीरो का? Try establishing contact with her. Perhaps we could अरे मैं ट्रू एंडिंग का सोच रहा था, पर फिर ट्रू एंडिंग के लिए बहुत नहीं मजे हैं, पर बहुत चीजें करनी पड़ेगी। करो ना, ऐसे नहीं तो करो ना। ऐसे परेशान हो गए। Master Masakatsu is of no threat to the decree. This is why she was so willing to allow his escape. ऐसे बोल If रहा our था। true motives were ever divulged, she would act against us without a अफोर्सफुली second कितनी thought. पीटी बिल्ड हो गई? True. Though if you ask me, Master Masakatsu's release is an इसने पुल कर लिया? blessing. लिटिवा ने? We are now one step closer to victory. बहुत बढ़िया We couldn't have done it without मेरी Yoimiya and the बढ़िया। Traveler. देखते हैं, मैं turning उनका out to रिस्क be लेना even चाहूँगा। more और अल्तमस भाई ने? अल्तमस सर अगले के लिए रुके में, वो पाली है क्या है? हाँ योहिमिया नहीं लाइक उसके लिए था। हाँ फिर बाल लगा तो क्या करता? हाँ बाल के लिए रुके में। क्यों आयाका अच्छी नहीं लगी क्या? मेरे को नहीं लगी वैसे। उसका प्ले स्टाइल नहीं जमा। Things हाँ may वो have turned मोना out टाइप आ गया, very मोना मेरे को differently बिल्कुल this नहीं time पसंद आई without the help of the थी। Traveler. But if we wish to ना mount any डैमेज अच्छा sizable वर्क हो resistance against the Vision Hunt हाँ Decree, वही ना, there's इन दैट some मजा way. इन दैट मजा आना It is चाहिए। time we make ready our next set of plans. मैं शायद There's no सेव need to करूँगा। rush, my lady. आपको सेव ही Things करना seem to have पड़ेगा। taken a turn for the better, at सारे least. उड़ा दिए स्टैंडर्ड पे। Not only have we rescued Master Masakatsu, ये but our कम से कम list of खेला तो allies सही। appears to be हाँ growing. वो यहाँ पे एक एडमिन नाम की Yes, चीज़ है। True which that, true reminds that. me. आपने The खेला Tenryou तो Commission seems to be making किसी सकीरो प्रो की तरह तो preparations for a नहीं? celebration. ओ They call it a यार भूषित भाई ceremony of मतलब sorts. And the तारीफ भी की है, preparation ऐसा नहीं कि for सीधे enforcing the पूरी Vision बजाती। Hunt Decree seems to हाँ be वो waning. भी The days सकीरो ahead प्रो may be बोल more के। peaceful than usual. अरे नहीं A बोल रहा ceremony, you प्रो say? नहीं गॉड। Why would such और a आज task सिट be बोल रहा given to था, the सिट बोल रहा था Tenryou तू Commission? सीओसी में कैरी होता But है। I'm sure it has nothing to do ओ with us. भाई टॉक्सिक Anyway, with the नो Tenryou Commission busy शोरे with में गए थे। preparations, we should have a नहीं little सिट more बोल रहा था कि breathing शौर room than हर usual. गेम में कैरी होता है जस्ट एज सीओसी। You do present a good ओ point. भाई इतना टॉक्सिक Being हो in a गया। constant state of नहीं alert तो will only सकीरो में भी tire तो us कैरी हो रहे further. हैं फिर के गूगल साइड पे फूट Perhaps के a फिरते हैं period क्या? of rest is रिक्वेस्ट needed. कैसे करनी है? Toma, what would you suggest? नहीं I'd say a celebratory feast is in order. Might I suggest an evening of hot pot together? Funny enough, नहीं I सीओसी में learned a क्या new किस hot नाम से pot game काउंट है recently. वो? I'm sure you'll find it शौरी quite amusing. यार हाँ ओ ये रे। कैसे वो मैं हैंडल करता हूँ, बस मैं रोज अपने आप को एक Simply दो put, ड्रैगन्स देता every रहता हूँ। person prepares an ingredient to add to the hot pot. Once the meal Boosted. begins, we add ओ all the ingredients भाई together.
Then we take अरे it in मेरा turns मतलब to clean मैं the पता walls, नहीं इसका picking बेस green इतना out इसका बेस pots, इतना गंदा है taste ना, it, लाइक and इतना guess सारा whose कचड़ा इसने ingredient it फैला was. रखा है ना, उसको डिलीट भी नहीं कर Anyone who सकता guesses क्योंकि वो correctly can go एनिवर्सरी वाला again, कचड़ा है. and whoever finishes the हाँ meal वो with the अच्छा most लगता है. points is declared the winner. इन Tradition द एंड है even तो वो has कचड़ा it ही that ना. the winner receives ओ blessings from the भाई god of hot pot. क्यों बुशित भाई. Don't you think it sounds like fun? पर वो अच्छा कचरा. I've been wanting to give it a try. In कचरा भी fact, कभी अच्छा I've होता already है. got my ingredients prepared. ओ भाई कहावत भूल गया रे, कहावत याद आ रही थी मुझे. Well, sounds like we've got our work cut out for us. Time to gather some ingredients. किसी का कचरा दूसरे के लिए What should सोना we होता है. choose? ओ भाई तो भूषित सर के लिए वो ड्रैगन का सोना है. Paimon proposes we gather raging demon level Joyun chilies, super salty ham, mist flower corollas. This is already shaping up to be a hot pot to remember. ऐसा है क्या? नींद इतनी जल्दी? आप मुझे तो लगा था आप वो हो, नाइट आउल हो. My stomach. किसने कह It दिया? feels like सुनो आज ही Yogi's जाग रहा हूँ fireworks इतनी are going देखती off हूँ inside और of me. गैंगशन यूनियन मजा आ रहा है इसलिए. ऐसा है क्या? स्टोरी कर ली क्या? नहीं नहीं आराम से करूँगा इतनी जल्दी All नहीं. those weird ingredients without a second thought. जहाँ पे आप हो ना बस इसके एकदम आगे उसके वो बंद कर दिया. Salt crusted herring, unripe lavender melon, flash boiled dongo. Oh, and whatever that thing was that nearly froze my tongue off. Hold up, my life is starting to flash before my eyes. Time I call it a night, everyone. अभी चलता हूँ. गुड ए नाइट. शौन, हाँ एक काम करना, अपने वाले आईडी पे वो इलेक्ट्रो स्पेल को 4 कर ले, 7 कर लेना. कौन इलेक्ट्रिक स्पेल को 6 रखता है भाई? The one who added those little cakes, Ayaka? I think the traveler ended up eating one. वो नेक्स्ट सीजन डेंड्रो होगा क्या? मे बी गन पाउडर, मे बी नॉट. लेट्स सी कौन सा होता है. मोस्ट प्रोबब्ली डेंड्रो ही होना चाहिए स्टोरी वाइज. To be perfectly honest, I thought the cakes would be a tasty addition. Uh-oh, I'm definitely not okay. I need to lie down. गुड नाइट बुशवा. गुड नाइट श्योर. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. I feel like a new man. You know, Toma, all you had to do was guess wrong on purpose and it would have been someone else's turn. Talk about being competitive. Guess I've been feeling unlucky recently and wanted the god of hot pot's blessing. Perhaps I did get a little carried away. Still, I couldn't be beaten at my own game first time around. I think my luck has already taken a turn for the better. बाल की बोबा शॉट कब आएगी? जल्दी जल्दी. अब इतना आयाका के लिए वेट किया तो. I declare that the winner of today's hot pot challenge is me. Oh, brother. Good effort, team. Another important job taken care of. Next on the agenda, some well-earned rest and relaxation. Yes. If the Tenryo Commission truly is as busy with preparations as Toma claims, then some rest would be a welcome change of pace. And with the extra time, there are some other matters I wish to attend to. Let's all take some much-needed time off. After a few days' rest, we'll reconvene at the Komori Tea House and discuss our next operation. Ooh. Downtime is hard to come by these days, so be sure to make the most of it. I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients for our next round. There's gonna be a sequel? Sure, why not? We should play again now that everyone knows the rules. I'll see you all later. Bye, Toma. Bro, mark my words. Last enemy will be Paimon. Be visiting the Komori Tea House for a while. Why don't we go explore some other places? Okay. Oh, Act 1 complete. The Immovable God and the Eternal Euthymia. Okay. New quest. Go to the Narukami Islands beaches. Oof. एक चीज चेक करनी पहले, वो अनलॉक हुई कि नहीं. पर मजा आ गया, बहुत बड़ी स्टोरी है. Yes sir. Where do we go from here? What's the plan? Traveler, Paimon, hold on. Ooh. Huh? Ayaka? What's the matter? Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. This is not coming from the Yashiro Commission or the Kamisato clan. It is my own individual request. Oh. Individual request? You mean personal stuff? Correct. It concerns my mother. Ooh. This may seem a little sudden, but in my view, you are the only person I can entrust this to. Damn. भाई अब तक कोई एयर 91 पहुंच गया है क्या? हाँ, गन पाउडर चाइना में आई थिंक सो 2 लोग पहुंच गए.
A few days ago, Nothing, sir. I was sorting आप through क्या some old करोगे family आप क्या belongings करोगे when I सर found a मतलब जैनको notebook भाई that belonged to my mother. She wrote about all kinds of things, What? mostly of little consequence. But what drew my attention was a name. It is मैं one आज that I've क्वेस्ट never निपटा रहा हूँ heard जैनको भाई before. जैसे So कल the से fact एक्सप्लोर that she करना चालू कर mentions it पाऊँ क्योंकि so भाई एक frequently, बार क्वेस्ट it स्टोरी makes पता it चल गई difficult for तो me फिर कोई to मेरे लिए ignore. स्टोरी स्पॉइल नहीं कर पाएगा ना Probably your mom's best buddy, right? It's kind of thing. Never. And although my mother and father passed away many years ago, both my brother and I are familiar with the vast majority of their acquaintances. So, I am very curious about this mysterious individual. I would very much like to meet them. According to the notebook, their name is Tsubaki. This seems to have been भाई someone गैंशिन का very एनिमे तो नहीं important ज्ञान to my पड़ रहा mother. गैंशिन का एनिमे नहीं Someone with a lot of personality, who liked to have fun. Hyman thinks it sounds like a girl's name. That's what I thought too. So what मतलब कौन सी क्वेस्ट भाई अब वाली करूंगा गाने गाने वाला अयाका और योहिमिया की क्वेस्ट करूंगा No. Her address is given in the notebook. We can head straight there. I wanted you to assist me with the preparation of greeting gifts. मैं करूंगा Please keep everything I have told you in strict confidence. The proper course of action would be to involve my brother and visit ऐसा her क्या ज्ञान together. पड़ I hope so But he is terribly busy at present, and on a more selfish note, I don't wish to involve anybody else from Inazuma in this matter. हाँ तो कोई ना कुणाल भाई मैं भी 3-4 घंटे और हूँ Exactly. मैं 3-4 घंटे और That, हूँ and you are also a kind, well-mannered person with a genuine concern for other people. ओहो Not to mention trustworthy. कॉम्प्लीमेंट्स I would फेंके not जा feel रहे हैं comfortable with anyone else in this situation. कॉम्प्लीमेंट्स फेंके जा रहे हैं मेरे You पे can count on us. We've done greeting gifts before, so we should be able to help. In terms of payment, just treat us to some delicious food, and we'll be more than happy. Wonderful. In fact, I was hoping to take this opportunity to show you both around, if you don't mind, of course. Oh, we don't mind. We don't mind at all. not in the slightest Thank you kindly. Shall we head off then? Ogura Textiles and Kimonos is our first stop. Ooh. All right, sounds great. Oh, it's the whisper of the crane and the white rabbit. Oof. Genshin will be like the same. Hope so. Gunpowder. Hope so. ठीक है. An art to be honed. Shift Slayer. Increasing danger. Rules of safe transportation. Oh भाई. Oh भाई. Okay. ये तो word quest है सारी. नहीं. ये रहा हमारा The Firework Girls Strange Stories. Woven Wishes. Go to the complete the other quest. Okay. एक दिन में पूरा खा जाओगे क्या सैम्पाई? एक अकाउंट में तो यस मानसी, एक दिन में पूरा खा जाऊंगा. बिकॉज अगर मैंने एक दिन में पूरा नहीं खाया तो ये लोग मुझे स्पॉयलर्स दे दे के मेरा जीजी कर सकते. 4 आईडीज है ना तो आई कैन एंजॉय, बट बिकॉज अगर स्टोरी मैंने एक दिन में नहीं जानी तो यू नो मैच क्या सब स्पॉइल करने के लिए रेडी रहते हैं. और लाइक कोई स्पॉइल करना ना भी चाहे तो फिर भी लाइक स्टोरी घूमने लगती है ना, और लाइक किसी के मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता. सो दैट्स व्हाई हाँ वो तो आ ही जाएगी ना कोई डाल ही देता है. This must be. It's a festival promotion. अगर आया कहते हो क्या? Hey, No. speaking of, we haven't been anywhere fun since we arrived in Inazuma. No, what made you think that? Festivals are a common occurrence here in Inazuma. We in the Yashiro Commission are very well acquainted with these sorts of customs. Each season brings its own festival, and each festival in turn brings a fresh challenge to the task of maintaining public order. Oh. So, while festivals are undoubtedly joyous and lively occasions,
For Mute us, पर हूँ, okay. they're also a cause for concern. Oh, my apologies. I should stop thinking about work. This is hardly relevant to the matter at hand. This store here is the place I wanted to visit. Nice. Oh, so you weren't checking out the promotion? Well, let's take a look inside then. Welcome. I have नहीं, मुझे सही all लगती है the रे। latest styles. Please take a look. मुझे ऐसे ही लगती है। Oh, it's Miss Kamisato with guests from overseas. Welcome to Ogura Textiles and Kimonos. Are you here to purchase fabric or for tailored garments? Ooh. Oh, greetings to you too. I have a design here for a garment. Would you be so kind as to take a look? Oh, Ayaka came prepared. Let me see. This could be... It could be... Oh, it's a very fine design. Miss Kamisato, you'd like us to make a kimono following this design, yes? Please, if you could. I'm honored that you'd choose Ogura Textiles and Kimonos for your tailoring needs. Let's go. However, there is one rather difficult problem. Based on the design, this kind of kimono would require silk made from the silk flower. The majority of Inazuma's silk is imported from Liyue Harbor, but given the current climate... As you well know, Inazuma is currently under a strict lockdown. In all honesty, the impact on the textiles industry has been quite significant. We're struggling to import high-grade fabrics. So much of our tailoring business has been put on hold indefinitely. But of course, where our customers are able to provide the fabric Bro, is Ayaka worth it till now? Depends person to person. For me, she's worth it. For you, it might not. For someone, it might be. If even Ogura For me, it Textiles is. and For me, Kimonos it is. can't get a hold of high-grade fabric, where would we buy it from? You could try the International Trade Association. They're a little better connected than सो जाओ अंकल। अरे गौरव मैं 12 बजे सो के उठाऊं। association brings together merchants from all over the world. मैं 12 बजे सो के उठाऊं गौरव Thing बॉय। is their prices. They're not the cheapest. In times like these, though, we're lucky to even have an option of getting a hold of the things we want in the first place. So is that thing. So even just getting clothes made is an ordeal in Inazuma. Wait, the International Trade Association? That's Kurisu's thing, right? We haven't been to Rito in a while. It looks like that will be our next stop. Oof. Thank you ever so much. We will be back once we've acquired Why the you fabric. bully me? I'm a free to play. In the Sorry. meantime, I have one other very small request. Could you? Why is she being so secretive all of a sudden? Absolutely. Much obliged. My pleasure, Miss Kamisato. Honestly, I'm just as excited मेरी अभी as you पढ़ाई to see खत्म the हुई है, end सोने product. जा रहा हूँ। गुड We नाइट haven't बूमर। made a आप silk पढ़ते kimono भी हो for the गौरव? longest हैं? time now, and मुझे this लगा is a आप सिर्फ वैलोरेंट खेलते हो। design. That's very kind of you. Thank you. Goodbye for now. Traveler Paimon, let's try our luck at the International Trade Association. Just saying गौरव, just saying. न्यू बंडल आ गया अभी टीबोन की स्ट्रीम पर देखा। बाय द वे आप कब गिफ्ट करोगे फिर मेरे को? जब आप मुझे ये वाला पैक गिफ्ट करोगे तब। जब आप मुझे ये वाला पैक गिफ्ट करोगे तब मैं आपको वाला स्किन पैक गिफ्ट करेगा। ओके ठीक है। The damned will sooner die again than lay a मेरे को बस hand. उसके स्वॉर्ड निकालने का मन नहीं करा क्योंकि उसका बफ बहुत सिचुएशनल है, बट अच्छा बहुत है कुणाल भाई। लाइक इवन इफ इट्स अ सिचुएशनल थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। This is it. The International Trade Association. Okay then. काश फोन पे से मेंबर बन पाते। फोन पे से आई थिंक सो, आई डोंट नो है। पेटीएम और गूगल पे से है, तुम्हें पता है। गुड नाइट, बाय बाय गौरव, हैव गुड क्या था, गुड स्लीप बाय।
I am going. I just finished Hutao's quest. These are all spoilers for me. No issues, man. No issues. You have a long way to go. A long way to go. You have. I'm not used to it at all. हमको स्वीट ड्रीम्स कह रहा था. कभी कभार दिमाग में शब्द नहीं आते ना. Looks like we found him. What am I gonna do? Mr. Kurisu, are you alright? Oh, you're Miss Ayaka from the Kamisato clan. How do you do? Better than you, it appears. And if it isn't the Traveler, I haven't seen you in a while. I take it you've been out of Rito? Yes, sir. Thanks again for your help last time. The association is back in business, and it's all thanks to you. Let's go. That's great, but, why were you staring into space just now? Did something bad happen? Well, you see... It's embarrassing to admit, but some of the association's goods have been stolen by vagrants. Which goods were stolen? ऐसा क्या gunpowder? अरे कोई ना. Take a break. We imported a big batch of silk from Liyue several years ago. It's been sitting in storage ever since. Recently, we heard that clothing stores in the city have more or less sold all their silk stocks. So we figured now would be a good time to bring our batch out of storage, thinking it'd probably fetch a good price. 2 महीने निकल के लो भाई साहब. The vagrants swiped the whole batch, then disappeared into the woods. अरे भूषित भाई आज इतनी रात को क्योंकि मैं आज मैं 12 बजे उठा हूँ ना सो के सुमित भाई. So I won't be able to sleep. So मैंने सोचा कि स्ट्रीम कर लेते. इतनी रात को कौन स्ट्रीम करता है? हैं सत भाई? ठीक है भाई. मतलब ठीक है. You can just tell that our suffering amuses them. विवेक भाई with the dog well. Take issue with aspects of the Kanjo Commission's operational methods. Please remember, Mr. Kurisu, that while you are here in Inazuma, you should be careful with your words. My apologies. I had to let off some steam. Anyway, there doesn't seem to be much we can do ourselves to get our goods back. Perhaps I'm because so many boomers are night owls, just like you. I am afraid I can't intervene in an official capacity, but I can still help you get your lost goods back. Of course, I would never. Wait, what? Huh? Yes, acting in my own capacity, mind you. Even then, there is no escaping the fact that my every action and word will be seen to reflect on the Yashiro Commission and the Kamisato clan. Yeah. I do so not without reservation, so I hope that you will treat this matter as confidential. That aside, as I'm sure you're aware, I'm afraid that I won't always be able to help you in such circumstances. Given your position and that of the International Trade Association, please try to exercise more caution in the future. You do not want to incur further unnecessary losses. We will. We certainly will. But, are you sure this isn't gonna cause any issues for you? What if someone her forehead is so big? Sees what you're doing and doesn't imagine like her without her frost hair. मैं ऐसी चीजें imagine ही नहीं करता एक बार क्योंकि मेरा forehead भी बहुत बड़ा है. Small-timers like me can't be worth the risk. आपको आयका मिली मुझे तो yes. Let's not forget that I am the eldest daughter of the Kamisato clan. I would be very surprised indeed if anybody in the Kanjo Commission felt that I was accountable to them for my actions. Whoa, that sent shivers down Paimon's spine. Does everyone from a powerful clan talk like that? Mr. Kurisu, I need to know the exact time and location of the theft, and anything that stood out about the perpetrator's appearance. Vivek bhai, be like, yes, Vivek bhai. I have a very big forehead. मेरा माथा बहुत बड़ा है. So I can feel Ayaka's. Please follow me to the scene of the crime. The investigation starts there. ऐसा है क्या? All right, off we go.
अरे सुमित भाई वो जाना जाना सा लग रहा है, ऐसा है क्या? हाँ? हाँ? Here we are. This is where we were robbed. नहीं जाने देंगे गार्ड लोग अभी, मैं तो चला गया। Footprints, very deep ones at that, leading towards the forest. Presumably the depth suggests that they were carrying something heavy. Let's see where they lead. मैं तो टीपी करके चला गया। Vivek भाई like pog. ओ भाई विवेक भाई के 100 घंटे होने वाले। थैंक्स विवेक भाई for watching me. I really appreciate that. You think you can get your stuff back with this bunch? You must be dreaming. Why you better hope you have the courage of your convictions. Why wouldn't I, old man? Answer me this. You're one of those Outlander merchants, right? You trade association types are worms, coming over to our land, leeching off our people. Who's gonna leap to your defense, huh? Tell me, who's gonna stick their neck out for the likes of you? Bro, any plans on any other game? Sometime in future, if I like some game. जो गेम कोई पसंद आता है मैं स्ट्रीम करता हूँ। अभी मुझे कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग गेम लगा नहीं। एक आने वाला है अगस्त में, वो मैं खेलूंगा। I think so, एक हफ्ते में आने वाला है। You're at the bottom of the pile. Can you really blame us for walking all over you? You are despicable. Hey, I just had an idea. Since you came all this way, how about we do उस गेम का नाम है काया, केया, The Bridge of Souls। वो खेलूंगा पक्का। Pay up. क्या नाम है उसका? केया, The Bridge of Souls। बहुत प्यारा गेम है, वो If you खेलूंगा। ask me, it beats walking out of here with black eyes and a broken nose. You're just a big bully. ब्लू प्रोटोकॉल में तो बहुत टाइम है अभी कुणाल भाई। What choice do I have? ब्लू प्रोटोकॉल में तो काफी टाइम है। Wait, Mr. Kurisu, please do not pay any money to this man. But... I trust you remember our agreement? If you keep your lips firmly sealed, I नॉन रेडर मिला वेपन मैनर से स्काईवर्ड एटलस। तो फिर लार्वेन नेक्स्ट तेरा 50-50 गारंटीड है। आई विल सजेस्ट कि अब कोई ऐसे वेपन मैनर पर ही पुल करना जिसपे दोनों कैरेक्टर्स गॉडली हो। स्काईवर्ड एटलस इज अ गुड वेपन, इट्स नॉट एट ऑल अ बैड वेपन। ओह कमिसातो 2K 88 ओके 88 कामिसातो विद वेपन 2K अटैक ऐसे ही ठीक है भाई। भाई नोबलेस कौन देता है? ओ भाई C3। ओ भाई 666 My apologies. ऐसा है क्या? रुको ओ 3 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 5 है भाई। My blade. To move. Say no more. You know. Order guide you. Think Finally,
आ रहे हो Lucky day. You know a thing or two. Whirling snow. Embrace the ice. वाह ठीक है कामिसातो Take flight. सो जाओ भाई अरे गूस भाई पे 12 बजे सो के उठाओ ओ ये तो ट्रायल वाली आया का है यस मैं गूस भाई 12 बजे सो के उठाओ सोया No, please, it was nothing. I was simply doing my duty. किसका अकाउंट है अरे ट्रायल वाली आया का एक बार मतलब कुछ भी Traveler, are you hurt? Don't worry. ब्रो ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स आ रहा है गूगल पे है नहीं पीसी पर तो पीसी गेम I believe your stolen goods should all be here. Thank you so much. नॉन स्कॉलर पे पड़ा है पे अब एटलस का क्या करो एक और कैटलिस्ट पुल करो हाँ इट्स इट लॉस्ट फ्रेंड्स कायर्ड एटलस ठीक है भाई दैट मींस आपको अब कैटलिस्ट यूजर्स पुल करने की जरूरत है अरे 12 बजे सो के उठाओ गुड बाय Best do a count. 6, 8, 10. Yep, it's all here. Great! Now we can finally buy some silk. Buy silk? You mean you need some of the silk here? This was indeed our intent. maybe wake at 7 at 1 stream 3 that right most probably I will try to Even if it were ये मैं अभी ट्राई करोगे तो मिलेगी अभी हाँ ट्राई करूंगा we still would have helped you get them back. Paimon thinks we're pretty lucky. If we arrived any later, our chances of getting silk in Inazuma would have been 0. प्लीज टेल मी कि आई कैटलिस्ट है अभी जितनी इंफॉर्मेशन चल रही है उसके हिसाब से तो हाँ उसके हिसाब से तो हाँ लार्विन सो यू आर वेरी वेरी लकी यू हैव लाइक वेरी गुड कैटलिस्ट lined up like Atlas prayer So, how much do I owe you? Oh, it's free of charge. I could never ask you to pay after everything you've done for me. No, that will never do. Things cost what they cost, and what they cost is what I shall pay. Merchants already have enough challenges to deal with, and as Paimon explained, my help was unconditional. Please, sell your wares to me at the price you would sell them to any other customer. There is nothing to feel distressed about, because nothing, I repeat, nothing happened here in these woods today, did it? बुशित भाई मुझे आयाका नहीं मिली तो क्या मिला विवेक भाई Thank you. ये मत बोलना कचिंग I don't think I could ever repay you. क्योंकि मुझे फील हो रहा है आप बोलोगे कचिंग And I will never forget it. I'm afraid we must part ways. I must get these goods back to the association. If you ever need anything at all, just come to the International Trade Association and ask for Kurisu. मिस कावर्ड सीरीज बस प्राइड एंड हाफ बाकी है मिलेगा कभी ना कभी ओ बाय 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 प्राइड एंड हाफ बास बैस क्या चला रहे हैं लॉल लॉल लुल Traveler, thank you for stepping in to help out. Isn't Amber just like Sakura very useless? Why you bully Sakura man? How come those vagrants didn't seem to know who you were? They must move in completely different circles. Maybe they've never seen anyone from the मुझे आयाका C2 मिला हैं? Perhaps. Either way, I'm glad they didn't recognize me. The fewer people who know what happened today. You debated me, Vivek bhai. Why you do this? It's not every day an important person Why you like do you this? helps out someone like Kurisu. Why you do this? It really shows what a great person. I was sad at a moment, but now I'm happy. Your कि आपको praise is C2 quite आयाका मिल गई unwarranted. बस क्या? I merely did what anyone in my position would have done. I admit that it did feel strange for me to come to his aid. मेरा भी आयाका को C1 करने का मन है, Nothing to but do with nah. identity or social class. As far as आज इतना बड़ा रिस्क लिया आप सोच सकते हो आई ऑलरेडी टू स्काईवर्ड स्पाइंस फिर भी आयाका वेपन मैंने पे पुल किया रिस्क देख रहे हो I don't see how a society can be But weapon banner was when people encounter scam. such obstacles in their livelihoods. ऐसा है क्या गॉड स्पीयर Sorry, I'm getting off topic. मुझे ऐसा लग रहा है विवेक भाई आपको एक आयाका के बाद उसका वेपन निकालने का ट्राई करना चाहिए था आई थिंक सो आपने आयाका कुछ ज्यादा निकाली और वेपन ही निकाल पाए आई थिंक सो आपने खूब सारी आयाका तो निकाली लेकिन वेपन नहीं निकला स्काई भाई ने क्या किया एक आयाका निकाली फिर वेपन निकाला
Yes. Right. Let's head back to Ogura Textiles and Kimonos and give our hard-won silk to the shopkeeper. Okay. अब ये बताओ विवेक भाई, मेरी अनबॉक्सिंग कब स्पॉन्सर हो रही है? Isn't Genshin? I don't think so, Gunpowder. Because in future they might come. And I have never think about that. So yeah. Yes, वैसे ही किया मैंने बाल के टाइम पे. ऐसा क्या? बाल की टाइम पे ऐसा है कि एक बार जिज्ञान इज ये रहा भाई. मैं इन सब चीजों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ. वेक भाई दैट मीन्स आप बाल के टाइम स्पॉन्सर करोगे मुझे? यस बाल के टाइम पे स्पॉन्सर बॉय इजी. ओह ये गाचा टाइम. बाल के टाइम बाल. तब तक मैं इंतजार करूंगा. Hey there, we're back. Welcome back. So, any luck at the International Trade Association? Did they have any silk in stock? Yes, they did. Here. Excellent news. So, apart from the silk, I think everything else I need I've got in store already. I just need to go and take stock of our materials. It won't take me a moment. I'll be right back. Okay. They better all be there. I do hope nothing else is missing. Traveler, on the subject of garments, I've been meaning to acquire a new outfit for you too. It's just, I wasn't sure how you'd feel about the idea of dressing in Inazuman attire. Oh, are you sure? Is that so? Impressive. So travelers of your stature hold themselves to a dress code, as well as a code of conduct. More like when you're away from home, you've got to live by certain rules to survive, whether you like it or not. सारी रात भर भूषित भाई प्रीमोजन के ख्यालों में खोए रहेंगे. Easy or what, Gunpowder? Just what is that supposed to mean? They make them in whatever size the customer asks for. Your interactions are so adorable to watch. I mean, I can certainly find someone to tailor a Paimon-size outfit if Paimon so wishes. Well, if you're sure, as you wish. I'm thinking of going with Shizuka, but without her weapon, it's kind of nah. True that. Other nations dress. True that. They sure do. Each nation has its own unique style. Traditional, fancy schmancy, casual, all very different. But each style is suited to its region. मैंने पूरी सिटी में सबसे बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि इसलिए ये कुछ साल वाली कमीशन होगी. और तक की स्टोरी में ही डाल दिया. Even an extension of one's body. नमस्ते जैंको भाई, कैसे हो? ठीक है बॉट, ठीक है यार. ठीक है भाई, मेरा बॉट अलग-अलग टाइम्स पे एक्टिवेट होता रहता है. Paimon agrees. You couldn't have put it any better. 2-2 होने वाले हैं. वेपन पे ट्राई करूं क्या? हाँ, आई विल से करूं. वेपन बहुत अच्छा है विवेक भाई आका का. आई विल से. अगर आप इतना इन गई हो, थोड़ा सा इन और जाने में क्या, आप 2-2 कर ही लिया. Sorry to keep you waiting. I've checked my inventory. Thank you. Is there anything else you're missing? Fortunately not. I have all the materials I need. As for the size, would you like me to go by the dimensions given on the design? Yes, please. Boomer. Understood. ठीक है भाई गन I'll get to work shortly. Hello Pawan bye. That'll be this much. Here you go. Is it possible to treat this as an urgent order?
Well, luckily, we don't have any other urgents at the moment. इतनी late night stream? Yes sir, because मैं आज थोड़ा सा आज 12 बजे उठा हूँ, so you know. Please come and collect it later. Yes. Until then, I'm sure you'll find somewhere nearby to pass the time. Good idea. Let's check out the whole area. We don't want to leave any loose ends. Yes. There will be no loose ends while you're in my company. I already decided आपने where to go while we आपके wait. कहने पे करता हूँ, For our दोबारा next स्पेयर stop, मिला तो बात I'd सीसीस like to को take टाटा you बोल both दो. for a meal. यही why you bully me विवेक भाई? Why you bully me? Oh, Paimon likes this plan. Why you bully me like I that picked विवेक the भाई? venue especially for you. A humble local eatery called Kiminami Why you Restaurant. bully me like that? I thought that the relaxed atmosphere there would suit our day much better than the prohibitively formal one of a high-end restaurant. Shall we head off? Yep. Paimon can't wait. फुल बुली किया जाता है मुझे. आपकी हेल्थ को ध्यान में रखो यार. अरे पवन भाई बोल तो रहा हूँ, मैं 12 बजे सो के उठा हूँ. हेल्थ को ध्यान में रखो. भूषित भाई रिग्रेट करते हुए? नहीं मैं रिग्रेट नहीं कर रहा, बट मुझे बुली किया जा रहा. देखो अगर विवेक भाई को वेपन मिल जाएगा तो इट विल बी बेटर, यू नो. मैं निकाला तो चाहता हूँ, पर बाला यही जल्दी आ गई तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए उनके वेपन के लिए सेव करो. आई नो काफी लोग हैं. जैंको भाई भी लाइक आज यू नो बोले थे भूषित भाई 50-50 जिता देना भूषित भाई. मैं भी लाइक मैं ट्राई करूंगा, और वो जीत गए. आज बहुत ही खुश थे जैंको भाई ने. पूरा दिल गार्डन हो गया था जैंको भाई का. छाती पूरी 40 इंची. Are we here? Ooh, it's one of those street side places. Looks cute and cozy. Welcome. Oh, उम्मीद किरण दिखते हुए एक्लिप्स करवा दिया. अरे कोई ना. Miss Kamisato, perfect timing. Your booking was for, well, right now. I believe so. We'll be sticking to the order I placed in advance. As for the other matter we discussed, thank you for your help. Excellent. No problem. And everything you asked for is ready and waiting. Traveler, tiny customer, please wait here for a moment. Tiny customer. Go ahead and take a seat. जरा ब्रेस्ट के लग गए. डबल पिटी वेपन कैंसिल. आई नो राइट विवेक भाई, आई नो. डबल पिटी गया, कचिंग एंड फिर आया. It's nothing of that sort. I just have a few minor things I need to attend to. I won't be long. I know, but उसे आयाका इन द एंड निकाल ही ले. He was happy. आयाका मिल गई. I don't know. She sure left in a hurry. Whatever it is, it must be pretty urgent. सर आज तो आपने खुश करा दिया था. सुपर स्टिकर रेडी था, बट इंटरनेट मेरे पेमेंट लोड नहीं. अरे कोई ना. आप हैप्पी, मी हैप्पी. There are fancier looking places out there, but the food here speaks for itself. Hope you enjoy it. Over the years we've been in business, we've gotten to know the Kamisato clan quite well. Miss Kamisato and her brother are both fond. बस याद रखना जंको भाई, जब भी आपकी जॉब लगे मेंबरशिप लेना मत भूलना. Table booking surprised me. Easy. Not least because it was a group reservation. आदित्य ने लेवल 50 कर दिया. आयाका को कितना ग्राइंड कर रहा है वो. बहुत. The first time ever? Oh, guess that makes us pretty important people, huh? Sure does. And I'm probably crossing the line here, but I'm just telling you what others have told me. Apparently, Miss Kamisato doesn't have a lot of friends. How is that possible? She's so kind and polite to everyone. Paimon would have thought that would make her really popular. That's what I used to think too. But it turns out the rules of social interaction are a bit more complicated than that. Nobody in the neighborhood has a bad word to say about her. They all say she's beautiful, elegant, graceful. Not to mention that she belongs to one of the most illustrious clans in the land. फोन पे को बाय बाय बोलना पड़ेगा. Her as a model young lady. But that's just it. People look at her and they see a model of perfection, and they don't feel like that's something they can relate to. So the majority of kids from our ordinary families don't even try to talk to her. मैंने 60 कर दिया, 70 कर दूंगा थोड़ी देर में. बाय बाय कुणाल भाई, फुल ग्राइंड है व्हाट. मेरी तो भी 40 है. आराम से करूंगा अभी कल या परसों तक. Oh,
Are you going for 50-50 Yohimi or other role? I'm not. I'm skipping Yohimi on my main Vivek bhai. I have a guaranteed PT on my Asia 2. वहाँ पे Yohimi आएगी. वहाँ पे Yohimi आएगी. कबाब ऐसा क्या पसंद है see her here with friends today. Anyway, relax. Enjoy your meal. And please, talk to her as much as possible. I know she'll appreciate it. Consider it a favor for the whole neighborhood. Look after her for us. Huh? That sounded like Ayaka. I'm so sorry, traveler. Could you join me over there for a minute? I need your help with something. बॉस इधर कितना टाइम लगता है? I'm sorry. 5 मिनट? I didn't want to drag you away all of a sudden. I just had a cooking catastrophe. Oh, so that loud noise we heard came from the cooking pot. Boom. As you can see, this house is right next Oh, to the nice. restaurant. Now roll for albedo. Hopefully, if he gets it, I might roll for albedo. This whole compound is the family's private property. I asked Miss Kiminami to prepare some ingredients and utensils for me, so that I could cook a special dish here. Right. If there's something you want to eat, you could just order it from the menu. Actually, I wanted to cook something as a gift for Tsubaki. Ooh. My mother mentioned in her notebook that Tsubaki enjoys food from all over the world. So I thought, if I'm going to meet Tsubaki, perhaps a dish from overseas would make a fitting gift. A dish from overseas? So anything वो sudden giving up exclamation mark लगाना भूल गए. right? If so, then we've got lots बुशित of भाई options, ने don't we? भाई के कितने जेम्स गए अयाका और वेपन पे? मेरे आप मान लो 8k 8000 प्रीमो जेम्स गए. 10 पुल्स अयाका के लिए एंड 40 पुल्स अयाका के लिए, 10 पुल वेपन बैनर के लिए, तो 8k प्रीमोज का. Hey, don't make this weird. Can I leave you to finish this task then? Just as a personal favor. Is that okay? Great. But what kind of overseas dish would make a suitable gift? It needs to survive a journey from the kitchen to the recipient's doorstep. Oh, Paimon knows. There's one dish out there that was practically created for this purpose. Pizza! Pizza? It's an assortment of toppings and sauce spread over a bread base and cooked in the oven. And it's so good. Oh, lucky me, lucky on first one, and also you were close to pit. Yeah, I have like 40 की पिटी थी, तो 40 पुल्स मुझे और लगे उसमें. गिवअवे, अरे मैंने गिवअवे का तो हटा दिया है. सुना, I think so I removed गिवअवे ना. या आपको अभी भी गिवअवे दिख रहा है? मैंने गिवअवे हटा दिया था. Because it's like it's the third part of the stream. Giveaway is like हो गया. मैंने तो गिवअवे हटा दिया था. चलो सर. Is the pizza ready? Oh, भाई मैंने भाई वैसे रिमूव कर दिया. Pizza. There has to be pizza. Oh, egg roll. Easy. जीन की डिश है पिज्जा. जीन की डिश है पिज्जा. Here, mushroom pizza. मैंने तो एक से स्टार्ट किया और मिला बाबा जी का ठुल्लू. I do worry about the well. Is the pizza ready? Yes. It is. ऊपर मशरूम ऐसा है क्या? Oh, it's ready. It smells delicious. You're an excellent cook, traveler. Easy. I would love to be able to master dishes from all over the world. No issues. Well, all you need to learn is a recipe. We can
can bring you some more recipes in the future if you like. Great. I look forward to learning from your culinary expertise. How are you all doing? Whoa. चलो बाद में मिलते हैं. Bye Vivek, bye. Thank you for joining This in. must be the dish you were talking about. Yes, an overseas dish cooked by the traveler. Could I trouble you to package it for me? Sure, no problem. Oh, it smells good. I bet it tastes amazing. Oh, now I really want to put something like this on our menu. Want us to teach you how to make it? Oh, could you? Sure could. The most satisfying meals are the ones you share with other people. So Paimon thinks that our friends in Mondstadt wouldn't mind us sharing this dish with Inazuma. Let's go. Really? That's great. I've always wanted to learn how to cook some international dishes. If you can write down a recipe for me, I'll add it to our menu and put a promotion where everyone will see it. Since we've become a closed nation, people haven't had the chance to try anything new. Traveler, you're the best! Let's go. I'll go pack up this dish for Miss Kamisato. Please, make your way back to the restaurant whenever you're ready. The food will be waiting for you. You could have sold that recipe for a high price, but you selflessly gave it away for free. You're a wonderful person. I mean it. I admire you a lot, and I'm so proud to be friends with someone of such fine character. ऐसा है क्या? Well, you should probably write down the recipe now, no? Yeah, let's make sure we include all the details and then give it to Miss Kiminami. So, pizza. Start with the basic ingredients. Correctamundo. Right, now to add the next couple of ingredients. Yep, that's right. Now for the cooking instructions. Place onto oven rack at high heat and cooked until golden brown. Alright, it's done! Long may our reputations and our recipes precede us wherever we go in Inazuma. I have no doubt that they will. This dish is exquisite. Cool! Then let's get this recipe to Miss Kiminami pronto! Ease. Hey! Have you written out the recipe? Here it is. Thank you! Ooh, this is so exciting. I want to make it right away. Traveler, Paimon, please accept my sincerest apologies for delaying your meal. Oh my god. No problem! Food always tastes better when you've worked up an appetite. Alright, let's dig in before it gets cold. Okay. Well, what do you think? Is Inazuman cuisine to your liking? It's amazing! Paimon loved this one! Oh, and especially that one over there! Good. I'm relieved. When I was attempting to cook earlier on, did you chat with the owner at all? And did she, say anything about me? She did, but don't worry. She's just happy for you is all. She's happy for me? Yes, yes. Oh, then she must have told you. Did she, what does it matter? I know just as well as anybody else that I've got no friends. Hey, it's not you. Most people just haven't had the chance to talk to you one-on-one before. Thank you for your comforting words, Paimon. It's all true, though. I just don't have very many friends. Most of the time I'm either accompanied by family or staff. So everyone must have found it quite a surprise to see me taking you out for a meal. You got a friend in me. Oh. Exactly! You've got at least 2 friends right here. Aw, thank you. That You makes got me a friend so in happy. me. Excuse me. I'm forgetting myself. Hey now, expressing your feelings is the right thing to do. Keeping them locked away inside isn't gonna do you any good now, is it? Oof. I agree. So, I just want to say how happy I feel that you both see me as a true friend. Easy. Of course we do.
That's always been our style. If someone's nice to us, we're nice to them too. Friendship can go a long way. Take your mom for example. She wrote Simp about Ayaka, Tsubaki ऐसा है क्या मान भाई? ऐसा है and क्या? now it's made you want to Maybe. find them too. Maybe not. Yes. Maybe both. I think friendship is an extremely precious thing, and ours is one that I will always treasure. While we're on the topic though, who is this Tsubaki person anyway? Well, I think I have an idea, but it's just speculative at this point. I'm all ears. I think that Tsubaki might be a fox envoy. Huh? A fox envoy? Yes, that's what I think. Even I, my mother's own daughter, had never even heard of this friend before. It just seems so mysterious. So I think it must be someone with transcendent abilities who doesn't show themselves very often. And fox envoys are nothing new. Stories have been told about them in Inazuma since ancient times. You must have met Kuji Yae before. Well, she's a fox envoy. Ooh. That got me thinking. Maybe there are fox envoys out there in Inazuma that people just don't know about. And maybe Tsubaki is one of them. मैंने सुपर चैट किया, अभी मेरा नाम नहीं आया. आई थिंक पवन भाई वो सुपर चैट वो हो गई, कह सकते हो रिजेक्ट हो जाती है कभी कभार. तो वो अगर आपको पैसा कटता है तो आपको रिफंड हो जाता है पवन भाई, कभी कभार होता है. Before Inazuma, we spent some time in Lille. They have lots of supernatural beings there, like the Adepti. All kinds of them too. Up in the sky, down below the ground, in the water. So yeah. Really? I've come across such things being asserted in books, but to hear someone talk about it from first-hand experience is extremely surprising. So Liyue lives up to its reputation. Its culture has a long history and gives rise to the most beautiful legends. Quite captivating. You should come visit Lille with us sometime. The best part is, they have loads and loads of delicious delicacies. Really? I would love that. Speaking of delicacies, Traveler, Paimon, have you eaten your fill? Oh, Paimon has. Excellent. Then let's collect the kimono. Then we can pay a visit to my mother's mysterious and transcendent friend. क्या वो फ्रेंड हमें मिलेगा? Let's see. Okay. हाँ वो होता है कभी कभार पवन भाई, सुपर चैट रिजेक्ट हो जाती है और अगर आपका लाइक अमाउंट डिडक्ट होता है तो वो वापस रिफंड हो जाता है. आई थिंक सो तो विद इन 24 आवर्स ऐसा ही कुछ रहता है इसका. तो कभी कभार होता है वो ट्रांजैक्शन फेल कभी कभार था. Okay. Your garment is ready, Miss Kamisato. I've folded and packaged it for you. Oh, and the other item we discussed? That's ready too. Thank you very much. No, thank you. It is a beautiful piece of clothing, and it was a pleasure to work on. See you again बड़ा next जल्दी time. बन गया यार. भाई सो जा. अरे रमन भाई मैं 12 बजे सो के उठा हूँ. Chill. Traveler, I have a gift for you. Really? Whoa, looks super fancy. Is that for wearing in your hair? It's a hairpin in the style of a white heron. As well as a hair accessory, you can also use it as an ornament. I couldn't ask for your help and offer nothing at all in return, so this is my gift to you. I'm glad you like it. Speaking of white herons, that's what your title means, doesn't it? Shirasagi Hime. By the way, you know me? ऐसा क्या रमन भाई? It's like a little piece of yourself. अगर मैं बोलूँ नहीं रमन भाई तो Elegant and beautiful as क्या आप मुझे बताओगे आप कौन हो? You flatter me, Paimon. If this gift reminds you of me, that is all I could ask for. It definitely will. Alright, well, now we've got what we came for. We can set off. Time to go meet Tsubaki. I think तो यहाँ कहीं पे है जंको भाई वो. I think so. I think तो यहाँ कहीं पर है वो. इधर कहीं है.
गेस तो करो यार, ऐसा है क्या रमन भाई? ए भाई मैं गेस वर्क में बहुत खराब हूँ, गेस भी करके क्या ही कर लूंगा, आंसर तो गलत ही होना। एमसीक्यू में बहुत गेस किया है, गलत ही होता था। हाँ इधर ऐसा ऐसा ओके विल चेक, आई थिंक सो ये रहा। स्काई का दोस्त और आप सर हमारी स्ट्रीम पे भी आते हो, आप बताओ। स्काई के दोस्त और आप सर हमारी स्ट्रीम पे भी आते हो, अब बताओ। वो अरे रुको 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 रुको, यहाँ पर होता है ये, देखो यहाँ पर कहीं पे होता है ये, मिसिंग बुलेटिन बोर्ड के पास जैंको भाई। 10 शॉट, 10 शॉट तो नहीं, यहाँ कहीं पे 10 शॉट तो नहीं। अगर स्काई भाई के दोस्त हो और हमारी स्ट्रीम पे भी आते हो, आप बताओ 10 शॉट तो नहीं। ओह ये बॉय, गेस्ड इट राइट और व्हाट? ये क्या आपकी ये आपकी क्या वैसी वाली आईडी है क्या रमन? 10 शॉट भाई मतलब मेन आईडी मतलब? यस सर, ओके। So, a transcendent being lives here? Ooh. If someone lives here, then why is it so chilly? I'm asking myself the same question. How strange. I'm quite sure that this is the location my mother wrote about, but surely... I'm starting to have second thoughts. But since we're here, I still think we should go inside and explore in full. Yeah, makes sense. मेरी मोना C1 हो गई, जीजी हो गया मेरा। सैड भाई सैड। मोना अच्छी है बट दिया अयाका मिलती तो और मजा आता। Let me think. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. Dressed appropriately, I face eastward and call out Tsubaki's name 7 times. In the blink of an eye, I'm standing on the path that leads to her house. Eastward and 7. Fairy tale. 1-4 so your east. mom would do a 7. little ritual, and just like that, Tsubaki would come to meet her. 1-4 east 7. I have a feeling that it could be some sort of code. Let's get a little closer before coming to any conclusions. 1-4 east 7. That's it. कि वो जो भी ब्लू में हाईलाइट कर, जो चीजें ब्लू में हाईलाइट होती है वो मेन होती है ना। देख रहा हूँ। There are some bushes on the rocks in here. Could that be anything? जो चीजें ब्लू से मार्क होती है वो इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट का पार्ट होती है।
हाँ वॉल ब्रेकेबल लग रही है, लेट मी चेक। वाली वॉल मुझे ब्रेकेबल लग रही है ऊपर, देखने में। पजल सॉल्व करने में मुझे बहुत मजा आती है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पजल। Oof. Strange. There's easy. Let's keep looking around. Oh, firefly. Oh yeah. Wait, let's see. 1 4 7. Huh. There's nobody here. Just this box. Ooh. Let's see what's inside. Did it open? Did it open? Did our Inazuma Deptus leave any treasure here? What's this? Huh. Looks like a book. I guess, but no new dialogue seems to with be that would have an another option to notebook. renegotiate Could with it be the Tsubaki's later. notebook? Maybe. Let's step back outside now. The No atmosphere idea, here Zanko. is मैंने भी different की नहीं है than तो I'd कोई पता नहीं. imagined. Somehow, it makes me a little reluctant to open the notebook. Paimon knows what you mean. Reading in low light is really bad for your eyes. Come on, let's get back outside. Lost. Boring indeed. Here will do just fine. Alright, let's see what the notebook says. Ooh, Paimon bets it's all about mysterious treasure. So exciting! Just Paimon. What is it? Why are you whispering all of a sudden? You're making Paimon nervous. Kamisato. Oh, you want to let Ayaka read the notebook without distraction. Seems whatever's spoil नहीं written करूँगा, in okay, there okay. must be pretty major Thank after all. But, based on her expression, probably not a treasure map. Probably. What could it be? Traveler, Paimon, sorry to keep you waiting so long. No worries, it wasn't long at all. You're a very fast reader. Yes, I have. I think I ought to share the truth of this notebook with you both. Even though the contents are completely different than what I was expecting. Different how? You mean it wasn't a Fox Envoy who wrote this? Not a Fox Envoy, no. It turns out that Tsubaki's real identity
is my mother herself. Oh. What? Surprised? Me too. But that's what it says at the very beginning of the notebook. Oh, bhai. Tsubaki and I are the same person, and yet we are different. When I become Tsubaki, I stop being Kamisato Kayo and become the most ordinary woman in the world. Oh, bhai. What follows in these pages is the ordinary, everyday life of a regular person. Nothing more, nothing less. Nothing less. Oh, bhai. This notebook is, for the most part, a collection of my mother's musings, both private and trivial. All of the things we thought were about Tsubaki or in were fact about my mother herself. Oof. So that means that the kimono design and the international dishes are things that my mother wished to try, yes. I'm sure this all sounds utterly bizarre to you, but to me at least, my mother's behavior is completely understandable. Damn. Or to put it another way, I actually have another side to myself as well. I was at a loss for words when I started reading the contents of the notebook. It almost felt like someone had looked inside my mind, examined my thoughts, and then written them all down on paper. Oof. Ayaka. From the moment my mother married my father, she became the mother of the Kamisato household, and with that came all sorts of duties. At the same time, the prestige of the Yashiro Commission brought its own share of responsibility. On top of that, every action she ever took was seen as representing the Kamisato clan. People were always watching her. Oh. Under such circumstances, she never had much time to do the things she really wanted to do. After my father passed away, Ayato and I took over responsibility for the affairs of the clan. We ran into all sorts of difficulties during that time. I'm not sure if people outside the clan could ever imagine what it was like. Every time I found myself up against a difficult issue, I'd ask myself, did my mother go through this too? What would she have done in this situation? Maybe it's because it had been so long since I last saw her, but somehow, all that was left of her in my mind was the side of her that inspired it's very awe sad and story. commanded respect. In some ways. But my image of her was incorrect. When I read this notebook, I realized she was just like me. Underneath whatever position she may have held, she was just an ordinary person. She liked pretty kimonos. She wanted to try food from different places. She yearned to see sights she'd never seen before. Maybe this all sounds immature to you, but I feel just the same way. I want to live life not as Kamisato Ayaka, but as an ordinary woman. Mother wrote that she'd always wanted to go to a local Inazuman festival. She said that sometimes, on a clear night, if you looked out from our house, you could see lights off in the distance. I've seen those lights too. It looks so lively with so many people. And it's so brightly lit, it makes the whole sky glow. Damn. Of course, sometimes it does make me a bit anxious from a public order perspective. But for someone of my position to just show up at a festival with no warning, it could be considered improper etiquette. Especially in my parents' generation, when the Yashiro Commission didn't have a particularly close relationship with the populace. Even if no one stopped us, the idea of the Yashiro Commission going out into the crowd, it'd certainly draw some strange looks. People would probably start thinking there was trouble afoot. Mother said that she didn't want to put people on edge. She wanted everyone to enjoy the fun and freedom of the festival. She didn't want to disturb them, and didn't have much free time anyway, so she never went. Not even once. So the kimono Miho be like Pepe laughing. Miho का डर लगता है जैनको भाई कब स्टोरी डार्क टर्न ले ले पूरी की पूरी. अभी तो सिर्फ सैड है. डार्क कब हो जाए पता नहीं. Sometimes festivals sell international food. She wanted to try that too. I hope this isn't a disrespectful thing to say, but I never knew my mother was so in touch with her inner child. Well, that's not disrespectful at all. Paimon thinks your mom
mom was the best of both. A big softie on the inside and a big sense of responsibility on the Genshin manga पढ़ी है तूने? नहीं. 10 shot. मैंने पूरी नहीं पढ़ी है वो. Starting का पहला पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा. Several of my mother's wishes already. But going to a festival is the one thing that I cannot do for her. Perhaps this is one thing that can simply never be. I understand. Thank you. I think I realize something now. Mother and I are so similar in so many ways. The things she faced are things that I too will go on to face. She chose to place her unfulfilled wishes onto the identity of Tsubaki. As for me, I've already decided. Oh, so you decided on an alter ego too? Nope. No, I don't plan to do anything like that. I think I will set myself a new goal. To live each day without regrets. Okay. So, Traveler, What if Daddy Zhongli and his family entered Inazuma? Deep breaths, Ayaka. Deep breaths. Would you be at all interested in checking out an Inazuman festival? Why not? Paimon's been dying to go ever since we saw that poster. Paimon would love to go with you, Ayaka. Hey, come on, don't make fun. It's just because I used to have the same concerns my mother did. But now, I don't think I need to worry about it so much. I'm going to be true to myself and fulfill the wish that my mother and I shared. I know that you of all people can understand me going my own way on this. So, let's do this, you and me. Let's go to a festival together. I love to join you. Paimon wants to come. Festivals here have loads of tasty snacks too, right? Oh, and fun and games. Oh boy, no sleep. मैं सो के उठ चुका हूँ. If we head over now, मैं 12 बजे सो के उठा था. Oh, good point. Today is the last day, right? What are we waiting for? Let's go. Lasting promise. Let's go. Go. Oh, Nucas with you. Oh, ऐसा है क्या? Inazuma grind, just completing the story Asad bhai, so that no one can give me spoilers, you know. Explore अभी नहीं करूँगा, explore तो अभी बाद में करूँगा, अभी मैं story complete कर रहा हूँ, जिससे कोई मेरे story spoil ना करे, because I do not like spoilers for stories. Not grind तो भी करेंगे आगे, अभी story complete कर रहा हूँ. I created another universe. Since it's the final day, many of the visitors must have already returned home. I've heard that the peddlers often close up shop earlier on the last day because there are fewer people around. Are we too late? I'll go and ask. Whatever happens, I at least need to go inside just this once. That's the way to go. We'll be right there with you. Go to the festival with Kamisato Ayaka. It hasn't closed yet. It's just that there aren't many people left. Let's hurry and see as much as we can. Let's go. Hey, look at that stall. They have so many masks.
heard that everyone's supposed to wear a mask at these kinds of festivals. Is that rule still around nowadays, or...? That used to be the custom, yes. And today, it's still a popular way to dress up during festivals. But it's not a hard and fast rule. Okay. Hey! Is that who I think it is? Miss Kamisato, right? Oh, greetings. People seem to recognize Ayaka wherever we go. Guess that's just what it's like when you're a famous Inazuman. But of course! The Kamisato clan leads the Yashiro Commission. It's one of the most well-known clans in Inazuma. Not least because back when Master and Miss Kamisato had just taken over the family's affairs, they used to make public appearances all the time. Some of the younger generations have never even seen Miss Kamisato in person before. Being the age I am, I'm lucky enough to have seen her on many occasions over the years. You're too kind. My brother and I simply go where we must to fulfill our duties. But this is the first time I've seen anyone from your family at a festival. There must be some official business, I take it. Oh, there isn't actually. Today, I'm taking my traveler friend here around to see the sights. Oh, a traveler? Huh. Now that you mention it, you do look like you've come a long way to get here. First time in Inazuma? Hope you enjoy yourself, young one. Ah, excuse me 1 second. Hey everyone, listen up! Don't close up yet! Miss Kamisato has come to join the festival! Oh bhai. No, it's not like that. Please, there's no need to make a fuss. We're just here to... Yeah, thanks a lot, mister. If you hadn't let them know, they'd start closing down about now, right? At least it sure looks like that time of day. Yep, you got it. But on account of this being the first time Miss Kamisato has ever come to the festival, it seems only fair to keep things open a little longer. Oh, here's a couple of masks for you. On the house. Let's go. No. You've been far too accommodating to us already. We couldn't possibly... Don't give me all that. Here you go. Here you go. It's not often that we regular folks get some attention from the Yashiro Commission, so I've got to mark the occasion somehow. Besides, it'll make me look bad if you refuse. But... Okay, I think I understand. It's my pleasure. You have yourself a good time. Sir, do you have anything for Paimon? Oh, hello there, kiddo. I'm sorry, but we don't have any masks in your size. Huh? Surely you're not gonna let Paimon be the only one at the festival without a mask? Paimon, don't worry. Wearing a mask is optional. But... Paimon doesn't want to feel left out. How about a tree leaf? That should be enough Lol. to cover up that little face of yours. What? No way! Oh, okay then. Oh, In lol. that case, I'm afraid there's nothing I can do right now. But don't you worry, kiddo. I'll have a mini mask made specially for you when I get back. I cannot thank you enough. Aw, it's nothing. But I won't hold you up any longer. You should go and enjoy the festival while everything's still lit up. All right. Traveler, shall we? Yes. Oh, wait. Just one thing. I need to explain myself. I got a little nervous back there and I just made up any old excuse. But don't think of this as me taking you sightseeing, please. I brought you here because I genuinely wanted to spend time with you. Okay. Okay, great. Okay. Oh, mask. Oh भाई मेरे को oh भाई mask. Oh lol. Lol mask. ये देखो यहाँ ये लोग पार्टी कर रहे हैं उधर ठीक है भाई. Traveler, look. This stall's doing fortune slips.
Miss Kamisato. I think this game got new update where some amazing characters are being added to it. Yes. Manish bhai. Welcome. Yes. Would you like to give No it a go? misunderstanding. Okay. Yes, Zenko. How much is it per draw? I wouldn't expect you to know this, but the Yashiro Commission was very good to my uncle on my father's side at one point in time. Thinking about it, it was when your father was around. I think he dealt with it personally. So you see, how could I possibly take your money? What? Are you sure? Of course. If you like what you see, then please, be my guest. Same goes for your two friends here. Traveler? Paimon? What do you think? Seems like everyone wants to do something nice for Ayaka. So, if they insist, who are we to resist? Well, if that's how you feel, then okay. We'll take you up on your kind offer, sir. Let's each do a draw. Alrighty then. Whenever you're ready. Draw a slip and reveal your fortune. Click the cylinder to draw a fortune slip. ठीक है Zanko bhai. Successfully drawn a fortune. Open it up quick. Open it up and see how you fare. Whoa! Which one did you get? Paimon got Rising Fortune. No way! We got the same one. ठीक है भाई. Traveler, what did you get? Mine says great fortune. Great fortune from the word. Wow, you're so lucky. You mean to say primo gems? Congratulations are in order. Here's what great fortune from the world means. Wealth shall come to you. You shall reap a bountiful harvest, and all shall transpire in line with your wishes. In other words, your good luck isn't about to run out anytime soon. ऐसा है क्या? तभी Zanko भाई मैं इतनी सारी 50-50 जीता हूँ. तभी मैं इतनी सारी 50-50 जीता हूँ. शो Ayaka बिल्ड. ज्यादा भाई Ayaka भी एक ही दिन आए हुए और मैंने अभी इसको बिल्ड नहीं किया है. So yeah. Congratulations. You all have very fine fortunes lined up. With this kind of luck, you'll certainly be able to achieve anything that you wish. Well said. Here's hoping that our good luck will never run out. ऐसा क्या पाएगा? That means Zanko भाई अभी और भी 50-50 जीतती हैं. This food stall sells all kinds of Inazuman specialties. Anything you want to eat, it's my treat. Wow, it all looks so good. Is it okay if Paimon has one of everything? Of course it is. But we don't want anything to go to waste. Let's try them one at a time. Ooh, Ayaka, Paimon wants those dango. Sure. Those look good too. Ooh, but so do the egg rolls. Paimon will try an egg roll too, please. All right then. I too shall have a Sakura mochi. All right, coming right up. You try some fresh snacks. This Sakura mochi is just delicious. Not bad, huh? जिता देना सर यायन बाल दोनों 50-50 है मेरी. ठीक है Zanko भाई. ठीक है मतलब ठीक है. I don't know if it's rude of me to ask, but how is this kind of snack actually made? You want to try your hand at making it yourself? No problem. Just give me a second and I'll write out the recipe for you. Ooh, a new recipe? Are you sure about this? If you share the recipe, isn't that tantamount to giving away your trade secrets or something? Well, it was you who gave Kiminami Restaurant that recipe for an overseas dish, wasn't it? She and I are good friends. We trade culinary tips all the time. Oof. Here you go. Just treat it as me returning a favor on behalf of my friend. Damn. Thank you so much. I will study it very carefully and try my best to do it justice. You there. You want the recipe too? Go on, I can see that you enjoyed it. Thanks, boss. There's no greater feeling than creating delicious food with your own two hands. You should definitely give it a try. I will. Once I've learned how to make it,
Will you two be my taste testers? Yes. Oh, definitely. Can't wait. ये मास्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता है जंको भाई जो खूब में पैर रखा है ना। और गैंशिन रुला रहा अब तो सुबह के 4 बजे दिला रहा है। मैंने खाना खा के स्ट्रीम इसलिए स्टार्ट करी थी मैंने। मैं पानी लेने जा रहा है, पानी खत्म हो गया है। ये आयका की क्वेस्ट खत्म हो जाए फिर पानी लेने जाऊंगा। साकुरा मोची, ओ ये साकुरा नहीं तो ट्राई कलर डैंगो है। ये रहा साकुरा मोची, थिंक सो। ये रिवाइव से कैरेक्टर रेस्टोर्ड। ओ भाई भाई भाई, ये भी बहुत अच्छा है ट्रायंगल डैंगो। But it's still been super fun. Paimon approves. Yes, I agree. To spend the festival together with you today has been a truly wonderful experience. Let's go. This stall sells prayer plaques. It's an Inazuman tradition. You draw your wish onto a pentagonal piece of wood called a prayer plaque and pray that it will come true. Sounds similar to the way people in Liyue release lanterns during Lantern Rite. Those are used for making wishes too. Welcome. Looking for prayer plaques? Every wish is sacred, and you've still got time to make yours before the festival ends. Looks fun. यार टेस्ट ही कर रहा हूँ बेबी, अच्छा लग रहा था देखने में। Oh wait, there's writing and drawing involved? Ugh, count Paimon out then. Paimon's head's feeling kind of fuzzy after eating so much just now. Not the best time for an intense burst of mental activity. Lol. 2 prayer plaques, please, sir. 2 prayer plaques for the young lady. There you go. Traveler, have you decided on your wish? Yep, how about you? Yes. You can either draw a picture to represent your wish or write it out in words. Either way, once you've committed your wish onto your plaque, please hang it onto the prayer rack. Ooh. Wait, so they'll be on public display? Alright, well, let's see what you got. That will do for mine. May I see yours? You got it. Ah, oh bhai. This is you and your sister. Oh isn't bhai. it? It's lovely. Yes. You'll be back together one day. Paimon believes it. हाँ वो one day 2 या 3 साल बाद होगा। Your wish will surely come 2 या true. 3 साल बाद वो one day आएगा। I will keep you in my prayers. Ayaka, what did you draw? Is that Tenchukaku? That's right. I wish for peace and happiness for everyone in Inazuma, and good health for my family and friends. I do hope that wish can come true. It will. Thank you. That gives me hope. I think that might be all we have time for today. Aw, it's time to leave already? Yes. I'm afraid so. The festival is coming to a close. Time flies when you're having fun. It seems to flow away from you like a rushing river, as precious and short-lived as a cherry blossom dancing in the wind. ये भी काजुहा की तरह It's पोएम time लिख to लेती है। leave. Nintendo चेंज फास्ट होता है ओके। Traveler, के 10 साल का प्लान है। today was the first Why you time in bully my me? life that I've ever been to a festival. You've known me for some time now. I think you understand my personality, don't you? Knowing me, I just know that today could not have been such a happy day without you. ऐसा है So क्या? thank you. Today really meant a lot to me. And the memories will always have a special place in my heart. Festivals are great. There aren't many rules. Everyone has that smile that comes from deep inside. Okay. And it's just so carefree and happy. If I ever get the chance, I want to go again. I like to go again too. You too? Great! You know, we're kind of similar. Me with my brother, you with your sister. Sometimes I feel like I can relate to the determination you must have. Electricity to get chilling your in the sister back. I understand. Family bonds are inseparable. No one can break them.
They're the most important roots we have in this world. You will find her. Come what may, you must never give up. Yes, yes. I will always be here for you as your... as your friend. I will always support you. As long as you're happy, I'm happy. Okay. I think so now it ends. Oh, oh! What? Cinematic cutscene? Oh bhai! इन्होंने cinematic cutscene दे दिया. Oh, Traveler. Huh? There's something that I'd like to do. If you could spare me yet another moment. Oh bhai! Please, keep your eyes on me. Huh? जॉर्ड बोलते और what? What do you think of my dance? Did you like it? It was so pretty, beautiful, elegant, and something else Paimon can't put into words. Paimon doesn't really know what it was, but it is art. I'm not very good at this kind of dance. So, as long as I didn't embarrass myself, that's all that matters. जॉर्ड था भाई, जॉर्ड. Had a sudden urge. और जो पीछे म्यूजिक था वो तो और ही जॉर्ड था. In a way, that sort of sums up today for me. Dancing like nobody's watching. That goes for you too. When I'm with you. 15 GB का अपडेट क्यों है? मिहोयो. Anyway, it looks like this is goodbye. We know now, जैंको भाई क्यों है? I can see myself the rest of the way back. इतनी अच्छी चीजें जो दिखानी है. Good night, traveler. इतनी जॉर्ड चीजें देखने के लिए ना. ओ भाई. लाल. वो भी राइम कर रहा था. ओके, अयाका की क्वेस्ट खत्म हुई. विद यू. बहुत प्यारी क्वेस्ट थी. राकेट. ओ भाई कितना प्यारा दिख रहा है. वो वाला एरिया जाओ के लिए कितना प्यारा है भाई. एरिया जाओ के लिए कितना प्यारा है भाई. गाइस 2 मिनट देना, मैं पानी की बोतल लेके आ रहा. पानी खत्म हो गया. इसके बाद मैं योहिमिया की क्वेस्ट स्टार्ट करूंगा. नीड टू स्टार्ट योहिमिया क्वेस्ट आफ्टर दिस. अभी अब योहिमिया. यस.
Reduced to just standing around. How absurd. Those memories. So dark. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Me back. The Firework Girl's Strange Stories. Go to the Narukami Island beaches. Oh, yeah. Yohimiya, yes sir. Yohimiitis. Ah. ये 7:30 में स्टार्ट होगा. भाई ये लोग तो हैंगआउट के बारे में भूल ही गए. 4 हैंगआउट देके खत्म हो गया इनका. ये तो हैंगआउट के बारे में भूल ही गए. डायोना के बाद से कोई हैंगआउट आया ही नहीं है. लुल. Those memories, so dark. So dark, okay. We're looking for the Great Mujina Yokai. What? Do you know where it lives? Great Mujina Yokai? What's that? के बाद कुछ टच ही नहीं किया. मैं तो स्टार्ट भी नहीं किया एक भी आज It's a तक. sneaky monster that goes around playing tricks on people. It's got magic powers and can even shapeshift into anything it wants. One time, the Great Mujina Yokai stole some rice from our house, and this other time, it pushed my dad into the river. Sounds like a very naughty little monster. 'Cause we finally found out how to chase it away. My dad said that the Great Mujina Yokai likes to play tricks on people who stay out all the time and don't come home when they're supposed to. So all we need to do is chase it away. Then we can come out and play whenever we want. This monster sounds scary, though. Aren't you guys afraid? Surely your parents must be worried about you. Oh, not really. I told my dad that I was gonna find the Great Mujina Yokai with some friends, and he didn't even say anything. So we think it must be weak right now. It's probably hiding away so it can rest. Yeah, so as long as we get home before it gets its strength back, we'll be safe.
Something sounds very strange about all this, but Paimon can't say exactly what it is. Yeah, Paimon feels like the Great Mujina Yokai is one of those storybook monsters that doesn't exist in the real world. We should tell them so they don't waste all their time looking for it. Oh, children, listen up. There's no need to go looking for the Great Mujina Yokai, alright? Because it isn't real. Huh? No way. That's impossible. My dad wouldn't lie to me. Your folks are just worried about you is all. They don't want you wandering too far from home because it's too dangerous. That's not true. The Great Mujina Yokai is definitely real. Yeah! Yoimiya's even making some weapons for us. And then she's gonna show us how to blow it up. Okay. Yoimiya, huh? Wait, as in fireworks prison break, Yoimiya? We told her all about the Great Mujina Yokai. She said we shouldn't be scared of it. We should learn how to chase it away instead. Lol. We've been waiting for ages now. And finally, Yoimiya said that today's the day. Yoimiya plays with us and tells us stories all the time. She wouldn't tell a lie. But... Come on, let's get out of here and go find Yoimiya. Wait, hold on, don't go! They didn't seem to take that very well. But Paimon was only trying to look out for them. Who knows what Yoimiya's got to do with this? Let's follow the kids and see what's going on. Dreams like timelessness. Ooh. Catch up to the children who are about to leave. Oh. Useless. Cheer up, guys. Don't be so down. He was only joking back there. How could the Great Mujina Yokai not exist, huh? But we've never seen it for ourselves. That's because the Great Mujina Yokai is extra powerful. And that's exactly why I need your help, isn't it? It's okay. Don't be discouraged. Hey, remember, if you want to be a hero, you gotta have patience. And wisdom, too. Even if you can't find it right now, it'll definitely show up before the fireworks starts. So, remember to come and pick up your weapons from me before then, okay? No matter how powerful the Great Mujina Yokai might be, it's no match for my specially made fireworks. Just light them up and you'll scare it off no problem. It's up to you guys to protect your homes, your crops, and your folks. Got it. Thanks, Miss Yoimiya. We'll try and be more patient. Oh, yeah. Hold up a sec. I have a few slips of paper for you guys. One each. Remember to give it to your parents and tell them to keep it safe. Just tell them it's from Yoimiya. They'll know what it's about. Okay. Thank you, Yoimiya. We're gonna go back now. Oh, thanks, Yoimiya. Come play with us soon. Sure thing. Will do. Take care on the way back, and I'll see you later. So it was you guys. I guessed as much from the way the kids described you. No worries, though. I'm not blaming you. The Great Mujina Yokai is pretty popular with the kids, so of course they're gonna get upset if someone tries to tell them it doesn't exist. Okay, but it definitely doesn't exist. Right? Yeah, the first time I heard about it, I knew straight away that was probably something the parents had come up with to stop the kids from running off all the time. But when the kids asked me about it, I didn't want to break it to them. I just told them that it looks cute and likes to play pranks and doesn't hurt people. So, I guess now the kids' impression of the Great Mujina Yokai is mostly influenced by me. So in a way, this monster is all a product of your creativity? Maybe so. In any case, I'm not gonna be the one who exposes it. Sure, it's likely that the parents just wanted to stop the kids from staying out all the time.
But they could have easily had other reasons too. I just go ahead and tell them that the great Mujina yokai doesn't exist without knowing the full story, then who knows? I might be doing more harm than good. Besides, they're just kids. They should be allowed to believe it if it makes them happy. That's more important to them than questioning what's real and what isn't. Okay. Heck, I entertain my fair share of fantasies too. The fire diamond that spins around and shoots out lights that are all the colors of the rainbow. Ooh, the mist spirits that live far off in the mountains and guide you to fairyland if you can find them. I know that they don't really exist, but I still enjoy believing in them. Story अच्छी लग रही है मुझे योही Someone मिया came up to की. me and started telling me to stop being so stupid. They don't exist. Nah, nah, नहीं. nah. I give them the evil eyes and tell them to get the heck out of my face because it's just so annoying. Right? So what if it's made up? It's also really awesome and kind of magical. So it's not up to anyone else to tell me what's what. The things we believed and the experiences we had when we were young turn into our priceless treasures as we grow up. When you were kids, surely you guys believed in things like heroes who slew dragons and sacred swords that cut through darkness. It's the same thing. If we tear apart these kids' fairy tales now, what else do we have to tell them? That Inazuma's locked down, all the grim tales of the Vision Hunt decree? I think it's a bit too early for all of that. True. Yeah. Oh, way too early. For sure. Whether you understood me or not, don't you worry. I'll take care of the kids and make sure they stay safe. Let's go. Okay, it's about time I headed back. The Naganohara fireworks show is just around the corner, and there's still a lot of things to get ready. Naganohara fireworks show? Is that hosted by your family or something? Well, yeah. I mean, that's why your name is on the event. It's well known throughout Inazuma. Oof. Oh, on the subject, are you busy these days? If not, then you should totally come along. I'll prepare an extra pretty firework just for you. I'm looking forward to it for ages. I'm glad it's like up you. Okay. In that case, come with me to Naganohara. We'll go see my boss. There's still a few fireworks to finish off before the show. Oof. Let's go. Inazuma is home to the Yai Publishing House, and a lot of people who like to write stories too. In fact, most of what they write is based off of the kinds of fairy tales I was just talking about. A lot of them have bad endings though. Like the fire diamond will get put in a rich person's gallery where it will never be ignited again. Or someone will see the mist spirit and not manage to catch it, but because they angered it, it'll never show itself again. The hero who slays the dragon becomes the next dragon. The sacred sword that once fought the darkness now becomes a doomsday weapon. I know these kinds of stories are all the rage nowadays, but I really can't bring myself to like them. If something's magical, it should be kept that way. Naga no. Oh. Pops or what? Hey, Pops, I'm back. The fireworks show is almost upon us, and the fireworks for each family are almost ready. Oh, new faces? Who are these two? Friends or customers? A bit of both, actually. They arrived in Inazuma just recently. Can't let them miss out on a fireworks show after coming all this way, can we? Well, either way, come on in and have a seat. And I, Naganohara Ryunosuke, will tell you all about the long history of the Naganoharas. Okay. That can wait. Pops, I need to ask you about something. A long, long time ago. Pops has started telling his stories again. Sorry about this. Ever since Pops had his accident, his ears don't work too well. Really? But for a moment there, it almost seemed like you were having a coherent conversation. Much, much later, people eventually realized that if you grind certain materials into dust, they burn with many beautiful colors. Pops, wait! Huh? What's that? Did they deliver those firework materials that we ordered yet? Oh! Yesterday's fireworks have all been delivered. So have the ones from the day before yesterday. And the ones from the day before that. No, Pops, I meant the materials. The materials that we ordered. They should have arrived today.
Ah, today's fireworks are almost ready too. Don't you worry. Your old man's skills are still as sharp as ever. No, Hops! The materials! The raw materials for making fireworks! Sorry? Materials! Oh, the materials! Yes, the materials! Sorry, Paimon got all excited because you finally got the message across. The materials aren't here yet. The couriers did come over to explain why, but, well, I think they did, but I couldn't quite hear what they were saying. No worries. As long as we know, that's fine. We can just make them later. Don't forget to take the goods in when they deliver them. Okay, Pops? Of course. Leave it to me. Oh, sorry if we were a little loud. It's always the way, though. It's like that every time I need to ask Pop something. That's my Pops. He's a good person, all right. Everyone around here respects him. Because my Pops is deaf, he never argues with anyone and never contradicts them. He just listens cheerfully. When I was little, I thought it was because he really understood me and agreed with whatever I had to say. So I'd tell my Pops everything. Eventually, I realized that the reason he was like that was that he's deaf. But I still tell him stories every day. Huh? Why would you do that? It just makes me happy to see him smile, and it keeps him from being lonely, right? Anyway, more importantly right now, the fireworks show is right around the corner and the materials still haven't arrived. We need to think of an alternative. Okay. Yoimiya? Is that you? Oh, you scared me there. I thought I मैं लघु शंका करने उठा था लॉल. शुद्ध हिंदी और what? Hold on, I'm coming over. शुद्ध हिंदी में वार्तालाप हो रही है मुझसे. No one's looking. Okay, you can come out now. Come around the side. We're lucky that no one from the Tenryo Commission was around. Otherwise, we'd all be in big trouble. Sorry, I guess I was a little rash, but when I heard you come back, I just... Don't worry, Sakujiro. So far, at least, everything is going according to plan. Hmm? We're going to look for firework materials shortly. While we're out, we'll sort out the boat situation for you, as promised. Thank you for all your help. He's one of our old customers. He came back to Inazuma from the outside world not long ago. While he was smuggling himself in, the Tenryo Commission found him and put out a warrant for his arrest. Oh boy. An arrest warrant? Shh, keep it down. We don't want to draw any unwanted attention. If Sakujiro was caught, there's no knowing what crimes they could charge him with. All we can do is find him a boat and send him out of Inazuma again. Yeah, we know it's going to be dangerous, but there aren't many other options left. What if the boat capsizes? Drowning is really scary. If things are this bad, couldn't you have just not come back in the first place? Well... there's something I felt I had to do. But as soon as I got back, I started hearing about all these unbelievable changes. I had made my mind up originally, but now I'm not sure anymore. I didn't want to cause any trouble for Yoimiya or Mr. Ryunosuke, but I'm very grateful to them for taking me in. Sleep, it's too late. मैं दाची 12 बजे सो के उठा हूँ दाची. Remember what I said? मैं 12 बजे सो के उठा. Little piece of paper, you'll always be a valued customer of the Naganoharas. Little piece of paper? Yep, the same paper slips as the one I gave to the kids earlier. Whenever a customer orders fireworks for a commemorative event, we always include a little paper slip with the goods. Only people from inside my family can understand what's written on it. It's the recipe for the fireworks they ordered. If someone shows a Naganohara that paper slip, we guarantee we can make the exact same firework as the original one they purchased, whether it's 10 or even 100 years later. Wow, that is so awesome! रात स्ट्रीम करोगे It's अभी a देखो. family tradition. मैं भी 1 घंटा All और regular ताकि. customers know about this.
The slip I have is from back यार when my योहिमिया parents की ordered quest करके fireworks end for Mr. करूँगा. Ryunosuke. Now that I think about it, it must be nearly 20 years ago. I would have thought that things would turn out the way they have. It'll be fine. अभी योहिमिया की quest Vote खत्म is कर just दूँगा. a last resort for if there's no other way. I'll still try and come up with a different solution, because it'd be much better if you could stay in Inazuma. Whatever their reasons might be, if our customers come to us looking for help, we're not about to leave them high and dry. Thank you. This way, I still have some time to consider my options. All right. Well, अब जो व्यक्ति पूरे वाईटी पे हिंदी नाम लेकर भ्रमण करता है उससे हिंदी में ही तो वार्तालाप करने का मन करता है. ऐसा है क्या विजय? Okay. It's a shame. They still wouldn't give him a permit, even though he was born and raised in Inazuma. Speaking of, you guys only got here recently. How did you manage to get a permit? Even then, we only got through thanks to some help from Miss Hiragi Chisato of the Kanju Commission. I see. So you had big shots helping you. I guess that won't be of much help to Sakujiro. I just wish the commission were more flexible. I bet nowhere else you've been is quite like Inazuma, huh? Well, no matter what, I have to find a way to help him. वाह. I'm sorry. I invited you to ठीक है come भाई. watch the fireworks. मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, लोग आके स्टोरी के स्पॉयलर्स क्यों मार के चले जाते हैं भाई. इसलिए ताची मैं फटाफट कंप्लीट कर रहा हूँ स्टोरी. है ना? क्योंकि चैट में ऐसा ही होता है. Oh, cool. Then let's start with Sakujiro's boat. We can chat along the way. इससे मैं क्वेस्ट फटाफट कर याद कर रहा हूँ कि ऐसा ही होता है. If it's fine with you, can I ask how you two first met? He saved me from drowning this one time, and after that, we started traveling together. Why do you ask? Nothing. I'm just quite envious of your relationship. If my pops had a person like you around, his being deaf wouldn't hold things up all the time. Why do you look so excited? Because you said person and not floating child or mascot. Koichi, I'm here. How is the boat coming along? Yeah, it's all right, I guess. I was questioned though. Wait, should we really be talking about this in front of them? Easy. Oh, don't worry, they're my friends. You can trust them. They came with me to check up on the boat. Yeah, you could say we're all in the same boat here. Theorem, isn't Yohime voice looks like echo? Did not get it. Echo मतलब? My voice looks like echo little bit. Echo मतलब? Oh, I see. Sorry, I didn't mean to doubt you. I'm just being cautious. The boat is ready, but I'll have to be discreet moving it here. Huh? Why is that? Because of the Sakoku decree, the Tenryou Commission is really suspicious of any kind of seaborne vessel. Even the smallest ones, they'll stop and interrogate us, demanding to know what we plan on doing से बात होती है आपकी आजकल. हाँ, अभी चैट में मानसी आई तो थी अभी थोड़ी देर पहले. होती रहती है. मतलब लाइक ज़्यादा नहीं होती बट बात होती रहती है. Don't be silly. I'm actually happy you came to me for help. I've always come to you for fireworks, and again this time. There is a character in Venten whose name is Eco. Okay. Thank you. I right. Don't remember which. Fetch the boat now. I do not remember that. Maybe. Shortly. Thank you. Oh, if it's on the way. But मुझे Yohime की English voice अच्छी लग रही है ना. Everything was made in strict accordance with what was on the paper slip. You won't find the slightest thing wrong with them. All right then. मुझे अच्छी लगी Yohime की English voice. Starting soon, won't it? You should make sure your new friends get to see it. It's an Inazuma tradition after all. Yep, that's the plan. आपकी तबीयत कैसे? मेरी तबीयत सही है ताची. You know what? You should और तू बता वैक्सीन लग गई? फैमिली में सबको? That's a long story, actually. Where do I start? Maybe I'll come back to that after moving the boat here. हाँ लग गई. Nice. Oh, right. Yeah. Got caught up in the conversation there.
Okay, well, I'll leave you to it for now and meet you back here later. Lucky you reminded me. Otherwise, I would have ended up chatting the rest of the day away. I've been so busy with the fireworks business these past few days that I haven't had a moment to stop and chat with anyone. It's killing me. Diabetico have lost 10 kgs in last 3 to 4 months. Lol. Oh, bye. Hear anything? It's difficult to get an interesting reaction from him. जिम विम जा रहा है क्या चाची या फिर I'm doing it again. like खाना ठीक कर दिया अपना. Say was, while Koichi is bringing the boat here, we should try to find some firework materials. I need to make fireworks not just for you guys, but for those kids and Sakajiro as well. We're missing a lot of materials. मैं ठीक हूँ. Oh, hi there. It'll be fine. It's actually like this every year. There's always a bunch of extra orders to slot in here and there. I don't अपने आप लो. Fireworks, it's always because ध्यान they रखना have यार, something अपना to ध्यान रखना. commemorate. And if they miss the chance, they might never get another one. ध्यान रखना. So, no matter how busy I am, I'm always happy to take their क्योंकि orders. study and job like part time job के बीच में थोड़ा ध्यान में रखना अपना. ये बताओ गॉडेसेस की तबीयत वगैरह ठीक है? Being born into a No family idea, of Chachi. fireworks makers, I feel like since I was a No kid, idea. I've been obsessed with watching things go No idea about boom, that. and then seeing all the lights and colors and. No idea. What I really want मेरी to say मानसी से was, थोड़ी बहुत don't बात worry होती है about ना me. चाची. It'll all be fine. कोटनी से मेरी इतनी बात नहीं होती ना. मानसी से थोड़ी बहुत बात होती है. Sorry. It's just that good conversation can be. आप भी ध्यान रखना अपना. हाँ चाची बिल्कुल बिल्कुल. Why not? So when I'm in the mood and I've got a lot to say, I just have to get all out there in one go. तू भी ध्यान रखना like अपना like Discord पे अगर यूज कर अपना WhatsApp नंबर दे देना मुझे. किसी तरीके से तेरे बातचीत होते रहे Discord पे तो है नहीं बट अपना WhatsApp नंबर दे देना तेरी कांटेक्ट में रहे. It can get uncomfortable, I guess. मैंने उस दिन like रॉबर्ट से मेरी बात हुई तो मैंने उसे बोल दिया तू पहले अपना WhatsApp नंबर दे. नहीं तो तू तेरे से बात होना बहुत मुश्किल हो जाता है. सेम फॉर यू. अपना कुछ like WhatsApp नंबर है कोई कांटेक्ट नंबर दे दे मुझे. ऐसे तू Discord छोड़ के गायब हो जाता है फिर. बात में जरा मराठी का फिर मैं ले लूँगा. Okay. टाइम बिल्कुल ही नहीं. I know that but like मतलब like कांटेक्ट नंबर तो रहा है तेरे से कभी हालचाल पूछ लूं. Hello, Morihiko. How's business these days? Yoimiya, there you are. I thought you might show up. No need to beat around the bush. You're here for the fireworks materials, I assume. I put a batch aside just for you. It'll definitely be enough. Huh? Really? How did you know? Because a fireworks show is coming up. And that usually means you'll be running all over the place trying to get your hands on some last-minute materials. Easy. I've come to expect it now. There's always a few extras बाकी lazy unaccounted sit for, तो eh? सही है ना. हाँ. I'm so sorry for bothering you every time. Come on now. You know I didn't mean it like उनका वीडियो देखा था मैंने. I'd sooner have my business I'm going to go bed. under than turn down one of Bed your again. Bye bye requests. Vision. Bye. Good night again. What about you two? Are you Especially the ones lazy की needing dare some वाली वीडियो. fireworks made? That was a good one. It's no trouble at all, my friend. Once when I had an argument with my son, Yoimiya was the one who came and calmed him down. I'm hopeless at communicating with him. If it wasn't for Yoimiya, who knows, he probably would have run away by now. Nah, he was never gonna come to that. He's a sensitive kid and he cares a lot about your feelings. It's just, he doesn't know how to express it. Maybe if you turn that frown upside down once in a while, he might feel more at ease. Yeah, I guess I'm probably too serious around him. Which is strange, because I don't think I'm anything like that when I'm talking with other people. Don't worry about it. No one's perfect. मेरा भी 6 बजे लॉग आउट टाइम होता है. In the future, just come to me. Even if it's not fireworks related, I'll happily oblige.
Customers come first. अपनी पार्ट टाइम की शेड्यूल के हिसाब से All right then. Everyone's always saying what a good kid you are. Your father must be very क्या proud लाइक of you. वर्क फ्रॉम होम है ताची है या जाना पड़ता है? वर्क फ्रॉम होम है या जाना पड़ता है? No, you don't. That's out of the question. Don't worry. Just take it as a token of my gratitude. Gratitude won't pay your bills, though. Don't do this to me. Can't we just play by normal business rules here? I already said it's fine. Please, Work from just home. take it. Surely you've got a load of other things you need to get done today. Well, how about this then? I'll record this in my notebook, and we can consider it a down payment against any fireworks you want to purchase in the future. There's no convincing कंपनीज you, के is सर्वर there? से रिलेटेड जॉब है. All right then, if you insist. Pass on my regards to your dad. Tell him Morihiko wishes him health and happiness. Will do. बहुत जाती. You look after yourself as ध्यान well. रखना अपना भी. Don't push yourself too hard. You don't want to make yourself ill Okay. again. Everyone seems to really like you, Yoimiya. You're not the first person to say that. In fact, some people think I'll literally do any favor they ask me to. Lul. When that happens, I say to them, hey, Paycheck is this low is a and fireworks workload store. काफी We है. do fireworks. But I'm just doing to make myself They busy. don't always Okay. listen, so it can't be helped. But also, it's not But really भाई ध्यान a big रखना deal. यार अपना. Anyway, we've got all Don't, the materials like, we need now, over-exhaust so that yourself, solves that you know. problem. Next, we just need to go find someone to process them. और लाइक अभी कुछ बातचीत करनी हो, मैं पहले तेरा नंबर ले लूँ. I am always there. आपका कैसा चल रहा है? मेरा सब सही चल रहा है ताजी. Doing good, doing good. Mr. Aminoma, it's me. Ah, Yoimiya. If I'm not mistaken, you must be here for some firework materials. Seems like everyone knows how busy Yoimiya gets leading up to the fireworks show. I'm very sorry. Would you be able to wait for a while? I have quite a घर पे सब ठीक है, घर पे सब weapons ठीक, orders सबको right वैक्सीन now. लग गई. पापा और दादी को 2 डोज लग चुकी हैं. Yeah, that could be a problem. Some worries. How about this? भाई इतनी सुबह कार्तिक है भाई. मैं 4 घंटे से स्ट्रीम कर रहा हूँ. Right? You need to say रात से. That will depend on my master. Oh, you don't mind, do you, Mr. Aminoma? As you know, it's not long now until the Naganohara fireworks show starts. There's still a lot of fireworks left to make if I don't finish them on time. Talkative as ever, I see, dear child. The essence of Amenoma art is patience and focus. When the mind is disturbed, it will show in the blade that is forged. If you badger Hajime like this, you will only succeed in disrupting his concentration. But this is a special circumstance, surely. The Naganohara fireworks show is right around the corner. So give me your ore. I'm streaming, and I yeah. will process it for you. Huh? Master, you mean you'll do the work personally? I'm streaming. I Is know that that. so I know. surprising? टाइम It मिलेगा तो is, ट्विच पे after करूँगा. all, जरूर the जरूर only जरूर. option. Waiting for that day. You're quite welcome. The Naganohara fireworks show is an important event. This I know well. In addition to this, I am indebted to Ryunosuke for all the business he has given me. हफ्ते में But 6 दिन Yoimi, काम है और वीकेंड पे you क्लास should जाती है. I plan know, things मैंने वही more बोला था carefully in जी. the future. टाइम आएगा. Do not rush Busy हो everything जाता है at तू the वो. last minute. मैं feel कर, I can feel Try my that. best. In the future, I'll get some extra materials in to cover any unexpected changes of plan late in the day. Though for you, dear child, no matter how much you prepare in advance, it may never be enough. Excuse me. I will be back shortly. Wow, Mr. और जिस दिन फ्री होऊंगा उस दिन टेस्ट. ओके था. मैं कल परसों से नंबर ले लेता तेरा. Beautiful. I'm at a loss for words. मैं कल परसों से नंबर लेता. It's been a while since I've We'll seen play you take up SOT your stream. tools, Oh, let's go. but it looks like your Okay, craft then you hasn't बता देना. degraded one bit. Of course. I have studied these techniques my whole life. They are impossible for me to फ्री ना बता forget. देना. So have a minima art मैं परसों में इसको ही बोल दूंगा. fireworks been working
have your number दो. Back in the day, अच्छा कहता जी it was जो my WhatsApp पे master एक मैसेज मार देना. and Ryunosuke's मैं तेरा सेव father. कर लेगा. The people may have changed from one generation to another. अरे हाँ. But the ingredients तेरे पास required होगा. to make fireworks वो have दिन हमने remained Sea of the Thieves same. के टाइम. I remember. Hajime, in the future, this will be up to you. इंटरनेट बंद है आपका? है? I know. है? मोबाइल मेरा अभी मेरे पास नहीं है. Alright, मदर के I पास won't है. bother you guys any Like, longer. वो यूज कर रही थी रात में. Remember to come and watch the fireworks. Okay, मैं time वो to कह head रहा off. था. Koichi probably isn't back just yet, but let's go wait for him. देख ला भा. नाना को. Just as I thought, he isn't back yet. But not to आपको worry, stream I'm here because watching with you. actually, Thanks, I've been Rashi. hoping for a chance to have a nice long chat with you all day. Sorry for dragging you with me everywhere. Everyone's been so good to me, though. It's all gone really smoothly. Feels like Paimon has barely spoken a word this whole trip. मैं आया 2 मिनट में. ओ भाई 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 भाई. I felt like I was neglecting you guys. Oh, bye, so bye, bye. I wanted to find an opportunity to catch up. When we first met, I was in a hurry. We didn't have a chance to sit down and have a proper chat. You guys are travelers, right? So, where else did you go before coming to Inazuma? Ooh, sounds great! I heard they pretty much have no rules over there, right? So people are free to live their life however they want, doing whatever makes them happy. My pops actually received a gift from one of his old customers over there. It was from the winery or something. Dawn Winery! Their dandelion wine is super famous. Yes, that's the one. I remember when he drank it. I've never seen him enjoy a bottle of wine so much in his life. He was telling me all night about how good it tasted. My friend once said to me that only people with a strong will and a clear purpose decide to go traveling. Maybe it's to see a certain view or to fulfill a certain wish. So, what made you guys embark on your treacherous journey to Inazuma? And we're looking for answers from the gods, too. Oof. You were separated from your family because of a god? Oh, that must be really tough. Sometimes it is. I get it. Well, if that's how it is, then that's how it is. You know, I was going to ask if you guys wanted to stay here in Inazuma. Unlike the outside world, what Inazuma seeks is eternity. In other words, a state of tranquility where very little ever changes. The advantage of that is that if you're ever tired from your journey, Inazuma's a great place to come and rest. Let me put it this way. I was just worried that you might be getting weary. If you keep pressing on in that state, you might start to lose sight of the things that made you want to start your journey in the first place. Oh bhai. Sometimes. That's also just how it is. When you're exhausted, everything becomes an uphill struggle. Even trying to have fun. You won't be able to enjoy yourself if you're too tired. An adventurer friend of mine once told me that if you're too focused on reaching the end of the race, you'll miss a lot of opportunities and precious moments to be had along the way. Damn. Don't worry though, I'm sure I can think of some way to get you feeling relaxed and happy. And you're here now, so even if you're gonna leave eventually, I want to make sure you at least leave with fond memories. Oof. Who knows? Once you're reunited with your family, maybe you'll find Inazuma the right kind of place to call home. I already have an idea of the color and type of fireworks I want to give you guys. I'll keep it a secret for now, though. Yoimiya, I'm back. Sorry to keep you waiting. Let's head over to the boat. Or, did you want to keep chatting a little longer? Okay, good. Let's go then. Just act naturally, though. We don't want to raise any suspicion. If it can withstand the storms out on the ocean, it must be super sturdy, right? Absolutely. Rest assured that the quality is guaranteed. Let's see the boat now.
can't be helped, I'm afraid. This is the biggest and sturdiest boat that I can provide. It's built from the finest Inazuman timber. Still, I'll be the first to admit that if he's planning to ride this into the storm, it's going to be exceedingly dangerous. I'm also hoping Sakajiro won't have to use it. It's just there as a last resort. I gotta say though, Koichi, it feels like your craft has improved once again. I'm not the one you should be praising. It's all thanks to the guys who kindly pitched in. To avoid detection, we each worked on our own materials separately, then assembled them secretly in the night. This is the largest we could afford to build. Any bigger and there's no way it would pass the Tenryou Commission's inspection. Let's store the boat here for now then. I'll fill Sakajiro in when I get back. He'll need to make some preparations before setting sail. Uh-oh. Paimon feels really worried all of a sudden. Doesn't helping Sakajiro make you a collaborator in the eyes of the Tenryou Commission? Yes, it is. Maybe it does, but I knew what I was getting into from the moment I agreed to help him. Damn. My family has pretty good connections with the Yashiro Commission. We work very closely with them. And whenever there's a national event of any sort, the other two commissions come to us too. As long as I'm polite and respectful and don't cause a fuss, they won't look to cause trouble for me either. And anyway, to your point about collaboration, you've been helping out too, right? That's true. This was all a collaborative effort. Wait! Oh no! Ah, so you're seasoned crooks already, eh? Don't know what I was worried about then. I'm enjoying this game a lot, Itachi. Anyway, I've always thanks for enjoyed this game. everything, Koichi. And fireworks this are ready, update is so just go pick them up from my Gucci. house whenever you want. While you're there, you can get my pops to settle the boat construction fees. I don't know. Oh, don't worry After so about long, I paying started like anything. enjoying a game that was. Third sis would be sure to scold me if she found out I'd taken Mora from the Naganoharas. Who's third sis? Oh, let me explain this one. It's a story my pops told me. There used to be a thriving मुझे थोड़ा boring हो गया था हाँ कैसे थे it was like a low point but after Inazuma it's gonna refresh and they know this time they know how to like pace the game together, each of them learning their respective family's business. तो like हर patch में map में एक नया region add होता जाएगा region का एक map को एक part add करता जाएगा and decided they each wanted to go into business themselves. It was inevitable that business would send them all to different corners of the world and that they'd have far less opportunity to see each other in the future. That's right. Just before we went our separate ways, the eldest of the group suggested that we should all go watch some fireworks together one last time. They were all very ambitious types, and each had their own knack for doing business. One by one, they left, until Koichi was the only one of them remaining in Inazuma. After that, he hardly saw them. But whenever one of them did come back to visit, fireworks would always be involved. Yeah. No matter how close you and your friends are, there's always going to be some distance after being separated for a long time. But as soon as the fireworks lit up the sky, it'd instantly take us right back to our childhood, and we'd be chatting away like in the old days. To us, those memories are eternal. Eternal. Oh, so this is what you meant when you were talking about commemorating things. Yep, that's exactly right. That's why I can't let people down when they're counting on me for their fireworks. Let's go. Anyway, I need to go update Sakajiro. See you, Koichi. Thanks again for your help. Yeah, I should get out of here too. I don't want to get caught red-handed. Okay, story time. So, whenever Koichi brings one of his friends from the trade association to see me, they always mention how they used to play with me when I was a kid, or held me once as a baby, or something. But there are so many of them in that friendship group, and I don't remember anything from that age anyway, so I never have a clue who they are. One time, he shows up with another one of his friends, and the friend asks me if I remembered him. So I'm like, yes, I do! You held me once when I was just a baby. Koichi just bursts out laughing and says, actually, this is one of his carpenter friends. Turns out, he's a lot younger than he looks. Just a few years older than me. Lol. I went bright red and must have apologized like 1,000,000 times. It was so embarrassing. लेजी से बात होती है अब कि हाँ अभी लाइक कुछ टाइम पहले हुई थी हमारी मेरी और लेजी भाई की बात
लेजी सी बात होती है। सिट से तो अभी एक 2-3 दिन पहले हुई थी। उनकी तबीयत ठीक है? उस टाइम तो ठीक थी ताजी। Before you leave, I recommend that you pack some food and उस water. टाइम तो ठीक थी You जिस can टाइम never बात be हुई थी too मेरी। prepared. After how much effort it took to get back in, it's hard to convince myself to leave again. Especially when I'll be going up against the stormy ocean on a tiny little उनको boat. माइग्रेन होता है बहुत। हाँ वो तो पता ही है, My उनको prospects माइग्रेन का don't है look थोड़ा great. इशू। Well, अभी they कल won't तो look much better if you get caught by the Tenryo Commission. I'm afraid that sooner or later they are going to find you here. Time is starting to run out. I'm sorry. I'll make sure to get out of here before they come. I promise I won't cause you and your family any more trouble. I didn't mean it like that. If we ever ran into any problems, I'm sure I'd figure something out. But if the Tenryo Commission does catch up to you, then make a run for the boat. Okay, I won't let them catch me. But... no, I guess this whole trip was a waste in the end. Why did you want to come back to Inazuma anyway? Is there something you बोला wanted to do? डेयर वाली वीडियो तो didn't used to गॉडली like थी this ताजी। वो place at all. गॉडली वीडियो थी That's why I डेयर वाली left. वीडियो तो लेजी भाई की। But looking back on things now, वो तो नेक्स्ट लेवल थी। I was really just running away from my responsibilities. Once I और started to realize मानसी ने that, क्या I ही got खतरनाक डेयर restless. दिया था। I couldn't stop thinking about the people and the things I'd left behind. Oh my, that So dare was like I- some next level. Forget it. What does it matter now? It's too late anyway. I originally wanted to make up for all my regrets, but instead, I found myself in the situation I'm in now. What a pity. Talk to us about it. Maybe we could... If only there was no Sakoku decree, huh? Anyway, don't worry. We're not going to bother you about it. We'll keep trying to buy you as much time as possible until you reach your final decision. The Tenryo Commission. If only they weren't so overzealous. मानसी का कौन सा डेयर था? Oh, that's right. आखिरी वाला जिसमें लेजी पूरे लड़की बनते हैं वाला। लिपस्टिक लगा के लड़की बनते हैं। वो मानसी का I'll था। go talk to them. Maybe they can do something. मतलब मानसी का डेयर था। Are you sure they won't just report me instead? Oh, don't worry about that. They're really nice people. I know them well. They won't cause us any issues. Yeah. All right. You should get back indoors, Sakujiro. We'll be back in no time at all. वो साड़ी बिंदी वाला। हाँ वो साड़ी बिंदी वाला। No one. वो मानसी का डेयर था। Wait, hang on. What about the fireworks? All those materials. There's so many orders to finish. Pops? No, never mind. I know. I'll write him a note telling him to sort out the fireworks. Yeah, that does. Yeah. Why did you cut Paimon off earlier? Because what he needs isn't an answer, just time. I was just watching his new video Smash वाली। मैंने अभी वाली नहीं देखी है Smash वाली। I saw someone getting offended, but मैंने भी वाला वीडियो नहीं देखा। Useless. मैं कमेंट करने का मन था फेक फेमिनिज्म। यही है ना? मैं वो वाला वीडियो नहीं देखा था। If it isn't Yoimiya, come on in, dear. Come and take a seat. Are these two your friends? Yes, they're travelers from afar. Outsiders have a very difficult time getting into Inazuma nowadays. Indeed, these are unprecedented times. But seeing as they came all this way, we locals should give them a warm welcome. People are too sensitive. I forget. People are people, I brought the Itachi. fireworks that you ordered. Oh, thank you, dear. Your family is so good to us every year. First your father, and now you. I wonder if I'll still be around to see the next hair of Naganahara fireworks. Of course you will. You're both in great health. Don't say things like that. It's bad luck.
We aren't as young as we once were, though. The body knows it. It used to be that I could spend all day working the land, carrying water back and forth. But now, even a moment of light work leaves me with all sorts of aches and pains. I wanted to do some गेम खेलते weeding आजकल मैं like yesterday, apart from but Genshin मैं थोड़ा सा as soon Destiny as खेल I रहा था bent इधर down to get apart from started, Genshin मैं थोड़ा सा Destiny I suddenly 2 ट्राई कर felt रहा था that if I went any further, Valo खेलने का I इतना मन wouldn't नहीं be होता able to get back up again. Valo खेलने का इतना मन नहीं होता तो थोड़ा सा Destiny खेल रहा था Destiny 2 No. We can't be putting you to work when you're a guest in our home. I'll just go fetch the tea and some snacks, and then we'll continue our conversation. It's fine. It's not like it's the first time I've helped you with chores. I just haven't had much time recently with the fireworks show coming up. But once that's out of the way, Destiny I'll be sure is to come by Destiny more 2 often. It's no It's an MMO. Really, It's an MMO. I don't mind helping. Oh, you're such good kids. As for mine, he's all grown up now. Hasn't I haven't found heard about it. anyone It's yet. Destiny 2. It's an MMO game. And MMO he RPG doesn't type. visit very often. If you're quite sure it's no trouble, then I have some pickled radish here. Would you mind delivering it to Satoru on the other side of the village? Sure, it won't take us a moment. The old folks aren't very mobile, so come on, let's help them out. We'll get rid of the weeds first and then deliver the pickled radish. Why not? Yeah, you got it! And that should just about do it. Satoru is on the other side of the village. Let's go see him now. Last time I played Valo was last Monday evening. Oh, मेरा Valo बहुत कम हो गया था जी. Hey Satoru, how have you been? Keeping well? मेरा Valo बहुत Same time as हो गया. usual. Not much has changed. You're looking full of life, as always. All thanks to the support of our loyal customers, the family business just keeps getting better and better. We sold some fireworks to the UN a while back, and word is they were a real hit. So it looks like we'll be getting more business from over there in the future. That must mean a lot more work for you, though. Are you sure you and Mr. Ryunosuke can manage? If it gets too much, don't forget, you can always ask me for help. We should be fine. I think we can cope. Oh, yeah. This is some pickled radish from Mrs. I'll tell you much. Look at that. Oh, wow. Thank you so much. I never used to be a fan of pickled radish, would you believe? But then I tried some of Mrs. Imatani's homemade stuff and I couldn't get enough of it. It's a family staple now. Speaking of your family, how's everyone doing? They're doing well. We have the occasional मेरा ऑफिस होता है रात को 9 से सुबह 5 तक. ओ भाई. every family. यार मेरा ऑफिस होता है रात को 9 से 5. मतलब तेरा getting to see them. ये Even if मतलब it does mean putting up with some अब उठने का टाइम हो गया ऑफिस से मतलब. Now, Mr. and Mrs. Imatani seem to have a great relationship. But still, they must get lonely with their child never visiting. Huh. They didn't seem that way to me. I think they're just used to it. You make a good point, though. I should drop by more often in the future. That way, they won't get so bored. Oh, I'm sure they'd love that. As would all of us in Konda Village. You're always welcome here. Hey, Bobby, log out here. Thank you. Now that we finished all the chores, it's time to talk to the Imatanis about Sakujiro. फिर सोते-सोते 6 से 7 बज जाते हैं. That was quick. Young people are so handy. Younger people have bundles of energy. नींद and नहीं older आती people तो have a wealth I of have wisdom. something. Each have their strengths. Speaking of youth, do you know what? It's been 50 उसके years 2 कश this लगते हैं year. ना स्लीव. ठीक है ताजी, ठीक है. So it has. Goodness, अब how आप the ये कर लो. time flies. You barely notice as the years go by, but then suddenly 50 years have passed. 50 years since what? Some important day?
Well, if you must know, it was 50 years ago, back in the days when this young lady was still trying to win me over, that... Oh, stop trying to impress them. We both know you were the one who was hopelessly smitten and desperately trying to win my In the whole day, I just... Well, maybe you're right. In the whole day, I just get one meal. तभी चाची, तभी तूने 10 से 15 किलो lose कर दिया है. तम खा के. We've been together ever since. To tell the truth, I was still a little uncertain. I wasn't sure what I was doing when I walked into the Naganahara's shop and ordered my firework. Even as it was rising up into the sky, I still had no clue what I was going to say. But then it exploded, the sky lit up. I looked back at her and saw her eyes twinkling in the light of the fireworks. Before I knew what was happening, apparently, I'd already said it. And, well, she'd said yes. 50 years. In some ways, it's a long time. In others, it's no time at all. Really, it's just a number. But 50 years of being together, हो सकता नहीं वही है. now that is something worth हो सकता नहीं है वही है. एक मील खाएगा तो यही होगा. Anniversary. If I'd known, I would have made some extra fancy fireworks just for you. Oh no, it's quite all right. We always set off the same firework every year. It wouldn't be the same without it. Seeing that firework go off takes us right back to those days. मुझसे पूछ रहा है अपनी हालत का ध्यान रखो और आप खुद एक मील खा रहे हो एक दिन की. ठीक है चाची. Not a single regret. उस एक मील को 2 करो. What a great relationship they have. Enough about us, though. Yoimiya, aren't you busy with the fireworks show coming up? Was there something you needed to discuss? Yeah, it's a difficult thing to talk about, but here goes. टाइम नहीं मिलता. ठीक है चाची. खाना खाने का टाइम नहीं मिलता. So he came back. Huh? You know him? He was our boys' best friend when they were young. They were inseparable. They grew up together, shared everything with each other, and went everywhere together. But one day, they had a terrible argument. Sakujiro seemed to feel that Inazuma was too peaceful and wanted to see what the outside world was like. ढंग से मील नहीं लेगा तो फिर शरीर को दिक्कत होती है. He felt that there was nothing wrong at all with being peaceful. You know like 2 proper meals तो लेना ही है. तो 5 बजे ले रहा है तो एक बार तुझे 9 बजे भी लेना चाहिए. These sorts of things. In the end, Sakujiro stormed off. अरे नहीं, रात में कोई बुला नहीं सकता. लेकिन तू एक्स्ट्रा, let's say तू 4 खाता है 5 बजे, तूने 4 एक्स्ट्रा बनवा के रख ली और रात में खा ली. We could sense that he was very hurt by it, but he didn't want to कल talk तो मैंने with us जलेबी about how रबड़ी he was खाई. really ठीक है चाची. feeling. ठीक Eventually, है चाची, ये गलत है whether चाची. out of pent-up anger or for some other reason, he joined the Tenryou Commission. He rarely ये गलत है comes home चाची. anymore. If it was anything else, I could talk to Keisuke, and I'm sure he'd be willing to help. 2 रोटी खाता हूँ मैं. But ठीक है चाची. since it's Sakujiro, I don't feel there's any way we can get involved. What a strange coincidence. Who'd have thought? I understand now. When I asked Sakujiro why he came back, he just said because of past mistakes and wasn't willing to elaborate. Now I finally understand why he can't decide what to do. आदि का मन था मेरी तो ले आया. वो बात सही है, लेकिन अब तूने मेरा मन करा दिया जलेबी रबड़ी बोल के. मेरा भी खाने का मन हो रहा है. Goes up to join the Tenryou Commission's most wanted list. Well, no worries. If that's the case, then never mind. We can find some other way to help Sakujiro. There's no need to make things difficult for you. This sounds like something for Sakujiro and Keisuke to resolve between themselves. गरम जलेबी और ठंडी रबड़ी. Yes. Toxic Itachi. It'd be so nice if they could go back to the way things were. Now that's I toxic. think after all these years, they ought to let go of their grudges. Well, can't say we didn't try. I'll let Sakujiro know after we get back. Toxic है आप Itachi.
लॉल सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? स्टिल टॉक्सिक क्या? खाने से ललचाते हो मुझे भी भूख लग रही है। आप रोज स्ट्रीम कर लिया करो रात को लॉल। ऐसा है क्या ताजी? रात को ज़्यादा करता नहीं ताजी, मैं मेरा फिर स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ता है बहुत, रात को करके नहीं करता वो तो आज, इसलिए आज बिगड़ गया था इसलिए कर लिया मैंने। Some people from the Tenryou Commission came by. Huh? Why? Do they know? Pops, are you alright? They didn't do anything to you, did they? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, so they shouldn't go in because it's a fire hazard. But they didn't listen. It seemed like they knew Sakujiro was inside. Luckily, Sakujiro heard them coming in time and managed to escape through the window. The Tenryou Commission wasn't able to capture him. Oh, this is bad news. I don't think Sakujiro had enough time to make his mind up. Second viewer आप हो ना? Did you see where he went? Yes, maybe. मैंने एक सेकंड टैब पे खोल रखा है तो मैं ही होऊंगा मोस्ट प्रोबब्ली। सेकंड टैब पे खोल रखा है तो मैं ही होऊंगा मोस्ट प्रोबब्ली। Good point. Names. Reading names. Suddenly showing up like this. Surely it must be Keisuke's doing. The commission wouldn't normally cause this big of a fuss over a stowaway. Sorry, my ears are no good. And I didn't get a good look at them either. If you're wondering which way they went, they left the city. I wish I'd caught their names. But I didn't hear a thing. As it happens, I did. I was getting some ore from my friend's place and happened to bump into them on the way over. I think they're मैं हूँ ऐसा क्या कुणाल भाई आप हो गया? Oh my god! झट से पट से खाए मैंने पापड़ फक से. Those two running into each other won't solve anything. It keeps going back to her. Even worse, there'll be no coming back from it for Sakujiro. We can't let that happen. Come with me. Let's track them down. And अब तीन हो गए. Kunal knew you were right? नहीं. It's Masakatsu and his friends. Let's ask them. मैंने पहले नहीं कुणाल बुलाया था. Are the weapons to scare away the great Mujina yokai ready yet? Oh, Mr. Ryunosuke is making them right now. You can go collect them from my house later. Aren't you gonna play with us, Yoimiya? I'm sorry. I have something important to do right now. I'll be back later on. But I'll bring you guys some candy next time. मैंने पहले देखा नहीं. Extra sweet candy, the one you guys love. Yay! We're gonna get candy! Candy! Whoa! Also, I wanted to ask you guys something. Did you see a bunch of scary-looking men come by here at all? Yep, we did. It looked like they were chasing someone. Are they trying to catch a monster too? No, don't worry. It's all just a big misunderstanding. Be good kids and stay out of trouble, all right? Stay in the city for now, and I'll come play with you after the fireworks start. We will. We'll be on our best behavior, especially for you, Yoimiya. It looks like this is the right way. Let's get going. If Sakujiro still hasn't made up his mind, I guess I'll have to... Look! There are people from the Tenryou Commission over there! It must be them! Sorry, official business. I can't let you pass. Sakujiro and Keisuke are up ahead, right? We need to talk to them about something. Didn't you hear me? You're not getting past. Wait a second. ऐसा क्या ताजी? Well, you've only got yourself to क्या हमें योइमिया से प्ले करने को मिलने वाला है? ओ भाई. Okay, weapon. ठीक है भाई, सबको नोबलेस को पकड़ा देते हो.
ओ भाई C3 By royal decree, the fuse is lit. ओ भाई 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 ओ भाई 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 ओ भाई Solidify! As you wish, mein Fräulein. That's you in thumbnail? Yes, it's me in thumbnail. That's आपको क्या लगा? ओ भाई मजा आ गया. How dare you impede the work of the Tenryou? What the heck are those bow number characters? Some bow characters. There is nowhere you can escape justice. That's Zohimia for you, Taj. That's Zohimia for you. Look at that. The one with the loudest mouth had the fastest feet. We can't waste any more time on these guys. Let's push on. That's Should be just bow ahead. character numbers. Easy. ऐसे करता हूँ जिंचू निकाल लेता हूँ अगर योइमिया से फिर से खेलने को मिला ऐसे डोंट थिंक तो मिलने वाला है बट एक बार जिंचू निकाल लेता हूँ अगर योइमिया से फिर से खेलने को मिल जाएगा I thought your mom was the one who... नहीं वो मैं हूँ And I saw the smile. Your skills with the sword have stagnated, Sakujiro. You should have known that you stood no chance against me in a duel. I never imagined I'd fall into your hands. You're looking pretty. Easy. मिलेगा? If this क्या is to be मिलेगा? my fate, योइमिया मेरे guaranteed पीटी है कुणाल भाई उस वाली आईडी पे मिलेगा ही मिलेगी But your return says that you finally came around to my point of view. भाई इवेंट कब स्टार्ट हो रहा है कार्तिक भाई 7:30 बजे 7:30 You will return with me to the Tenryou Commission to await 7:30 your बजे इवेंट sentencing. स्टार्ट है The one who made this boat will also be punished. Wait! It doesn't have to end like this. Don't you have anything else to say to one another? Hey, I know you. You're Naganohara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people's business, but stay out of this. It does not concern you. it's okay, Yoimiya. The past is the past. Then why did you risk life and limb to get yourself back into Inazuma? And why were you so reluctant to leave after you got here? I'll tell you why. This is why. This is the chance you've been waiting for. To talk everything through. I have nothing to say to him. He's a criminal. I work for the Tenryou Commission. There was never any room for discussion. मुझे भाई I can Out go of offline respect anytime for the फोन कभी friendship we भी once डेड हो जाएगा had, अरे कोई ना I चाची gave कोई ना him a मैं भी chance एंड to कर रहा हूँ fight इसके for बाद his मेरे भी freedom. स्ट्रीम एंड होगी ये But आखिरी his पार्ट है skills with the sword are as disappointing now as they ever were. What are you talking about? And just who do you think you're kidding? You left all your subordinates back there to guard the road, making sure no one else followed you here. Seems to me like you were hoping for a chance to talk. I can see it in your faces. You both have so much to say, and you're just gonna choose to keep it all inside? Can you pass my message to someone? Huh? Don't flatter yourself. What would you know? Pass. Yoimiya, Can you leave it. pass my message to someone? It was just Hi, my चाची बता wishful क्या? thinking. No, I won't leave it. I will not stand by and watch when you haven't even done anything. Keisuke, you seem to like settling things with a duel, so let's do it your way. I challenge you Okay, to a Dachi. duel. If I win, then you need to say everything that's in your heart. No more running from your feelings. And the same goes for you, Sakujiro. If I win, you will tell Keisuke exactly why you came back, no matter what the consequences are. You have to tell him everything. If you don't say anything now, you may never have another chance. And if you lose? Then I'll admit to collaborating with Sakujiro and accept the Tenryou Commission's punishment. You should take your I will I Tachi. accept. Let's settle this with a duel. Oh, let's go. Sir, we're here to back you up. Ayaka, duels are supposed Okay. to be 1
तो अगर मैं इनको इधर ले आऊं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ गए सब लोग। जिंचू आ जाओ सब। जिंचू का अल्ट, योहिमिया का ये, अरे ये नहीं, योहिमिया निकाली थी भाई। 2 वेव, 3 वेव, 3 वेव होते देखे मैंने। वेव 4 है योहिमिया के थ्रू। Body and mind. अरे मैं उसको ब्लैक स्वॉर्ड दे रखी है यार। हमें नहीं करते साहब, मैंने वो तो Rain outlines your fate. Body and mind. हाँ काफी काफी। अरे जिंजू गलत तलवार दे रखी यार मैंने। जिंजू पे आर्टिफैक्ट भी नहीं थे। मैं टीपी कर सकता हूँ। मार रहा है वेव प्राइस मार रहा है। हाँ मैं जिंचू वो देखना है कि योहिमिया और जिंचू पे कितने वेव्स पड़ रहे हैं, कितने वेव्स पड़ पा रहे हैं। ये क्योंकि योहिमिया बो है ना, क्योंकि योहिमिया बो यूजर है ना, तो थोड़ा इश्यू है। वो काफी तेज है। वो बेनेट के पास कौन सा वेपन है 5 सर? बेनेट के पास Your skills with the sword, you should have known. Never imagined. If this is to be, but your returns, whatever you will return with the one who made this. Wait! It doesn't have to. Hey, I know you. You're Naganahara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved. It's okay, Yoimiya. The past is the past. Then why did वो you? बेनेट ही था ना? नहीं वो I have जिंचू। nothing. He's a criminal. Out of respect. What are you talking? You Jinchu left है, all Jinchu, you Bennett can नहीं see है। it in your face. Don't flatter yourself. Yoimiya, No, I won't leave it. Keisuke, you seem to like. If I win, and the same goes for you. If you don't say anything, and if you, then I'll admit. Yoimiya, I accept. Sir, we're here to back you up. Back up? Duels are supposed to be one-on-one. All right, that's it. Let's help Yoimiya. We Bot. can't let her fight them all alone. बॉट आया नहीं, जिसके पास 5 स्टार स्वॉर्ड थी वो तो अयाका है। ये तो अयाका है। लॉल विव ठीक है। Time to act. Rain outlines your ठीक हो fate. गया। आ गए। Body and mind. Jinchu Rain ult. cutter. 1 वेव, 2 वेव, ये में यार तेज है। When it comes to वेपिंग। No, my sword. कूल दिख रही थी। Rain outlines your fate. Witness the power. अरे ये क्यों मिशेल निकाल देता हूँ यार? Time for a light show. मिशेल भाई अयाका को बिल्ड क्यों नहीं कर रहे हो कार्तिकेय भाई? क्योंकि मैं अभी गेम के कंटेंट को स्पीड रश नहीं करना चाह रहा। दैट्स व्हाई मैं अभी अयाका को बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, आराम से करूँगा। दैट्स व्हाई। फिर मैं एक दिन में अयाका को बिल्ड कर दूं, फिर बोलूं अरे गेम में तो कुछ करने को है नहीं, यू नो। आराम से करेंगे। Young lady,
You are just as obstinate as Sakujiro was back then. Why were you so convinced that we had things to say to each other? Because Sakujiro may not have told me about you when he came back, but he did order a firework from me. Then your parents told me about what happened between you when you were younger. Once I'd heard the story, I realized that the firework meant something special to you both. And that's why I simply refuse to believe that you have nothing to say to each other. Nobody sets off a firework to feel lonely, do they? The reason I came back is that I felt lost. It wasn't that I'd changed my mind, I just felt that what I'd done in the past was to try to escape from reality. I saw the freedom of Mondstadt, the contracts of Liyue, the wisdom of Sumeru, and the justice of Fontaine. It all left a deep impression on me. I was glad that I'd left Inazuma, but then I happened to hear about the Shikoku decree. I was an escapee, and I was proud of that. What I should have tried to do is take the good things from the outside world and bring them back home. So that's why you came back? Out of your naive hope of changing the way things are here? No, I let go of all those delusions of grandeur. I just felt that I never should have run away like that. After all, you never ran away. Huh? I don't know about you, but life hasn't been easy for me. But I just had to come back and visit. It was like fate was calling me, and I couldn't ignore it any longer. ताची क्वेश्चन मार्क कोई कैरेक्टर आया जो हुटाओ को नंबर में बीट कर दे उसकी नहीं जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो लाइक कह सकते हैं ना उसी लेवल के आसपास ही हैं सबके सब थोड़ा ऊपर नहीं थोड़ा लाइक उसी के लेवल के आसपास मारा भी बट अभी तक हाईएस्ट जो लाइक जो डीपीएस सीलिंग है वो गान्यू की है ताची हाईएस्ट जो डैमेज सीलिंग अभी तक गेम की है वो गान्यू की है Am I really doing the right thing? The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but that doesn't mean I want to keep you here by force. What will you say to the higher-ups? Don't worry about that. I'll handle it. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world is long and complicated, but it can be done. I will lend you my help, but until then, you'll have to wait. And don't kick the bucket on the way out. Don't worry, Keisuke. I won't. Any chance we can watch the fireworks together? Maybe next time. Maybe next time. I'll be demoted for sure. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't explain why I went through with it. It's the one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked Yoshitaka and the others to transport it here, citing the temporary contraband storage clause. Forcing Sakujiro to this spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind, my actions betrayed my intent. Lol, ऐसा क्या था? I think you did the right thing. And look, now you've managed to resolve the grievance in your heart by talking about it. I understand now. Thank you. I didn't know you were quite so perceptive. You saw right into what I was thinking. Easy. That's only because I know your parents so well. They're both really nice people, so I didn't think the apple would fall too far from the tree. I had heard there was a new Naganohara running things these days. Little loud and reckless maybe, but you live up to the family name. By the way, Naganohara Fireworks can reproduce the firework that the two of us set off back then, right? Would you be able to make one for me? Sorry, no can do. Without the slipper reference, I can't make the same one again. And I'm afraid Sakujiro is the one with the slip. Ah, I see. Never mind then. Don't get too down just yet, though. I mentioned that Sakujiro ordered a firework from me, didn't I? I can't make another one, but I'm guessing Sakujiro probably won't be needing his anymore. It'd be a shame for it to go to waste, so I'll you don't play Minecraft anymore, not that much, Chachi. Thank you very much. Minecraft बहुत टाइम से नहीं खेला. And don't miss out Last the start मैंने of the खेला था firework मॉब्स show. के साथ ही उसका दिन खेला था.
command of that whole situation was amazing! What can I say? I like to talk. I'm a strong believer in the power of words. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. If you just keep staring at it without doing anything, eventually you'll watch every last opportunity to resolve it slip away before your eyes. Sakujiro and Keisuke can't turn back the clock in their relationship, but that's no reason to live with remorse. Anyway, follow me. I'll bring you to the perfect place to watch the fireworks. Although I know nothing, same with My Tachi. pops will set off the firework that I wanted to give to you. Same with Tachi, same. Me also nub in Minecraft. Oz, reveal thyself. I summon thee. No rest for the wicked. Yeah, sure. This game has beautiful cinematics. Yeep, yeep. This part will be super duper good. Huh? No. Oh, it's... Yeah, I'm happy to getting information every game, even that. Yeah, I have that thing. I like to have information. You know? I know exactly where you are. So, Yumiya, these fireworks, what do they mean to you? Yumiya? Shh. Huh? Oh. That was amazing. It was so beautiful I could weep. I didn't actually cry though, right? I just feel a bit misty-eyed. Paimon is still alive. Oh, remember that big one that went up first? The gold one? That's the one I had Pops make for you. Oh, Paimon saw it! It was one of the best ones! They won't forget that anytime soon! That's what I wanted to hear. I was hoping it would leave a deep impression on you guys. No matter where your journey takes you, and no matter what hardships might lie ahead, I hope you'll always be able to look back fondly on the fireworks you saw tonight. I believe that as time goes by, this firework will only grow brighter and more beautiful in your heart. Oh, and also, you're technically my customers now. Here, this is your paper slip. If you ever want to see that golden firework again, just come and see me. You know, Yumiya, you seemed to turn into a completely different person during the fireworks. You were so quiet, and it was like you couldn't hear anything at all. Oh, I can hear you. I just have a habit of being silent while I'm watching fireworks. Quietly watching something you made with your own hands rise into the sky feels like a sacred ceremony to me. You asked me what fireworks mean to me, right? Yep. Well, for Koichi, who built the boat for us, and his friend, Third Sis, fireworks commemorate friendship. For Keisuke's parents, they commemorate marriage. And for Keisuke and Sakujiro, they were commemorating... Unwavering beliefs. Oh yeah, right, beliefs. As for me, to be honest, even though I've thought about it countless times before, I still haven't found an answer. Seriously? Huh. Paimon was expecting something deep and philosophical. Well, no one's ever asked me this before, so I've never really settled on an answer. It was by chance that I happened to be born into the Naganohara family, so it was by chance that I ended up learning this craft from my pops. It's also by chance that I've met so many people, learned so many things, and discovered that people associate watching fireworks
with the things that are most precious to them. Fireworks that disappear in a flash of light are probably the furthest thing away from the eternity that our shogun desires. But people's feelings don't just disappear. It's those feelings that give fireworks their purpose. If nobody wanted to watch fireworks, then they wouldn't exist. That's another kind of eternity. Also, consider this. You have to have the Naganoharas because so many people are emotionally invested in the existence of fireworks. If we didn't exist, their wishes would go unfulfilled, wouldn't they? You know, I don't really think about complicated things like this very often. But I'm proud that I was born into the Naganohara family and have the chance to make so many pretty fireworks. Dreamlike timelessness. Chapter 2, Stillness, the Sublimation of Shadow. Inazuma's not such a bad place. Paimon's having a pretty good time. But we should probably go and see about the next operation that Toma and Ayaka were talking about, right? I think I'll stay here for a bit longer. The show is still not quite over in my heart. Oh, but if you wanted to chat, I'll happily oblige. Matsuzaka and the others are still waiting for me so we can go hunt down the great Mujina. Also, I want to go and ask everyone what they thought. And over the next few days, that includes you and Paimon too. I'm so tired. Bye bye Tachi. Thank you for joining me. Chalo guys. इसी का आज. As usual, it's the first stop, Komori Tea House. Are you ready to head up? ये आए खोल गया. Oh भाई 30 on stream. So take care, take good care of you. Same Itachi, same. Eat 2 meals, okay, not 1. तो चलिए guys, इसी के साथ आज की स्ट्रीम को यहीं पर एंड करते हैं. Thank you everyone watching in. I think so शाम दोपहर में एक स्ट्रीम और होगी. Need to complete this awesome story which Genshin has prepared for all. Bye bye and see you guys in the afternoon. Peace. Don't forget the messages. मैं गॉडेसेस को बोल दूंगा. Take care. Voilà. Keep you.